बच्चे हर सूरत कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू हो, चाहे हम उनसे छोटी छोटी वीडियोस मंगा लेते हैं, तो वी आर कनेक्टेड विद देम, वी आर टीचिंग देम, एंड यू डू अंडरस्टैंड कि जो एजुकेशन है वो किताबों की सिर्फ नहीं होती है। मेरे ख्याल से एजुकेशन प्यार है, एजुकेशन कनेक्शन है, एजुकेशन बच्चों को एथिकली बड़ा करना है, उनके अंदर स्क्रूपल्स डालना होता है। तो वो वी आर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑन इट। बल्कि जून जुलाई में भी हम, जैसे अभी हमारा अप्रैल में इज कंसिडर्ड आर जून जुलाई, तो हम अपने समर ब्रेक में भी हम खूब मज़े से उनसे कनेक्टेड हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही होती हैं, पढ़ाई हो रही होती है। ऑनलाइन स्टडीज़ 10th एंड 11th ग्रेड की अभी भी चल रही हैं। ऑनलाइन काम उनका चल रहा है, जो क्योंकि ये एग्जामिनिंग ईयर्स हैं इनके, तो उनके साथ काम चल रहा है, एंड वी आर वर्किंग विद देम। That's great. What about you, Zara? Since you're also engaged in education for the past 20 plus years, and right now you are working as in one of the reputable schools in Karachi. So, आपका क्या ख्याल है? How are you doing it? You are also definitely you are going online. So, क्या फर्क पड़ा है? Do you see any difference? Yeah, Shazia, the thing is that when this all happened, it was somewhere towards the end of Feb when we were supposed to go back to school, right? So prior to that, we were supposed to have a huge concert. Our concerts are very well known. So the stage was set, everything was set, rehearsals were going on, and the very next day we were supposed to have a final concert. But somehow at around 3:30 in the morning, we got a message stating that, okay, school is closed for another 2 days. So it's going to be Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So we said, chalo, theek hai, fine, we'll be going on Monday then. But then again on Sunday, we got the message again that's closed for another 2 weeks. So, it was like there was a lot of chaos and confusion. Firstly, that concert that was supposed to happen, and it was very hurtful. It was very painful to, talking in literary terms, to see the stage almost set and leave it as it is. And we, the players, stepped off the stage. The Shakespearean poem, which I've always loved. And I could say it's a quote also. It's been used everywhere. In fact, all the world's a stage and men are merely players. Each one has a part to play. So we all had a part to play on that stage, and it was left as it was. And then we all stepped down. Everything was in place, the lights and everything. There were no students. There weren't any teachers. We weren't there. And then gradually, I think around in another 2 days' time, we all went virtual. Going virtual was indeed good. It was a very great learning experience, no doubt about it. I think it was one experience of my life, which was apart from my research, apart from my courses, my workshop, everything. What I learned through Zoom was a different world altogether. We took exams, we took tests, we had debating sessions online. Like everything was there. So it was a different experience, but I did miss the children. I did miss walking around the passages. I did miss the staff room meetings and all. It was a lot. Entering the gates, looking at the children. When I went to get my stuff, I needed my mark book and all. When I went to get my stuff all covered up with a mask, gloves and everything, that was one moment जब मेरा दिल एक थोड़ी सेकंड के बंद हो गया. खाली स्कूल को देख के it was like एक अजीब सी तकलीफ हुई मुझे. I had tears in my eyes at that time too. And it was all different. It was very different. It was painful. But yes, it was a good learning experience that education must go on, even if it's virtual. It went on. And we closed on the 23rd of April. During the last 1 week, we worked on our reports. Our reports went virtually. Then all those farewell messages that we got from our children, those emails, we aren't supposed to give numbers, of course. The emails that we got, it was like overwhelming. But yes, it went smoothly. It went well. Let's see. I don't really know when we are going to reopen. What's going to happen? Okay, that's. I think these are the sentiments and the feelings all around the world as far as we teachers are concerned. And as Miss Afroza said, that education is love. We are receiving a lot of comments. Just want to add over here our Vice Chancellor, Madam Seema Mughal. She has. She's saying, good to know, Afroza, that the academic activities are going on and students are well connected during COVID-19. Zara, she is also greeting you, and she's good. She's saying that good to see you. Good to hear from you too. Yeah. So there are the students of your school who are also over here. One of them is Shifa Lodi. So we'll be talking about the comments as well.
Coming back to this, Ms. Afroza, just tell me one thing, that these dark clouds of COVID-19, since they have created a lot of havoc and, पूरी दुनिया इसमें आई हुई है. What about those? And I'm not only talking about Pakistan, but particularly Pakistan, those children who are in the marginalized areas. They are facing a lot of difficulties because उनका तो सब कुछ बंद हो गया है, and there are many areas जहाँ पे connectivity नहीं है, जहाँ पे. So how do you see post COVID के उन बच्चों के लिए जो वो gap आ जाएगा, तो उसको किस तरीके से हम fill कर सकेंगे? तुमको पता है शाजिया, मैं एक चीज पे मेरा ईमान है, और there was a study also, I cannot put my finger on the dates it was conducted, कि बच्चे को तुम किसी भी उम्र में उठा लो और उसको एजुकेशन दो, उसको 6 महीना लगेगा टू कम अप टू दैट लेवल. बिल्कुल नहीं बंद हुई है, मीडिया नहीं बंद हुआ है, टीवी नहीं बंद हुआ है, और गवर्नमेंट ने 2 चैनल शुरू कर दिए हैं जिसमें ऑनलाइन टीचिंग चल रही है. पढ़ लो सब नाम से भी एक चैनल आ गया. लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, खुली है. और यकीन मानो कि मैं इन ऑल सिंसियरिटी, मेरा अगर दिल और ईमान मानता है, तो मैं बच्चों को खुला, मैं जून जुलाई में बच्चों को अगले साल की किताबें नहीं इशू करती हूँ. मैं उनसे कहती हूँ जब पढ़ोगे जून जुलाई, टेक इट ऑफ, टेक अ ब्रेक, बिकॉज ब्रेक होता है एक ह्यूज लर्निंग प्लेग्राउंड होता है दुनिया का. मतलब अगर तुम सिर्फ घर से टंडोवाला यार तक भी ट्रैवल करते हुए चले जाओ, इफ यू कांट अफोर्ड द वर्ल्ड, यू गो नेक्स्ट सिटी, यू विल so much, there is so much education किताबों से हटके बहुत ज्यादा. तो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे जैसे ही आएंगे, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता होता है वहीं से शुरू हो जाता है. पता है कि मेरे प्री स्कूल में एक जमाना होता था कि मैं कहती थी कि केजी करके बच्चा निकल जाए ना, दुनिया में किसी भी लेवल पे काम कर सकता है, क्योंकि इतनी सॉलिड एजुकेशन, टेक्निकली लिखना पढ़ना हिसाब करना उधर ही आ जाता है ग्रेड 1 2 तक. उसके बाद होते हैं ना, वो उनका जहन को वसी कर रहे होते हैं, उनको इंसान कहते हैं ना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, उनको इंसान बनाना सिखा रहे होते हैं. एंड मेरे as you must have seen them, कि जब निकलते हैं तो मतलब एक सॉलिड इंसान बन के निकलते हैं. तो 1 साल बंद हो गया दुनिया, तो कुछ भी नहीं होने वाला है इन बच्चों को. बच्चे सीखेंगे. Coming to this, this is a very interesting point which you have raised, and हम अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे भी ये बहुत हम डिस्कस करते हैं कि we are giving bookish education to the children. What about the tarbiyat? What about the upbringing? What about the grooming? ठीक है, it's the parents' responsibility, but I think it's the responsibility of the teachers as well to tell the children कि what is right, what is wrong. आप 7-8 घंटे बच्चा आपके पास स्कूल में होता है, तो जो वो वहां से अपने पीयर से सीख रहा है, बिकॉज वो सारा इफेक्ट जो है ना, वो रिपल इफेक्ट आता है. अच्छा जी, उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए. तो दीज थिंग्स कि उनको बताना कि नहीं बेटा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, द बेसिक वैल्यूज एंड मॉरल्स हमने इंस्टिल करनी है. So ये when I was there with you, so I was really amazed to see that this के इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेनिश में भी हम इस चीज पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, बिकॉज बच्चे जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो दे थिंक अच्छा वी आर नाउ द अंडरग्रेड्स, और अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो वी आर सो बट उनको भी हर स्टेज पे ग्रूमिंग की तो जरूरत है. एंड ये कोविड-19 में आई थिंक के जैसे आपने कहा कि हम घरों में बैठ के भी तो माँ बाप के साथ बच्चे बैठे हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो वी आर लर्निंग. ज़ारा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट? देखो, you've taken me back into time, though I wouldn't call myself a very young undergrad, or I wasn't even an undergrad at that time when I joined Greenwich. So I perhaps because the institution plays a very strong and important role in grooming of a student. I wouldn't call myself a child, but yeah. So if I just take myself back a couple of years for Greenwich, yeah, Miss Seema Mughal, of course she's there. मैं आज तक ये कहती हूँ, जो कॉन्फिडेंस मुझे मेरे अल्मा मेटर जो ग्रेनिश ने दी थी, वो आई थिंक मुझे मेरे ख्याल से मेरे घर से नहीं मिली थी. और जो मेरे टीचर्स थे उस टाइम पे, सर सलमान थे, मिसेस परवीन थी, राशिद भाई थे, ऑफ कोर्स, कौन भूल सकता है, एवरीवन इन द एडमिन, ज़ैनब मिर्जा,
और क्या कहते हैं, मिस सीमा मुगल, सर सईद मुगल, ये लोग जिन सब ने जो मुझे होल्ड किया था ना शाजिया, दैट इज अनबिलीवेबल। आई थिंक मुझे जो कॉन्फिडेंस आज, मुझे पता है मैं एक थोड़ा सा एक बैगेज लेकर आई हुई थी साथ ग्रेनिच, बट मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ, हर बच्चे का एक बैगेज होता है। इफ आई जॉइंड से इन माय लेट 30s, it doesn't mean that I didn't come without a baggage. I came with a baggage. So I think that baggage was unburdened by all these people whom I have mentioned, and in a very beautiful manner. कि मैं एक डिपार्टमेंट की, मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के डिपार्टमेंट की मास्टर्स करने आ रही हूँ, डीन्स लिस्ट पे आना, फिर दूसरे सर अब्दुल्ला हमारे जो फारूक दीवान जो थे ना, मुझे अपने डिपार्टमेंट से एमओसी बना देना। वहां मैं 1000, 1500 बच्चों का फैशन शो होस्ट करी हूँ, एक दफा नहीं 2 दफा, वो भी अपने डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन इधर उधर की डिपार्टमेंट, मेरा ताल्लुक ही नहीं था उस डिपार्टमेंट से। उसने मुझे ग्रूम किया, इन सब चीजों ने किया। तो आई थिंक ग्रेनिच actually formed me into a very confident individual while I was a student over there. So it wasn't only my parents. My parents, they came for my gold medal का जो ceremony था, convocation, सबके लिए आ गए, सारा कुछ हो गया। But मेरे स्कूल कॉलेज ने जो मेरे लिए, यूनिवर्सिटी ने जो मेरे लिए रोल प्ले किया है, तो I think each one of us has a role which we need to fulfill, right? Yeah. As people who are grooming up the students too. Hampton does that, I know that for sure. I was a very hyper head of academics who went there. अभी तक hyper Yeah. मेरे ख्याल से मेरी कबर भी जो होगी वो भी जंपे मारी होगी उसकी मट्टी के बाद में। बट ये So, बात है, देखो वी प्ले अ रोल इन ग्रूमिंग आवर चिल्ड्रन। सो ये वर्चुअली वो चीज नहीं हो सकती, एक लिमिट तक हो सकती है, एक एक्सटेंट तक हो सकता है, बट नॉट फिजिकली। वो फिर पेरेंट्स का हाथ है उसमें, पेरेंट्स हैव टू डू दैट। हर चीज तो बच्चे के सर पे नहीं, अब टीचर के सर पे नहीं डाल सकते ना। अब यहाँ पेरेंट्स काउंट करते हैं। व्हेन दीस चिल्ड्रन रिटर्न टू अस फिजिकली, लेट्स सी हाउ ग्रूम्ड दे आर in these 2-3 months, God knows till when. But let's see, we played our part. Okay, ma'am. हाँ, अफरोजा, आपसे एक I just read somewhere that the future belongs to those who open up the enrollments, and not limit oneself to mere, measure of assessment. So what do you think? Isn't it like, after all, after going through so much of this, if we put a marker, okay, no, you have to clear this assessment, then you can go further. So isn't it going to be unjust for the kids if we just मेरे लिए तो ये ज़ारा भी बैठी है, मजाक बनाया हुआ था कि तुम्हारा बस चले तो हर बच्चे को पास ही करती चली जाओ। बिकॉज मेरे नजर में कोई बच्चा जीरो नहीं होता। कोई बच्चा कहीं एक जगह फेल अगर हो भी रहा होता है तो दूसरी कई जगह पे बहुत आगे होता है। मेरे लिए कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। यकीन माने कि बच्चों की, हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है, और मुझे हर बच्चे में जहाँ उसकी स्ट्रेंथ होती है उस पर काम करने में मजा आता है। एंड अभी एक मेरी छोटी सी बच्ची जो मेरे यहाँ से प्री स्कूल करके अमेरिका चली गई थी, आज मैंने उसे पढ़ा कि शी गॉट सुमा कम लाउड, मतलब शी केम टॉप ऑफ द लिस्ट, एमएड किया उसने 4 GPA के साथ, अनुषे ददवानी, एंड her target is now to do her PhD। और मैं इतनी एक्साइटेड कि बच्ची जो मेरे प्री स्कूल से गई थी अमेरिका में, और आज ये बच्चे ये जो होता है ना, ये पढ़ाई इज जस्ट छोटा सा पार्ट ना बेटा, बहुत कुछ मिला के एक इंसान बनता है। और ये जो पास हो जाना और ये जो फेल हो जाना, अरे साहब मैं मैट्रिक में एक दफा फेल हो गई थी, पता है आपको? मैट्रिक में मैथ फेल कर दिया, एंड वो जब दूसरी दफा इम्तिहान दिया तो 99 आया। क्यों 99 आया? क्योंकि वो टीचर ही नहीं पसंद था। जो नहीं पसंद था उसे नहीं पढ़ना था ना बाबा। और उसके बाद IBM में मजे के साथ, मतलब 7000 में से जब 25 जब लिए गए तो उनमें से एक हम भी थे। तो मतलब ऐसे कोई बात थोड़ी है ना कि मतलब वो मैं जो एक दफा फेल भी हो गई थी तो क्या मैं फेल थी लाइफ में? हरगिज भी नहीं। मैं तो स्कूल भी वेरी वेल सेड कर लेंगे सब जिंदगी में। कॉन्फिडेंस दे दो, कम्युनिकेशन स्किल्स दे दो। एग्जैक्टली, दीज आर द थिंग। बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस, 3 खेल खिला दो, उसके बाद बच्चा आजाद है। यही मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ ना। This is what I'm talking about, कि confidence is what it matters. When I entered university, I was like insecure. पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या whatever. But confidence मिली, अफरोजा के पास confidence मिली। I think मेरे इतनी confidence मिल गई कि अब थोड़ा सा overdose हो गया। But the thing is कि बच्चे जो
बच्चे देखो अभी ये 2 महीने बच्चे हमारे साथ नहीं है. They aren't there. So it's Yes. like up to the parents. If they contact us whatsoever, we are going to be there to help them. But I guess end of the day, again they'll be with us in our arms, sitting in front of us, hearing us, hating us, and loving us both at that moment. Yes, But then yes. again, we are there to groom them, and children do miss their teachers for sure. At Okay, times. yeah, definitely, definitely. We are missing them, but still, thanks God that we are connected to them as well. And Zara, Miss Seema Mughal is saying that you had inborn qualities. Kahan gaya? Yeah, you had inborn qualities, and we all dig out. We still miss your hosting at Greenwich. I still remember the shows you hosted, the fashion shows arranged by Diwan Abdullah. Always stay blessed. And Always there for you, ma'am. you Always wonder there. why that after graduating from Greenwich myself, I'm here, and it's been, mashallah, it's my 5th year going on. And as Zara said, that the institutions, they give you a lot of exposure and confidence. Coming to this education, I was just reading somewhere that education is nudged and pushed to change could lead to surprising innovations. So I think these are the surprising innovations which we are handling these days. क्या ख्याल है आपका, मैम अफरोजा? देखो क्या सरप्राइजिंग इनोवेशन, मुझे तो इतनी सारी सरप्राइजेस मिली हैं कि जिन टीचर्स को कभी मैं समझती थी कि ये, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही होती थी कि ये पढ़ाएं सही से, वो मेरे इतने मजे के टीचर्स निकले हैं कि जो पता नहीं कहाँ से इन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बड़ा बड़ा जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा क्या रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको दुनिया का बता रहे हैं, उनके वे फॉरवर्ड बता रहे हैं. एंड आई सी दो सेशंस एंड आई एम लाइक, अरे ये मेरा टीचर इतना प्यारा था, यू नो. एंड they're amazing. The teachers who've turned into friends, they've turned into, those, that helping hand. ज़ारा कह रही थी ना कि माँ बाप का अब ज्यादा काम है. मैं तो कहती हूँ कि इन टीचर्स ने इतना सारा काम कर डाला है कि मुझे तो सल्यूट करने का इनको दिल होता है कि ईच वन ऑफ देम. कभी कभी किसी से मैं नाराज जो रहती थी तो पता चला सबसे प्यारे तो वो निकले, सबसे प्यारी तो वो निकली जो मैं जिनसे बहुत ज्यादा नाराज रह रही थी. They're just plain amazing. Each one of them with a conscious है, with a heart है, and they are the hands जो मैं समझती हूँ मेरे हाथ जो रीच कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ, और वो हाथ मेरे हाथों से किसी तौर कम नहीं है. So मैं बताऊँ, I'm sorry, my dogs will be barking. No, doesn't matter. They are also putting their input in it. नहीं, हमें भी we are also being affected. Typical online. कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है. So बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि those teachers who were like not very computer literate, वो भी अब इतने माशाल्लाह एक्टिव हो चुके हैं कि they are properly conducting the classes. And जैसे हम लोग टर्निट असाइनमेंट ले रहे हैं, उसको हमारी जो ये एग्जाम सिस्टम हमारे डीन ने बहुत अच्छा बनाया, सॉरी हमारे डायरेक्टर क्यूईसी ने, डॉक्टर सुल्तान मुगल ने. सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग, और बहुत हमें तो मजा आ रहा है, और इस नई चीजें सीखने को मिल रही हैं. एक चीज जो कि this COVID-19 has shown us the importance of resilience to face various threats. That threat might be, you can say, it can be a pandemic disease threat, it can be a violent extremist threat, or it can be the threat of the rapid technological changes. So we need to build up resilience in the education system. Don't you think कि ये थोड़ा सा हमारा lack करता है education system में resilience? What do you say, ma'am Afroza? देखो मैं थोड़ी 2 मिनट मुझे दे दो, मैं मेरे कुत्तों को थोड़ा सा let me lock them in my room. Zara, आप बताओ, what do you have to say about this resilience that must be built into our education system? Resilience as regards to our students, or to our teacher, or to us? In every aspect. Because see, resilience has, Shazia, resilience has been very evidently shown and manifested itself in this time of COVID crisis, right?
Like you said, that teachers who weren't computer literate have now shown themselves to be pretty capable, right? क्या कर रहे And थे? we had a set routine and everything. The resilience in education is very obvious here. देखो government schools तो नहीं है हमारे बेचारे, वो जो government schools हैं, they are the ones who are suffering. They are the ones who do not have the access to the computers and all. हमारे तो जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, केम्ब्रिज स्कूल्स के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से सफर हुई है. हाँ, हम लोगों ने बल्कि इनफैक्ट there were times when we really missed seeing the children's faces, and there was one time when I used to tell the children to open up their cameras. I want to see their faces. So you know, the initial smiles that we exchanged after we went virtual were very satisfying. There was a very emotional moment for each one of us. But the resilience in education, of course, it's shown, Shazi, it's very much obvious that you people are carrying on your interviews and all. Yes. You are right now sitting at your university and imparting knowledge to thousands of viewers, hundreds of viewers over there. We finish off with our classes. We are always also having online classes. So it's like, there it is. It speaks for itself. I don't think so. We need to have any more justification for that. It's pretty much evident. Okay, ma'am. Afroza, आप क्या कहेंगे about this resilience that must be built into our education system? देखिए, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना, फ्रैंकली इतना समझ में नहीं आ रहा है कि रेजिलियंस इन व्हाट वे. हम बच्चों, मतलब इन व्हाट वे डू यू आर यू आस्किंग? मतलब रेजिलियंस कोई भी, किसी भी किस्म का कोई थ्रेट होता है तो उसको हम किस तरीके से फेस करते हैं, या किस खूबसूरती से उसको लेना चाहिए. देखो, थ्रेट तो जहां से आया है, दिस इज, देखो शाजिया, ये वो थ्रेट आया है, ये वो अचानक से जो आई है, जिसे कहते हैं ना आसमानी, अचानक से कहीं से आई है, आफत आई है. क्या आया है, रियली एज येट आई एम नॉट इवन एबल टू पुट माई फिंगर ऑन इट कि ये पेंडेमिक है. इट इज लाइक, मैंने हमेशा सोचा था कि यार अगर कराची में कुछ स्ट्राइक हो जाएगी, मैंने तो अपनी फैमिली लेनी और निकल जाना है अमेरिका, ठीक है ना. मैं तो कहीं नहीं निकल सक रही हूँ. अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं अपनी जमीन पे बैठ के स्ट्रांग हो गई हूँ. मतलब मेरे बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरी फैमिली स्ट्रांग हो रही है, मेरे यू नो आई एम मोर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. तो रेजिलियंस टुवर्ड्स वर्क, माय वर्क गोज ऑन, एक दिन भी नहीं रुका है, ठीक है. चाहे ऑनलाइन चल रहा है, चाहे हम उनकी किताबें चेक कर रहे हैं, वापस आ रही हैं, नोट्स आ रहे हैं, चेक हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम में ब्रेक आया है. एंड माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी कि हमने इतनी अच्छी तरह संभाला हुआ है. हाँ, ज़ारा सेट के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. इतनी मज़े मज़े से वो सब काम हो रहा है. दुनिया सीख रही है बेटा, दुनिया स्ट्रॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. हाँ, जो सबसे बड़ा मुश्किल जो मुश्किल आ रही है, वो मेरे डेली वर्कर्स को आ रही है, मेरे डेली वेज अर्नर्स को आ रही है, जो जिनके पास खाने को पैसा नहीं, उनको आ रही है. बाकी लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि टाइम टू recoup, to look better, to feel better, to get healthier, to get to know your family better. 1 साल जिंदगी का चला जाएगा, जाने दो. बहुत कुछ उसके बदले में मिल भी रहा है हमको. मैं मजे की बात बताऊंगी कि मैं जो कभी खाने नहीं पकाती थी, वो खाना पकाना शुरू कर दिया. कल मैंने मीठा बनाया इतना मजे से. You know what I'm trying to say is that you're not allowed to eat with Afroza. Zara, I've lost 16 kilos. खुदा का वास्ता, बस. I can see that. नहीं, चलिए आप बिल्कुल सही कहेंगे. पता है बेटा कि बहुत अरसे बाद ये जो पिछले 2 महीने थे, मैं I get up for tahajjud every day. So 3:30 I'm up every single day of my life. मुझे बहुत सुकून की इबादत मिली हैं, जिसमें मुझे सीरियसली कंसर्न नहीं रहा दुनिया का. मुझे लगा सब ठीक हो जाएंगे. सबके लिए दुआ मांग ली, अल्लाह जो चाहता वो करता है. और अल्लाह ने अगर इस पोजीशन में डाल दिया है तो अल्लाह ही इसी से निकाल देगा. दुआएं उनके लिए, और उनके लिए जितनी मदद हम कर सकते हैं थ्रू पर्सनल एफर्ट्स हम कर रहे हैं. और जहाँ जहाँ जो हमारे हाथों में है हम पहुँचा रहे हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसके थ्रू पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत थोड़ा सा कर सक रहे हैं और कर रहे हैं. लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि अपने हाथों की रीच पे देखो, जहाँ तक तुम्हारे हाथों की रीच जाती है
which means people who working with you, उनके घरों में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो you should be open to that, और उससे आगे कोशिश करो कि वो थोड़ा आगे फैल सके. But at the end of the day, बेटा, मुझे ये टाइम्स अभी एट दिस मोमेंट मेरे लिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं जितनों को जानती हूँ सब हेल्दी हैं, सब सुकून में हैं. एंड जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो मैं उनके लिए जो कर सक रही हूँ मैं कर रही हूँ. मैं से मतलब है हम, एज इन हम सब जो हैं, हम सब कर रहे हैं जो हम कर सक रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने इम्तिहान लेना है, अल्लाह सुरखरू करेगा. Inshallah. Ma'am, एक सवाल है, questions, people are sending questions. So one of those questions is that when do you think schools will open? ये इरम अहमद कह रही हैं, when do you think schools will reopen, and if they do, what safety measures are schools taking? So what measures have the Hampton has taken? देखो बेटा, we are a group of around 60 schools. We are developing SOPs, standard operating procedures. आप को अंदाज़ा होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर स्कूल जो हमारे ग्रुप में है वो उसी तरीके से उसको करेगा कि देखो, अभी अंदाज़ा जो मेरा है कि जुलाई तक तो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 15 जुलाई तक, और जून और जुलाई हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है. हो सकता है 15 जुलाई को बुला के इम्तिहान लें और आगे करें, या हो सकता है कि उन्हीं क्लासेस की बेसिस पे आगे कर दें. मुझे उससे आगे ये छुट्टियां जाती हुई नहीं नजर आ रही हैं. और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वुड लाइक इज के मेरे पास अभी भी अगर आप आते हैं स्कूल में तो आपका टेम्परेचर लिया जाता है. अच्छा, एक ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है हमारे सामने ही, तो उसमें आपका ऑक्सीजन चेक किया जाता है. अगर ऑक्सीजन सही नहीं है तो आपको अंदर तक आने नहीं दिया जाएगा. सो आपके ऑक्सीजन लेवल्स, फिर वहीं पे आपके लिए सैनिटाइजर्स रखे हुए, उसके बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, मास्क के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते. एट दिस स्टेज ये है. और जब अगर स्कूल इंशाल्लाह खुलते हैं तो वॉक थ्रू गेट्स हैं. अगर उससे अभी तक उसकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि हम वो शुरू करेंगे कि वो गेट्स, ताकि बंदा स्टेरिलाइज होके ही अंदर आए. बाकी बेटा देखो, मुझे ऐसे लगता है कि 2 महीने के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया कहाँ पर है, किस लेवल पे है, खुल भी सकता है कि नहीं खुल सकता है. दुनिया आज कराची पूरा खुल चुका है, ठीक है. एंड मैंने देखा कि कराची के लोग, अच्छा बड़ी मज़े की बात है कि मैं क्लिफ्टन डिफेंस तक गई, सारे लोगों ने मास्क पहने हुए, 90% लोगों ने मास्क पहने हुए. एंड मैं चूँकि गाड़ी में थी और मैंने मास्क उतारा हुआ था, तो पुलिसमैन ने नॉक किया और मुझे कहा कि भाई मास्क पहन लो, ठीक है ना. बट देन आई हैड सम वर्क, आई थिंक इट वाज संडे, जो मुझे गार्डन ईस्ट पे थोड़ा सा काम था, मैं वहाँ गई थी. और पता है क्या, मैंने वहाँ किसी को मास्क पहने नहीं देखा. अब कराची जो है ना, इतनी वास्ट सिटी है, वहाँ मैंने देखा कि तुम्हारा 80% ऑफ कराची क्लिफ्टन डिफेंस नहीं है, 90% ऑफ कराची क्लिफ्टन डिफेंस नहीं है. वहाँ पे कोई मेजर्स इतने लिए नहीं जा रहे. लेकिन ये जो हमारे अवाम जो है ना, वो या तो इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, काम कर रहे थे, अच्छे खासे थे, अट्टे थे सारे. एंड आई थिंक हमारी रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है और हमारी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त है कि हम तो पता नहीं कैसे कैसे पानी से गुजारा कर रहे होते हैं. पीने का साफ तक तो पानी नहीं है, रहने की कोई सैनिटेशन तो कहीं है नहीं इतनी ज़्यादा. तो लोग बड़े माशाल्लाह से, मतलब इम्यूनिटी तगड़ी हुई है इनकी. एंड आई पर्सनली फील के 15 जुलाई तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, पर अगस्त में खुल जाएगा स्कूल इंशाल्लाह. There is one question for Zara. जी बिल्कुल Zara, there is a question for you from Burhan Javed. He is an author and Cambridge graduate, a very learned individual, and he's saying that my concern about the present generation is their lack of interest in quality literature and basically their lack of interest in books. Just the other day I met a student of English literature who told me he prefers to prepare for his exams by watching movies of old classics. No matter how much we flourish in the world, visual arts, books will always remain our chief source of wisdom. I would appreciate if you could help and restore that lost culture of reading. How do you plan to do that?
Burhan, I read your question quite a few times, but what I want to ask is if that child is passing his examinations by watching movies of classics, I'm sure his grades might not be matching. Uska GPA कहीं नीचे ही होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं. I really don't know because being a literature student myself, I love to read books till yet. I love to watch movies and all. But the only problem that I have is that you cannot pass your exams just by watching movies. Yes, you can read the book, then complement it by watching the movie, comparing it, analyzing it, and seeing कि भाई what's wrong with the movie, what's wrong with the book. But this is like really absurd because I don't think वो बच्चा फिर ऐसे ही घुस गया है, पढ़ ही रहा है, शौकिया भी नहीं पढ़ रहा, वो खामखा में घुसा हुआ है. I don't know for what reason. But for a literature student, I think this isn't on at all. And as far as if he's got that mindset that he thinks that just by watching movies, he can pass exams. So I feel that neither you, Murhan, nor I can help him. उसका mindset ही अगर ऐसा है, तो we cannot actually encourage him कि नहीं आप किताबें पढ़ें और आपको प्लीज पढ़नी जरूरी है और ये करना कि जी आप एग्जाम बुक्स ना देखें, उसका mindset नहीं change हो सकता. We can't And even force him. I think Zara, कि it's not about only passing the exams. I think he means कि books reading की जो habit है generally वो भी खत्म हो रही है. And reading habit, and you know when I get a book in my hand, that feel जो है वो जितना मजा हाथ में पकड़ के किताब पढ़ने का आता है वो somehow उसमें नहीं आता है. चाहे Kindle है, Kindle है, बहुत सारी. I don't even like them until I don't hold the book in my hand and I have the feel of the paper. I can see the words. I can reread my paragraphs. I don't feel good about it. But yes, for someone who, I don't know, मुझे यही मैं कह रही हूँ, I want to know the person's mindset. Why did he firstly take up literature? And what grade is, what age level is he talking about? अगर तो वो बच्चा है तो of course then it can be inculcated. आप उसको छोटे छोटे stories, short stories पढ़ा दो, थोड़ी सी enactments उसकी दिखा दो, discuss. The parents should sit and analyze, discuss with the child. Okay, what have you read? What's the most interesting part about that passage or about the story that you've read? Perhaps you can do that. और अगर पेरेंट ने भी वो बुक पहले से पढ़ी, थोड़ा सा एनालिसिस, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हेल्प करती है. बच्चे को ऑटोमेटिकली जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. एज लेवल भी डिपेंड करता है. कि बुरहान ने बता दिया होता कि एज क्या है, मे बी आई वुड हैव बीन एबल टू गिव अ बेटर सजेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो इट्स बिन अ वंडरफुल सेशन और दिल नहीं कर रहा कि ये खत्म हो बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मेरे जहन में आ रहे हैं और मैं पूछता, लेकिन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेशन with you two wonderful ladies, and I thoroughly enjoyed, and I think कि हमारे viewers ने भी बहुत enjoy किया होगा. So I just want to wrap up, और वो wrap up में मैम फिरोजा के ही एक जुमले से करूँगी which really hit my heart, and education is love. So we need to think about it कि education is only love, and love जो वो कहते हैं ना कि प्यार जो चीजें करा सकता है वो और कुछ नहीं करा सकता, वो गुस्सा या और कोई एवेन्यूज जो उतने भी कर लें वो नहीं कर सकता. सो आई थिंक कि इस प्यार के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस जो चैलेंज है हमें आजकल आया हुआ उससे निकाले और हम सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और फिर इंशाल्लाह मिलें. Thank you so much. Thank you, Shazia. Thank you for having us. Thank you, Zara. Thank you so much. Thank you. Lafis. Thank you, and everybody for watching this program. It was a wonderful program. I thoroughly enjoyed talking with such nice ladies and such powerful, charismatic individuals. I hope कि आप लोगों को भी अच्छा लगे होगा. हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे और आप लोग अपनी इनपुट देते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि हमें और कौन-कौन से टॉपिक्स पे जो आजकल लोगों को बॉदर कर रहे हैं उस पे बात करनी चाहिए. शुक्रिया बहुत-बहुत. Please stay safe and stay healthy. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रोहेल. एक मिनट प्रोग्राम विद रोहेल इंतखाब. जो हमारा टॉपिक करेंगे जिस तरीके से को आगे लेके जा, थोड़ा बहुत स्टाइल जो है मार्केटिंग का और एडवर्टाइजमेंट का किया है. कौन कौन से हुए हैं, क्या होने लगी है, कंज्यूमर या कस्टमर है, और देख रहे हैं कि जो है उनकी जो डिमांड वो कितनी कम
लाजमी बात कर रहे क्यों होते जा रहे एडवर्टाइज और द क्रिएटिव के लिए मैं है साहब और मैं वेलकम करेंगे। वेलकम टू आप साहब की हम की बात आप मुझे क्या कर रही है ब्रांड कर दे रहे हैं इसके लिए आप मुझे थोड़ा करवाइए। एडवर्टाइजमेंट की बाहर एक्सपीरियंस जिसके रहता है इस तरह के एक्टिविटी हम लोग करते हैं आजकल बहुत टोटली ये उम्र के साथ एक्टिविटी करते हैं के दिनों में इससे पहले काफी ग्रोथ आपको होगा ग्रोथ तो इस तरह लेके चले स्कूल्स के करते हैं ऐसे बिस्किट्स तो ताकि डायरेक्ट उनकी उनके फायदे बता उनको ट्राई तो ऐसी बात है उनके डेवलप के अंदर एक्टिविटीज हम कर रहे होंगे मॉल कोविड से काफी सारे चीजें इंडल्ज कर रहे हो यदि उसके अंदर एक आप क्लाइंट को अलावा एक देना देना 3-4 चीज अच्छी कैंप अगर आप आजकल बात जो कहते हैं जहाँ जैसे अब तो आप आगाज और जितने पर भी एंगेज नहीं की वजह से करियर किया हुआ नॉर्मल लोग वो डायरेक्ट एंड का स्पीच बता रहे जिससे किसी ब्रांड ऑब्वियसली ऊपर ठीक मीर के क्या जिस तरह जा रहे हैं दे रहे हैं कंपनी क्या होगा कंपनी खोल आपसे कांटेक्ट लिस्ट में अगर मैं आपकी तो मुझे देंगे ब्रांड वही वाली बात किसी चीज एक्सपीरियंस तो आपकी उसके जैसे कि आपने जहाँ करा जो
के अंदर उसके, क्योंकि आपने उसका एक अलग चीज होती है जब आप एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है जब वो आता है, तो अब वो वही लिए इमोशनल कनेक्ट जो है अपनी ब्रांड की तरह आपने जो है प्रोडक्ट के साथ आप हमारे यूथ उनको क्या क्या समझाएं एजुकेशन एडवर्टाइज हमारे एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट हैं कि ये ब्रांड होगी, हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, जो मार्केट में हमारे को देख रहे हैं क्यों या कोई गैप देख रहे हैं कि बेहतर करना चाहिए। ज़्यादा गैप है पढ़े लिखे लोगों, मैंने भी काफ़ी अलग किया क्योंकि ये जो एड जिसको आप कह लेंगे एड बनाना या प्रिंट, उसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन ये जो इतना, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं थे, इतनी ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड है नहीं है सर, मतलब एक ऑन ग्राउंड काम वो कोई भी कर सकता। हाँ, लेकिन पढ़े लिखे होते तो आप चीज़ों को तरीके से करते। हमारे जैसे मैं आया भी काफ़ी सारे कम्पिटिटर, हम लोगों ने ग्रो किया, हम लोग पढ़े लिखे थे, ब्रांड को जल्दी समझते थे, हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी हुई थी, हमने चीज़ें पढ़ी हुई चीज़ें, तो फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत अच्छी, इसके अंदर गैप है, मेहनती इसको उसके लिए बहुत ग्रोथ। अच्छी बात आपने बोली कि अगर आप इस फील्ड में से कह रहे हैं कि किया तो सोचें कि इनकी ट्रेनिंग हुई होगी, और मैं खुद मैंने खुद एडवर्टाइज, तो मैं जिस तरीके से हम जिस तरीके से हम ऐड करते हैं, हम जनरल पब्लिक, तो जो पढ़ लिख कर उस टेक्नोलॉजी की तरह कम्युनिकेट कर रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स ऑल। सर मुझे एक चीज़ बता, पाकिस्तान में देख रहा हूँ माशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट बेहतर, कुछ सेंस आ रहा है, था ट्रेडिशनल के जिंगल्स गानों, उसके बाद हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखे, हम इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी ऐसे आते हैं कि उसको सीखने को हम उसी दूसरे ममालिक, तो हम आपके समझते हैं, हम बात करें हमारे अपने करें, हम लोगों ने कुछ एडवर्टाइजमेंट से या अंदाज हमारा चल नहीं, आप देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क, पहले बहुत अच्छे कि आपके और मेरे उसका स्टेट लाइफ अभी तक याद है होगा आपको, खुदा मेरे अब्बू, वो भी बड़ा अच्छा है, जो ऐड है वो भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा है, जितने भी ब्रांड्स हैं वो बाहर करते हैं, थाईलैंड बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, भी बहुत अच्छे शूट, बहुत अच्छी क्या, तो यहाँ भी बहुत अच्छा। बजटिंग की मैं बात अक्सर एडवर्टाइजमेंट का परेशान है, किसी का जब बड़ा अच्छा बजट जब से और खुसूसन करेंगे, थोड़ा इनका मार्केट जो है आपका, आप कितना सपोर्ट करेंगे जो है वो एक के तौर पर इंडस्ट्री उन्होंने यानी कि टेलीविजन का हिट किया है।
ऐसा होता भी है, मीडियम है, प्रिंट एड भी एक मीडियम, टेलीविजन भी एक मीडियम, बढ़ते रहेंगे। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड अगर क्लाइंट ने 100 तो वो ऐड में लगा लेगा ना, क्योंकि कंज्यूमर के लिए कंपनी होती है। तो जहाँ कंज्यूमर जाएगा, अगर कंज्यूमर बिल्कुल छोड़ दे तो साल के टीवीसी बनना, तो ब्रांड तो कंज्यूमर के लिए काम, एजेंसी के लिए तो काम, एजेंसी तो है जो के करती है। क्लाइंट तो अपना ही फायदा देखना चाहिए, होती हैं वो अपना रहती हैं। जैसे कि हम लोग डिजिटल हैं, कुछ साल पहले बनाई, तो उस काम कर रहे हैं डिजिटल, आहिस्ता आहिस्ता शुरू ब्रांड एक्टिविटी हमारी। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेड की तरफ क्लाइंट ज़्यादा मूव कर रहा है, तो फिर बना ली जहाँ हम ट्रेड और इस तरह की चीज। ट्रेड कैप्टन के कंपनी है, और वाईफाई के नाम से हमारी अंदर हम डिजिटल को सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता मूव इंडस्ट्री में सर्वाइव करें, इस पे तो नहीं रहना। तो आप कंपेटिटिव होंगे। अच्छी बात बोली अभी। सॉरी, ये प्रोडक्ट है इनका एक बड़ा खूबसूरत मेरे दिमाग में आ गया। अपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। कॉमर्स हम बहुत तेज़ी से जा रही है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं? थोड़ा कि अब शॉप्स और ये होटल्स पर हम जा रहे हैं, तो अब आप प्रोडक्ट से फिजिकली, जैसे आप अभी कर रहे थे, तो के हिसाब से आप के ब्रांड को अलाइव रखना, ब्रांड को जिंदा हो गया एक आकर अपनी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फोरम के ऊपर सारी चीज़ें होती है ना, ब्रांड होते हैं, कोई देख रहा है, कोई रेडियो सुन रहा है, आ गई है, तो तो अगर आप हर मीडियम, ब्रांड तभी बनता है ना जब मीडियम पे अवेलेबल होता है, उसका एक्सपोजर हर जगह वो दिखता है। तो जिस तरह के ये एफएमसीजीज हैं, उनको तो हर जरूरत पड़ती है। काफ़ी सारे ब्रांड हैं, बुल देख लें, रेड बुल देखा होगा, स्ट्रेटेजी अलग, उनको ज़रूरत तो खैर हर एक ही आती है, लेकिन यार और दूसरी चीज़ के बड़े। जब रमज़ान ट्रांसमिशन मिलेंगी और 1 से 2 हमारे रमज़ान शुरू होते हैं, पीछे आप होस्ट के पीछे आपको ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं, ब्रांड्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑडियंस से, बड़ा खूबसूरत है उसकी प्लेसमेंट, ब्रांड के कल वो अपने बारे अपनी कम की पोजिशनिंग कर रहे होते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा सा आपसे मीर साहब, पहले हमारे पास मैगजीन की सूरत में हमें ब्रांड जो है कम्युनिकेट करते हुए नजर आता था, प्रोडक्ट कम्युनिकेट नजर आता था। जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो पेपर्स की मार्केट बहुत कम हो गई है, मैगजीन की मार्केट बहुत कम हो गई है। तो आप समझते हैं कि इसने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिया है अपना? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिए। न्यूज़पेपर वगैरह को अगर आप देख लें तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे लोग, स्पेशली कोविड में भी एक हुआ कि पेपर से भी
My name is Basman, and so, I'm of Greenwich when it was since 1997. Working with the national companies, the, I want to give students just education. जितने भी लोग आप alumni, they are very people. I want you to see and सिर्फ बिल्डिंग साइड देखें, देखिए आई को देखें भी जिंदगी एजुकेशन and you all DG Rangers. Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing, and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. DG Rangers. My name is Ali. I am alumni and Ruzi and Greenwich is study. DG Rangers. अस्सलामुअलैकुम मेरा alumni 94 में मैं ज्वाइन 1990
हुआ था इससे अमेरिका जा रहा था फॉर वेरियस पाकिस्तान तो इंश्योर environment पाकिस्तान का will I be able to not और से होंगे turned out to be a very and काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराई तो भी यहाँ से और ये किया work very lot of friends and जितने वो भी ग्रेनेड you know the celebrities which was very it was and जो batch what I've heard in life बहुत फायदा साउथ ईस्टर्न मुझे मैं था तो get a job जो वर्क है और जो तगड़ा लगाया मैं जब implement did also I kept getting here I rose up वापस आ पाकिस्तान तो यह से वो ट्रेनिंग हुई ईयर में मुझे पहुंचा थैंक DG exist which are damaged very fabric system such as intermarriage, killing, labor, murder. To prevent these, we need a law in urban areas. Comprise tiers which to specify where system also exist
of what is the jargon, the rural दुकान है मेरा स्टोर सेल करता गाँव में सर उधर वो उधर और नहीं होता उनका हक क्या करते हैं 10 देती है कि फौरी तौर पर हो जाए उन जाए और उन को सजा जब इन कोर्ट का सारा इंसान का हक होता है, इंसान में अदालत होती है, अमीरों में नहीं। तरफ जो भागता मिले या उसको इंसाफ दे, आदमी अपना बचा सकता है, हर दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तारीफ स्टेबल जो हले तो या सरकारी निज़ाम बिल्कुल घणी क़दर थी सके तो वो बेहतर करे उते अदालत को भी उनखे उनजे लगे तो भाई में जो भी वो पेश जैं भी समझ हिते असांजे तरफ़ हमारे यहाँ है एंटी सिंध और सिस्टम तक एक है शहरों को, क्योंकि माइंडसेट और हमारा जो माइंड आसमान की बड़ी वजह सिस्टम सेट वो उसका फैसला है बगैर ये, क्योंकि देही शहरों के हैं, हाँ जो मसला हो अंदर ही हल, यहाँ का जो या कहते हैं गाँव का होता है, और वही जो सुबह है वो शाम। शहरों पहले वकील कर कोर्टों में है दर जो पे हो से मारा जाए, यहाँ पे एक को जाता है, को एक से ज्यादा पेश हो
पे नीच यहाँ पे बड़े करते हैं। ही वाहे आइलैंड वारन जो इहो सही जे साम्हूं वेही करे सघां कोरट के जो इधर कोरट की जो है सरदार के लोग में कोई बहुत तालीम वाले हैं, इसलिए बहुत औखा का होता है। अपने सरदारों के सामने क्या करते हैं बात जो है कोई गांव में जो सारे नहीं है, गांव में एक आदमी वाला अगर उस के जाते या किसी उनका मेरा का काम कर गांव में रहे होता है दारी के हिसाब से हल्के हमको घबराते हैं, इसीलिए हाँ होते हैं नहीं दे सकते या जो भी होता है हमारा हो जाते हैं या जो हम उनका जवाब नहीं गांव का जो होता है हम पास जाते हैं वही हमारा कर देते कुंवारी छोकर नाच असांजे भाॼी वियो वरी असां जे करे लोड़ा ॾेई छॾियूंसीं जाइ तंहिंखां मुंहिंजो भित करे कोठे पोइ लटा बि वेठी उनखे चिंब कई अथई हेॾो सॾ छो थी रहियो असां चुपड़ी करे विया बि मर्द उन्हनि खां पुछ थोरी मुंहिंजो उन्हनि खे गाॾियूं ॾिनियूं असां कुझु फैसलो ना कुझु 3 लख जे छोकिरी ₹1 जे छोकिरी ॾींदो हाणे मां के छोकिरी ॾियां पढ़ाई घोड़ा कई मां आदमी भी हिननि की हिम्मत मुंहिंजी न्याणी मूंखे नथा ॾियनि बाज़ारनि खां तूं हक़ आहे छोकिरी ऐं हुन खां हक़ मिले जेके मैनेजर हुया उन्हनि ॿाहिरि मूंसां चल में फैसलो त हुन में वटि बियूं आहिनि तव्हांजो
There are 0.7 million pending in Pakistan are longing and is this prompts rural for which will speak verdict also this parallel as well. वाला है अगर सही है तो बनौती जोर जब लेकर वहाँ के जमीन दूर करके वो तकलीफ दोनों पार्टी खुशी आकर कोर्ट के लिए उनके जो होता है आपस Jurgas, there are draws the people areas must get Jurga system for that actual because Jurga is not by any organization. एक तो करवाने 25 लाख रुपए के को होती और वो people from our country go for court they face but due to long verdict will ignore courts tribal head another that's approaching is the lack of areas to answer in as they are comfortable giving answers because they know what may have caused to do something just to such our court give verdict sanction our can by official to in that heads
their mind. Accountable authority precedence kept of Hi, I'm Professor Director of Development, Greenwich, Pakistan. Very all take this day very for their DG Rangers in Major Chaudhary University बात हमारा और बच्चे को और लिए यूनिवर्सिटी जवाब के जरिए और ज़मीन की खूबसूरती, उसके कुदरती वसाइल और इनकी वजह से गूंजती ये प्यारी आवाज़ें अब बढ़ती आबादी के शोर में दब चुकी हैं। बड़े बड़े शहर आबाद करने की लालच में हम दरख्तों को काट कर ज़मीन को खुश कर चुके हैं। काश ऐसा ना हुआ होता, काश। आज की एक अहम खबर। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत के बावजूद किशन गंगा इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, तीन नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता। पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। इन सब पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात से ये साफ जाहिर होता है कि भारत कश्मीर पर कब्जे के जरिए पाकिस्तान के आबी वसाइल तबाह करना चाहता है। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली ने भारत के इस कदम पर कहा है कि पाकिस्तान इस मौके पर वर्ल्ड बैंक और दूसरे आलमी इदारों में पिटीशन दायर करेगा ताकि भारत को इन मजमून मकासद से रोका जा सके।
हेलो नक्शा भी रुकना। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम शाह, क्या हाल है? ठीक ठाक। और क्या चल रहा है यार? कल छुट्टी है, कल का कुछ प्लान बना देते हैं यार, चलते हैं बाहर। ठीक है तो कहाँ जाना है बता दो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अकबर। खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारे शो फ्यूचर चैलेंजेस में। आज के शो में हम मौजूदा मसाइल और वक्त की अहमियत के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमने स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, जिनमें खुर्रम मलिक हमारे साथ हैं जो कि हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं। पीर बख्श हमारे साथ है जो जमहूरियत पसंद पार्टी के नुमाइंदे हैं। फिर है हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस शहजाद बुखारी साहब, सीमा ठाकुर जो सिविल सोसाइटी की मेंबर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साइमा जहांगीर जो कि पानी तहरीक मूवमेंट की रिप्रेजेंटेटिव। तो शो की शुरुआत करते हैं। पहले हम खुर्रम मलिक साहब से जानना चाहेंगे, खुर्रम मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पानी का क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से मोदी साहब ने किशनगंगा डैम का भी अनाउंस कर दिया है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है इस बारे में? जी देखें, पानी का मसला पाकिस्तान में दो दरिया क्या, चलो ठीक है आसिफ से ही पूछ लो यार, वो चल रहा है तो। तारीख अगर उठा के देखें, कल छुट्टी क्यों है? हमने आज तक इतने स्टोर मतलब पानी को स्टोर नहीं कर सके, हम डैम्स नहीं बना सके। हमारी जो तारीख अबे यार कौन जाएगा यार, वोट देने कोई नहीं जा रहा यार साहब। पर मेरा सवाल ये है कि मतलब आपकी हुकूमत में क्यों नहीं बन पा रही है? आप सुने, मैंने आपको पहले से लेके तो हम डैम्स बनाने में नाकाम रहे हैं, मतलब हम पानी को स्टोर करने में नाकाम रहे हैं। जब डैम बनेंगे तो पानी स्टोर होगा, और जहाँ पे हमें पानी की जरूरत है तो हम उस पानी को वहां तक पहुंचा सकेंगे। तो बात रही कि हमारी हुकूमत की, देखिए 5 साल में तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये होते लंबी प्लानिंग, इसे कहते हैं फोर डिकेड प्लानिंग, जिससे कि अमेरिकन में जो गवर्नमेंट आती है वो करती है, जो इंग्लैंड में करती है, जो आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। देखिए जी, हमने जब भी, क्योंकि पानी जो है कश्मीर के रास्ते से हिंदुस्तान से आ रहा है ना, हमने जब भी उनसे बात करने की कोशिश की है तो हम पर एक लेबल लगाया गया कि आप लोग अपने फैमिली बिजनेस को आपके हुक्मरान की वजह से, उनके फैमिली बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान से इंटरचेंज करते हैं और उनसे इंटरेक्शन करते हैं। असल में हमारे जो मकसद था हुकूमत करने का और हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की, हम उस पानी को कि हम जब मोदी से मिलेंगे तो पानी के ऊपर उससे बात करेंगे। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हम इस चीज पे नाकाम रहे हैं, लेकिन हमने अपनी कोशिश की है, लेकिन हमें बाकी जो सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से हम मतलब पॉलिटिकल इश्यूज थे हमारे, मतलब बाकी जो जमातें थे, पार्टीज थे, उन्होंने हमारी अगेंस्ट नहीं प्रोपेगेंडा किया, तो हम उस चीज को हिंदुस्तान के साथ नहीं उठा सकते। तानपुर साहब, जैसे कि आपने देखा कि साहब कहने कि उन्हें मौका नहीं मिला, और मतलब आप लोगों की जो पार्टी और आपस में जो लगता चलता रहा, तो आप क्या कहते हैं कि शायद अगली हुकूमत आपकी आ रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पानी और डैम का जो मसला चल रहा है, हमें वोट चाहिए, किसी भी तरह वोट चाहिए। लोग अगर लोगों को कपड़ा रोटी का मकान चाहिए, तो भाई अगर वो नहीं मिलेगा तो वोट कैसे देंगे? अभी तो पानी भी जरूरत पड़ जाएगी आपको, रोटी कपड़ा दूर की बात है। तो पानी का मसला हल नहीं का तो वोट नहीं मिलेगा, वोट तो मिलना चाहिए। और अगर आप लोग पानी के रिलेटेड कोई इक़दाम करेंगे, कुछ बताएंगे, कोई अनाउंसमेंट करेंगे, तभी तो फिर लोग वोट देंगे, आगे बढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन आप लोग बाहर का कोई प्लान बनाते हैं यार, घूमने चलते हैं, एक ही दिन
दिन मिला है। आपने कैंपेन की उनमें आप अगली पार्टी को थ्रेट कर रहे हो? जो हाईवे पे हमने प्रोटेस्ट किया उसमें हमने पानी किया था। लेकिन पीर साहब, आप लोगों की हुकूमत सिंध में है और सिंध में ही सबसे ज्यादा पानी की कमी है। अब की बार हम डैम बना देंगे, आप बस वोट दें। मैं जस्टिस साहब की तरफ चलूंगा। शहजाद साहब, आपने क्यों नहीं इसको मोड़ लिया इस बात पे? देखिए, सबसे बड़ा मसला पानी नहीं है बल्कि करप्शन है। हम एक एक करके बड़े बड़े सियासतदानों को नाअहल कर रहे हैं, इसीलिए कि वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि डैम बना सकेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी क़यादत आए जो डैम बनाए, लेकिन अभी पानी के मसले को जिस तरह मीडिया उछाल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये एनजीओ के लोग बैठे हुए हैं, इससे पैसा कमाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। हालांकि जब वक्त आएगा तो हम उसको वोट उस पर भी लेंगे। लेकिन नाहल करने के बाद भी हुकूमत तो उन्हीं की चल रही है जिसकी क्या बात कर रहे हैं। नहीं, इस दफा हुकूमत बदलेगी। हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि लोग किसी और जमात को वोट डालेंगे और ऐसे शख्स को जो गॉड फादर है उसको वोट नहीं डालेंगे। तो मैं आप कहती हैं कि सिविल सोसाइटी को किन मुश्किलात का सामना है? मेरे मुताबिक सबसे बड़ा मसला विमेंस राइट है। विमेंस राइट पे काम किया जाए। अगर विमेंस राइट पे काम नहीं किया जाएगा तो मुल्क की तरक्की करना बहुत मुश्किल है। मुल्क की तरक्की करने के लिए सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो है विमेंस राइट। लोगों को औरतों के हुकूक देने चाहिए, लोगों को औरतों के हुकूक पे काम करना चाहिए। डैम क्या, औरतों से मुल्क तरक्की करेगा, पानी, वोट, सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन औरतों के हुकूक पे काम करना सबसे ज्यादा अहम जरूरी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा रखता है। बात इस टॉपिक पे अलग से पूरा शो हो सकता है। हमने पानी का डिस्कस करना था यहाँ पे, उस पर बात हो नहीं पाई। लेकिन चले, मैं साइमन की तरफ चलूंगा। साइमन जहांगीर, आप क्या समझती हैं कि आपकी तरफ से क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं पानी के रिलेटेड? इस वक्त सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हम पानी के मसले को मानने पे तैयार ही नहीं है। अभी आपके शो में हुक्मरान जमात भी मौजूद है, पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, तमाम नुमाइंदगान मौजूद है, मगर कोई भी पानी के बढ़ते हुए खतरे को और जो कमी की वजह से मुल्क में हमें चैलेंजेस का सामना होगा मानने पे ही तैयार नहीं है। खुदारा, इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत कालाबाग डैम और इस किस्म के मजीद डैम बनाना है। तमाम आबी वसाइल हमारे खत्म हो रहे हैं, हमारी जितनी भी आबी हयात है वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को इस वक्त सब खतरात लाहक है और वो सब के सब सिर्फ पानी के मसले के हल होने से ही मुंसलिक है। मगर मुझे बहुत अफसोस है, ना ही हुक्मरान जमात, ना ही अपोजिशन, ना ही जुडिशरी और ना ही हमारी सोसाइटी, किसी को भी इस बढ़ते हुए खतरे से आगाही नहीं है और यही काम हमारी जमात करना चाहती है। सबसे अफसोस की बात यह है कि ये औरत होकर औरतों के हुकूक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और देखें, आप बात ये है करप्शन खत्म करें, ये पानी का मसला हल हो जाएगा। जनाब, इस एनजीओ के लिए फंड इकट्ठे करती रहेंगी, ये पानी का मसला आप हल नहीं कर पाएंगी। ये जुडिशरी मदद करेगी। प्रोग्राम के जरिए आगाह कर रही हूँ जो आपके एनजीओ ने क्या की है, आप ये बताएं, आपके एनजीओ ने क्या की है? पानी का वो वक्त दूर नहीं है जब हम पानी की एक एक बूंद को तरह ये अमल कर सकते थे अगर हमें ना निकालते, ये अमल कर सकते थे। नहीं, आप सही निकाले, आप सही निकाले, आप ना निकाले, आप क्यों निकाला, आप क्यों निकाला, आप हमें क्यों निकाला? ये अमल कर सकते थे, ये अमल कर सकते थे हमें, अगर आप लोग ना निकालते। क्यों ना निकाले आपको? क्यों आपके आप कौन से दूर कर रहे हैं? उनको एहसास
यार क्या दिखा रहा है हमारा मीडिया यार। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं सही हूँ। तुम बताओ बस कैसे हो? ठीक ठाक। वोट डालने आपको जाना है? आप अभी तक तैयार हुए कि नहीं हुए? नहीं अम्मी, आज तो ऑफिस की छुट्टी का दिन है, इलेक्शन का दिन है, मैं नहीं जा रहा। तो बेटा, माशरे में तब्दीली लाने का ये वाहिद मौका होता है जो 5 साल में एक दफा दिया जाता है, तो आप क्यों इतनी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? नहीं अम्मी छोड़ें यार। नहीं बेटा, देखिए ये गलत बात है। देखिए आप जाएं और सही पार्टी का इंतखाब कीजिएगा जो लोगों के मसाइल हल कर सके। नहीं यार मैं नहीं जा रहा, छोड़ने दे मुझे। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, आप बात मानिए मेरी अच्छा चलें ठीक है। और ध्यान से वोट डालिएगा और सही पार्टी का इंतखाब कीजिएगा। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अबे यार अच्छा खासा सीन बना हुआ था, अम्मी ने इलेक्शन के चक्कर में ख़राब करवा दिया। अब जाके वोट डालना पड़ेगा।
Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing, and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has. हर जगह मना किया है सिगरेट के डब्बे पे लिखा तो बड़ी इंडस्ट्री आप drugs Hello. At LinkedIn, Cisco, wonderful. Has been great. Confidence, communication. भी यहाँ पे हम Miss Wali, whoever communication. Since then, wherever I go, I carry proudly to be back within the next meeting. And thank you. DG Rangers and Major General University की वाइस चांसलर
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं GU विद रोहिल इंतखाब। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरत है उस टॉपिक पर बात करने की। सबकी घरों में ये इश्यूज उठते हैं और हम सोसाइटी के बिहेवियर्स भी चेंज होते हुए देख रहे हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्स गई है, मैनेज कैसे करना है। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स, किस तरह से और किस लिए हमने बच्चों का ब्रॉटअप करना है। और इसीलिए हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है इरम ज़िया को। इरम ज़िया एकेडमिक से भी वाबस्ता हैं, गेस्ट भी हैं, लेक्चरार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और बहुत साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। माशाल्लाह बहुत कुछ इन्होंने काम किया है। इरम, आपको वेलकम करेंगे। मेरे दिमाग में आपकी जो डेजिग्नेशंस है और जो आपके प्रोफेशंस हैं वो कुछ आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पहले, फिर हम टॉपिक पर बात करते हैं। शुक्रिया रोहेल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इरम ज़िया, इस्लामिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावा जैसे रोहेल ने आपको कहा, आई एम ऑल्सो रिलेटेड विद एजुकेशन। आई एम अ लेक्चरर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एज अ विजिटिंग फैकल्टी। आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश भी करती हूँ। और आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर of Karachi and Pakistan. I don't remember कि मैंने कराची का कोई भी competition अल्हम्दुलिल्लाह हारा होगा when I debate. So that was a big blessing of Allah. So thank you very much Rahel for inviting me because today's topic is very much close to my heart. तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी आज गुफ्तगू इंशाल्लाह होने वाली है। सो इरम, हम देखते हैं कि जिस तरीके से अब हमारा ये माहौल हो गया है, हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन है। तो अब वो भी बच्चों के हाथ में मुस्तकिल हम गैजेट्स देखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, टैबलेट्स देखते हैं, स्मार्टफोन्स देखते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते कि पेरेंट्स ने दोबारा क्रॉस चेक किया कि बच्चा मोबाइल पर, गैजेट जो उसके हाथ में, लैपटॉप, आईपैड जो उसके हाथ में, वो उस पर देख क्या रहा है या वो कम्युनिकेट क्या कर रहा है, आया वो वही कर रहा है जो ऑनलाइन क्लास में टीचर ने उसको असाइनमेंट करने का कहा था और उसने ये चीज़ बाद ही अपने पेरेंट्स को, जी हम असाइनमेंट ही कर रहे हैं। रोहेल देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक घर बनाने की है। अगर बाप ये एक्सक्यूज़ दे देता है कि मैं पूरे दिन घर के बाहर होता हूँ और वो बेशक बहुत कमा रहा है, अपने बच्चों बीवी के लिए कमा रहा है, एंड ही इज नॉट टॉकिंग एंड गिविंग टाइम फैमिली मेंबर, तो वो सिर्फ एक हाउस होता है, होम नहीं होता, वो घर नहीं होता। इसी तरह अगर माँ चाहे वो वर्किंग लेडी है या नॉन वर्किंग लेडी है, इफ शी इज ऑल्सो नॉट टॉकिंग टू हर किड्स एंड नॉट गिविंग टाइम टू हर किड्स, तो वो फिर घर नहीं होता। आप उसे एक घर नहीं कर सकते, बिकॉज एक घर बनाने के लिए यू हैव टू मेक अ फैमिली, एंड फॉर मेकिंग अ फैमिली यू हैव टू मेक अ कम्युनिकेशन, एंड फॉर दिस communication you must have some time, some quality time जो आप अपने बच्चे को देंगे। अब जैसे रोहेल ने ये गैजेट्स की बात की है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसी इफरीत है जो हमारे घरों को, मैं कहती हूँ हमारे बच्चे किडनैप हो गए और हमें पता भी नहीं चला, और किडनैप होके वो इन छोटे छोटे गैजेट्स में बंद हो चुके हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि बड़े बेबी किडनैप हो गए हैं, हमारे हाथों में भी 24 घंटे मोबाइल होता है। अब इस स्मार्टफोन की वजह से हम स्मार्ट नहीं हुए हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, क्योंकि आप देखें कि टच स्क्रीन को इस्तेमाल करते करते बच्चे भी समझने लगे कि
इतनी ही इजी है कि एक टच से जिंदगी यूं बदल जाएगी और यूं बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्योरली पेरेंट्स की है कि आप अपने बच्चे को सही और गलत बताएं। टेक्नोलॉजी से दूर हम नहीं रह सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना रोहेल मैं समझती हूँ इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक 2 साल बच्चे के हाथ में भी ये स्मार्ट मोबाइल है और वो अपना कोई आपने उसे कार्टून लगा के दिया और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा उससे बोर हो गया, तो जितनी भी साइड में खुल जाती है वो किसी को भी क्लिक कर कुछ भी देखने लगता है। फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत हमारे जानने वालों में ये चीजें हुई हैं कि 6, 7, 5 years ओल्ड के जिन्हें भी लिखना नहीं आता, लेकिन स्मार्टफोन्स में आपको पता है कि आप आवाज के जरिए माइक होता है, तो इफ दे नो एनी वर्ड which is not good for them, which is not appropriate for their age, लेकिन कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, पता चल गया, क्योंकि आजकल तो everything is open for the kids too, तो वो बोल के वो चीज। अच्छा, पेरेंट्स आर थिंकिंग कि माय सन और माय डॉटर इज वाचिंग अ कार्टून और शी इज डूइंग हर लाइक थिंग। मेरा एक मानना है, मे भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे इख्तिलाफ रखें, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे की प्राइवेसी नहीं होती। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आपको चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, आपको से अपना क्वालिटी टाइम देना है। तो अपने अपने घरों एक टाइम बना लें कि शाम को 6 से 8 बजे तक वाईफाई का पेरेंट्स यूज करेंगे ना बच्चे यूज करेंगे। उस वक्त आप बैठेंगे, एक दूसरे से पूरे दिन भर की बातें, एक दूसरे को खाएंगे, उनको हिसाब लाएंगे कि तुम हमारे लिए कितने जरूरी हो और हम तुम्हारे लिए कितने जरूरी किया है कि आपको अपने बच्चों के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएगी। आप वाईफाई बंद भी कर दें, आप बच्चों को फिर छोड़ें ना, उनको देखें कि वो कर क्या। और एक और अच्छा जो कि कोई नहीं होती, मेरा सवाल आपसे फिर ये है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो पेरेंट्स हम देख भी रहे होंगे उनको सजेशन क्या रिकमेंड करेंगे। आप भी वर्किंग में जो पेरेंट्स करने जा रहे हैं, औरतें भी कमा रही कि फिर वो उनको लुक आफ्टर कौन कर रहा है। अगर उन्होंने कोई बंदा रखा हुआ है, कोई असिस्टेंट रखी है, बच्चों को छोड़ रहे हैं, उसके बाद वो बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगी, क्या रिकमेंड करेंगी जो वर्किंग मैन है, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो कैसे मैनेज करें? रोहेल, मेट्स बोलने की तो मैं कभी से भी रही नहीं बच्चों की। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के बावजूद मैं ये बात ओपनली कहूँगी कि कुछ खवातीन कि जो अपने बच्चों को की बच्चा क्या है आपकी सबसे बड़ी गलत है। आप अपने बच्चे पे अपने पर्स में कोई नहीं छोड़ेंगी, करोड़ों जो कीमती बच्चा है वो आप एक मेड के पास छोड़ देती हैं, उसकी दादी, उसकी फूफी या खाला के पास छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं इन लॉज की बात करूँ तो आप नहीं छोड़ेंगी। उन्हीं बेटा आपकी जिंदगी का मालिक है, आपके बच्चों का बाप है, और उन्हीं से आप दूर करती हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो अपने फैमिली टाइज अच्छे कीजिए, अपने बच्चों को ननियाल और ददियाल में डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, बताइए कि दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। और घर में दादा दादी हो, फुफियाँ हो, चचा हो, ताया हो, ये वो लोग होते हैं कि अगर आप घर के बाहर भी हैं तो दे आर लाइक दे आप अपनी ज्वाइन फैमिली सिस्टम इस वक्त में उनके साथ बैठे रिलैक्स, बिकॉज माई किड्स आर इन द हाउस इन वेरी सेफ हैंड्स। उसकी फुफियाँ वहाँ पे हैं, उसकी चाचियाँ वहाँ पे हैं, उसके सारे घर वाले वहाँ पे हैं। तो मुझे टेंशन है कि मेड मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। तो पहले इस मेड अगर देखिए कोई केसेस हैं तो उसमें प्लीज अपनी फैमिली कि आपका बच्चा है कि वो आपको करेगा इन फ्यूचर, वो आपको बिल्कुल सही। अच्छा एरम, आपकी यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा, जो आपस के खिलाफात होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं,
होते हैं उस पर फोकस करेंगी, क्या बात करेंगी कि आप झगड़ा फितरती अमल नहीं सकते, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। बच्चों के सामने आप कर रहे होते हैं, आपसी अगर ताल्लुक चल रहा है तो ये इस तरह की बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे हो कि जिंदगी होता है वो तो फैमिली अफेयर चाहिए जहाँ वो चीज़ों को सही समझे। कुछ पेरेंट्स का मैं आपको बताऊँ कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कि हैं हम ये खरीद नहीं सकते, दिला नहीं सकते, आप मत कहें। वो बच्चे से आप एक एहसास कमतरी डाल रहे हैं, ग्रीडीनेस डाल रहे हैं, उसने अपना मोटिव बना लिया पैसे कमाने हैं, चाहे आप उसे किसी और तरीके से बता सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, और अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं, खासकर मैं मिडिल क्लास कि बेटा कि जो चीज आपकी वो दुनिया में सबसे अच्छी है जो आपकी है, और जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज अच्छी नहीं है। इस काबिल हो जाओ, जब वो चीज आपके पास है उस चीज को बहुत एंजॉय करो। और अपने बच्चों को, मेरे फादर ने मुझे बात सिखाई थी कि कभी किसी से जलते या हंसते, क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह की कसम पे एतराज नहीं करना चाहिए। तो ये अल्लाह की तकसीम होती है, बच्चों को एलिवेट करना सीखिए, उन्हें आगे बढ़ना सिखाइए, किसी से हेट्रेड करना मत सिखाइए, किसी से जलना मत सिखाइए। आप अपने बच्चों को एक पॉजिटिव माहौल दें, और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है रूम में अपने कमरे में सेटल डाउन। बच्चों के दिमाग में बाप का एक बहुत खूबसूरत जो रूप है वो आना चाहिए कि उन्हें ये कि जो छत है दुनिया में बेहतरीन छत है, बच्चे मेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, कैसे हो जाए कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे बताओ, और उनको हेल्प कीजिए। गलतियां बच्चों से भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, की गलतियों को दूसरे लाके उसकी इज्जत नफ्स को हर्ट, और ना आपस की गलतियां बच्चों के सामने लाके उनके सामने मिडिल क्लास मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, गुस्सा निकाल के होती हैं, बेटियाँ हो गई, बेटा होता तो होता, या कहीं कोई बेटी होती, इस तरह बच्चों से कर रहे होते हैं, नहीं है फ्रॉम द गॉड। और तो मैंने में भी देखे जो इस तरह की बात रोहेल, ये माशरे का अलमिया है कि तो अल्लाह की रहमत है, नेमत का हिसाब है, का कोई हिसाब नहीं है। के घर में अगर बेटी और इस बात के बुढ़ापे में सहारे मौजूद हैं, हमने ये देखा है कि बेफिक्र हो जाते हैं और दूसरे घर में जाके ख्याल रखती है, वो उनका कर्तव्य है, जिस हद तक भी बच्ची रखती है अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि वो उतना ही बेटा है, और बेटा उन लोगों की नहीं है, मुझे औलाद दे दे तो को कॉन्फिडेंस दे, हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी। बाप सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाती तो खड़े हो जाया करते, कितनी मजहब में बेटी को दी गई, एक अनमोल चीज है, नस्लें बनाती है, नस्लें मारती है। आप वो आगे पॉजिटिविटी जो है, जब किसी की बीवी बनेगी उसके दिमाग में माँ बनेगी, जिस रिश्ते में बहुत मोहब्बत से निभाएगी, आप वो मोहब्बत भी होगी। प्रोग्राम हमारा टाइम की हम बात करें, पेरेंट्स वर्किंग है, जैसे ये बताइए कि टाइम बच्चों को किस तरह से कहते हैं, हम ऑफिस से थके आते हैं, मेड्स होते हैं, तो घुमा रहे हैं, फिर मैनेजमेंट के साथ में फिर अपनी के बच्चे आपके हैं, का मुस्तकबिल आप उन्हीं का मुस्तकबिल संभालने की कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये घर आए तो ऐसा अब एक फैमिली कंप्लीट हो गई, बच्चे भी आके बैठ जाए से बोले, और होंगे बच्चों को उतना मिलेगा, और वो आके जरूर बैठे
और उनसे पूछे क्या किया, तुम्हारी क्या मदद, इसको भी अपने काम का एक बर्डन समझते, ड्यूटी का ही हिस्सा है कि बिल्डिंग में जो कल Students of this to shine, show us the years of tomorrow. Think my heart. Good luck. Executive Director, Sales, Alumni, Greenwich. Started with the तो भी कुछ भी हूँ, ग्रीनविच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जो चीज़ में देखिए इंसान करता है इसकी टाइम लाइन और ग्रीनविच पता है। जब मैं which is not we love शुरू में फॉलो करता हूँ लाइफ के ये एंड के तो मैं
So basically, like आप वाले वहाँ पे पढ़ा दुनिया भर पे काम करता तो बात कर रहा हूँ उधर एक बंदे को मैंने दिखाया जब बन गई मैंने कहा सर ये आप देखिए हमने बनाया है ये वो तो उसने देखा ही वाज अम्यूज्ड एंड देन उसने हेडफोन्स उतारे और उसने कहा देखिए अच्छा है पर ये ऐसी चीज यहाँ पे चलती नहीं है असल में जहाँ पे जब तक वो लड़की नहीं हो और प्यार प्यार हो उसमें लव सॉन्ग्स हो ये वो चलता है यहाँ पे तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये वो और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया क्योंकि मैं मेरे ख्याल से पर इतना कॉन्फिडेंस था कि पता था कि यार ये भी वो मशीन का हिस्सा है तो वो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट क्रिएटिविटी और इनोवेशन और बिकॉज ये कुछ तो फिर मैंने बस वो वापस फिर चैनल वैनल एक दो के पास गए कुछ नहीं हुआ सेम सेम काइंड रिस्पॉन्स फिर जाके यूट्यूब पे लगा दिया और विद इन लाइक हम लगा के हम दोस्त के घर बैठे हुए थे जिस चलेंगे थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चलो चेक करता हूँ 3-4 व्यूज तो आ गए होंगे एंड इट वाज लाइक थाउजेंड्स और मैं रिफ्रेश करता और 500 विद इन लाइक सेकंड्स 500-600 बढ़ते जाते 6 एंड बिफोर आई न्यू इट विद इन लाइक 3-4 घंटे 20-30 हज़ार व्यूज हो गए थे और उस जमाने में 1 लाख व्यूज वॉज वायरल 1 लाख व्यूज होते थे 2012 में मतलब इंटरनेट कंटेंट की इतनी बड़ी मार्केट थी ना इतना कोई सीन था so it was crazy I think I did my first ever interview 4 घंटे after I released the video I remember it was Play TV I think Play TV का कोई online platform I don't know but yeah and then after that it was crazy जिसको आप बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस इट्स एक दिन आप यूर रेगुलर पर्सन एंड द नेक्स्ट डे जब रोटी लेने जाओ या दही लेने जाओ तो लोग एवरीवन नोज यू एंड it was weird because internet
पे थे तो पैसे तो नहीं बन रहे थे उस वक्त, Right. मोनेटाइजेशन भी नहीं होती थी यूट्यूब की। तो मतलब it's something that I'm currently writing on, like something, but being broke and famous, it's a funny state, uh, because आप को बड़ी बड़ी पार्टीज पे इनवाइट हो रहे हैं और ये वो और HSY के घर और whatever, एंड आपके पास गाड़ी तक नहीं है, तो रिक्शे में जाना, बसों पे जाना, और it was fun, it was And absolutely, I have massive respect for you, Ali, because आपने जो एक चीज बात की उस पे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमारे वहाँ जो कंटेंट पाकिस्तान में क्रिएट होता है वो ये सोच के नहीं होता कि यार लोगों को कुछ नया मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ फ्रेश हो, कुछ जहन उनका डिफरेंट तरफ जाए। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बना हुआ है, वही घिसी पीटी चीज रिपीट मोड पे, कान इधर से पकड़ रहे हैं, कभी इधर से पकड़ रहे हैं, कुछ नया नहीं होता। सो द रीजन आई लव योर कंटेंट एंड आई लव योर वर्क इज आप अपना कुछ सोचते हैं, यू क्रिएट इट, एंड जब नेचुरली आप कुछ अच्छा काम करोगे लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आएंगे। एंड योर वर्क इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि आप रिस्क लो, आप नया काम अच्छा काम करो, पीपल विल फॉलो इट, पीपल विल अप्रिशिएट इट। लेकिन हमारे वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पीपल आर अफ्रेड टू टेक दैट रिस्क, पीपल आर अफ्रेड टू इनोवेट। And if we look at the biggest success around the globe, they are only working on innovation and new stuff. So we'll include some comments as well. Our honorable chancellor is with us, Madam Seema Mughal, and she says, "Lovely work and should be proud of yourself. Stay blessed, Ali Gulfi." Thank you, Seema. Thank you so much. And you're right. I mean, people are scared of risking, but um, I don't get why. I mean, मुझे पता है कि मैंने 5-6 गाने किए हुए हैं और हर गाना मेरा हिट नहीं होता, एंड कोई एक्सपेरिमेंट्स फेल होते भी हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब हर बात जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो अच्छा जाएगा। इट डजंट गो लाइक दैट। बट दैट डजंट मीन कि आई स्टॉप। अगर कोई चीज़ नहीं चली तो मैं ये नहीं बोलता यार ये क्यों नहीं चली, मैंने क्या गलत किया। आई जस्ट move on to the next thing, and you can always do that. I think असल में बात ये कि हमारे गोल्स हैं कि फेमस होना है। हमें ये Yes. नहीं होता कि काम हमारे अच्छा इंडिविजुअली, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा। कंपनीज का तो ये होता है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू करनी है, जो फॉर्मूला चल रहा है चलने दो, रिस्क लेंगे, शायद चले नहीं चले, लॉस हो सकता है। बट इंडिविजुअल्स, मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, कंपनी का समझ आता है कि वो स्टेटस को चलाएं, बट जो लोग इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो क्यों नहीं इनोवेटिव स्टफ बना रहे? उन पे तो कोई बर्डन नहीं है कि कंपनी है ये वो। तो मैंने रियलाइज किया क्योंकि इंटेंशन ही यही है। किसी को आर्ट क्रिएट नहीं करनी, किसी को सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करना, कोई ये सोच के नहीं जाता। आर्ट क्रिएट करते हैं वो तीर सबसे ऊपर से चला जाता है, समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। So no, we need to create awareness, educate people before giving them a piece of art. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी आवाम को, लोगों को पहले वो शऊर पैदा करें कि आर्ट का सेंस दें। बिकॉज उनके लिए तो जी आर्ट वही है कि जी डंडा पकड़ के मूछे हैं और वो लड़की गिरद नाच रही है, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है। When we look at good stuff, I think this is something that we need to adapt, और हमारी आवाम के अंदर भी we need to create that sense, and it's our responsibility to do so. हाँ, बट एट द सेम टाइम डेविल्स एडवोकेट इज आर्ट को समझने के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए, यू नो, लाइक मंटो भी आर्टिस्ट थे, हबीब जालिब भी आर्टिस्ट थे, और वो लोग नॉर्मल ज़बान में, अवामी ज़बान में अपनी शायरी लिखते थे, अपने अफसाने लिखते थे, and people would understand it, right? So it doesn't need to be in a big museum in Europe to be called art. Art can be Banksy. Art can be on the streets. Art, that's so. It's just that we haven't appreciated the art. हम अभी तक हम कोक स्टूडियो बनाते हैं जो दुनिया भर का सबसे बेस्ट कोक स्टूडियो है। मतलब कोक पूरी दुनिया में केस स्टडीज पढ़ी जाती हैं कि कोक स्टूडियो स्टार्ट ब्राज़ील में हुआ और उनकी इन्वेंशन थी, बट पाकिस्तान में सबसे बेहतर कोक स्टूडियो गया है दुनिया में। मतलब दुनिया, it's our music has traveled the world because of it. लोगों के करियर बन गए हैं
People who you never knew, Science Zahoor, whatever, are doing world tours now. So it's amazing. But at the same time हम वही सोसाइटी हैं जहाँ से ये निकला है. But at the same time हम वही सोसाइटी हैं जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग call music haram or arts haram and time waste. हम खुद फिल्में देखेंगे, मैं भी शायद को स्क्रीन पे देखेंगे, हम तालियां बजाएंगे, बोलेंगे फिट, हम उसको फॉलो भी करेंगे. बट जब हमारे घर की बेटी बोलेगी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो हम बोलेंगे ये गंदा प्रोफेशन है, नीच, यू नो, व्हाटएवर, कंजर खाना है. आई एम सॉरी, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ सोसाइटी. हमारी हिपोक्रेसी है. और जब तक हम इस हिपोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखिए, माई बिलीव इज हर चीज की इंटेंशन आप देखें. अगर एक मैं चीज गाना बना रहा हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि सब चोरी करें, डाका मारें, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आई एम यूजिंग म्यूजिक टू स्प्रेड इविल और लॉलेसनेस. बट अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप करप्शन नहीं करें, और मैं गाने से बोल रहा हूँ, सो यू शुड अंडरस्टैंड द मैसेज. राइट. और अली, एक चीज आपकी इसमें जो बड़े जितने आपने गाने बनाए उसमें द बेस्ट पार्ट इज कि आप सोशल इश्यूज पे और वो सारी हार्श रियलिटीज जो सबकी आंखों के सामने है, और उस पे लोग बात नहीं करते, आपस में गॉसिप करेंगे, यार ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, एंड देन यू कम अप विद दिस योर ह्यूमरस पीस ऑफ आर्ट जिसमें आपकी वीडियोस भी बड़ी जबरदस्त होती हैं, उसके लिरिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, एंड आप सोशल इश्यू को बड़े मजे से लोगों को हाईलाइट कर लेते हैं. और जो लोग people are scared to talk about it openly, आप openly उसका एक मजाक उड़ा के लोगों में awareness spread करते हैं. So that absolutely is totally brilliant, and I believe that we need more people like you who create stuff like that. I really love your work. और साथ साथ आपके म्यूजिक की बात कर रहे हैं, वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो आपकी 2 वीडियोस डायरेक्ट की हैं फराज इकबाल ने, जो कि ज़ैपिस में भी आपके साथ होते थे. एंड आज इत्तेफाक से फराज इकबाल की बर्थडे भी है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू is we're going to include him in the program and we're going to wish him a happy birthday. So happy birthday sir. कैसे हैं आप? Hi. Hello Ali. Hello Umar. Thank you so much. पहले सर क्वारंटाइन की बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो. I think the best thing about it is spending time with the family and that's it. कुछ कर नहीं सकते. मैं फराज इकबाल साहब हमारे ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, ग्रीनिच फैमिली का पार्ट हैं, और इनकी खिदमात ग्रीनिच के लिए बेहतरीन है. मीडिया डिपार्टमेंट की क्रिएशंस की बात हो, वीडियो पे डीओपी की बात हो, बच्चों को पढ़ाने की बात हो, इन्होंने बेतहाशा स्टूडेंट्स को इस काबिल किया जो इस वक्त इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं. सो हमारे भी उस्ताद हैं. So hats off to you sir for the brilliant work you have been doing overall. Thank you, Umar. Thank you. Definitely. He's not just a great teacher, he's a great friend. And मैंने जैसे आप पहले हम बात कर रहे थे तो मैं बताया कि I've just been blessed with great friends जो ना मुझे बहुत सपोर्ट किया. आज मैं जो भी हूँ it's because of my friends mainly. मेरा कोई they're not my friends, they're my family. And Faraz especially has always been there, and he's an honest हार्ड वर्किंग पर्सन. एंड जब भी मैं कोई भी हमने काम साथ किया है, मैंने उसको देखा है कि he doesn't just work as a DP, he works as a team member. He owns the show, he owns the project, he does everything, he gets involved. And मैंने work ethic फराज से सीखा है. Such an amazing person to work with. So yeah, he's मैंने अली को नहीं बोला था सब कुछ बोलने के लिए. I swear to God. चेक मिल जाएगा. चेक मिल जाएगा. हाँ डन है वो हो जाएगा. आपकी ये कौन सी फ्लाइट की तैयारी है इस वक्त? मतलब कहाँ की फ्लाइट है यार? Everyone has been making fun of these. ये एक्चुअली मैंने ग्रेनेड से बोरो किया था बिकॉज मेरे पास है नहीं वो सेलफोन वाले जो ईयरफोन्स होते हैं. I don't have those. So चले सर, आप पहले बता दें, आप मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट में आपको ईयरफोन दे देता. आपका अभी रिसेंट लास्ट वीडियो आपने फराज इकबाल के साथ की, दैट वाज कर ले जो करना है. ऑफ कोर्स इट वेंट वायरल, बड़ा मजेदार था, और उसकी वीडियो वाज वेरी फन. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, यू शॉट दैट वीडियो इन लियारी. सो आप लोगों का एक स्पेशल बॉन्ड था. क्या एक्सपीरियंस था, क्या बिहाइंड द सीन स्टोरीज थे,
प्लीज शेयर us with us. Ali, you as well, and sir आप भी बताइएगा कि कैसा फिर रहा. So, Ali, how was it? सो बेसिकली क्या हुआ कि मेरा एक पॉप स्टार के साथ मसला हो गया था. uh, और मैंने एक गाना बनाया और मैंने सोचा कि मैं इसको शूट करें और बेसिकली हमारा नैरेटिव था कि एक 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 पावरफुल बंदा जो अप्रेस कर रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को. तो हमने सोचा कि हमें वी नीड टू मेक द वीडियो इन अ सेंस के हम इट शुड बी ऑफ द पीपल. हमें कोई वीडियो ये नहीं बनानी कि बड़ा सेट हो, बहुत सारे पैसे. हमें पैसा नहीं दिखाना, हमें पर्सनैलिटी दिखानी, हमें आवाम दिखानी, हमें लव दिखाना है. एंड लियारी इज़ वन ऑफ द प्लेसेस इन पाकिस्तान एंड आई थिंक जो बहुत ही लिबरल, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही लविंग आर्ट्स. उनकी पानी की टैंकियों से लेके उनके लोग तक देयर इज आर्ट एवरीवेयर. बहुत लविंग प्लेस एंड आई न्यू सम पीपल देयर. सो मैं 2-3 बार जा भी चुका था. एंड मेरा ये परसेप्शन है कि हमने है ना लियारी को एक वक्त था जो बुरा वक्त था, बट वो एक वक्त तो पाकिस्तान कराची के लिए भी बुरा वक्त गुजरा है. पर हम लियारी उस लेबल से निकला नहीं है क्योंकि किसी ने कोई एफर्ट नहीं की. वो अभी तक लोग समझते हैं कि लियारी वही लियारी है गैंग वॉर वाला, वो नहीं है. तो हमने फिर ये बात की, फराज से मैंने बात की और फराज अग्रीड एंड देन वी शॉट देयर. एंड मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये था कि आप कभी चले जाएं कोरंगी या चले जाएं गोलीमार या चले जाएं आप एनीवेयर और आप एक्ट्रेसेस को बोलें या डांसर्स को बोलें फीमेल कि आप गली में खड़े होकर डांस कर लें और विद इन 15-20 मिनट शायद कोई आ जाएगा, खादिम बॉयज या कोई भी आ जाएगा और बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से निकलो. पर लियारी में हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हम कहीं भी वीडियो में जा मतलब गली में जाके हम बोले थे हम यहाँ पे शूट कर लेते हैं. हम वहाँ पे शूट कर रहे थे तो लोग वुड कम एंड जॉइन अस, नॉट जस्ट वॉच. ये नहीं कि बस खड़े देख रहे हैं शूट खराब कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते थे. और हम सो वी डिडंट फील लाइक वी हैड टू क्राउड कंट्रोल. वी फेल्ट लाइक हम एक जगह गए और वी हैड फन. एक दिन पूरा हमने शूट किया सुबह से लेके शाम तक एंड it was amazing and yeah, that's my experience now for us. सर आपसे मैं बिल्कुल पूछूंगा, ये जैसे अली ने कहा कि एक दिन के अंदर आपने वो शूट किया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. पूरी म्यूजिक वीडियो डे लाइट जारी होती है, शॉट्स बनाने होते हैं, वो सारे परफेक्ट शॉट लेना लाइटनिंग के ज़हन में रखते हुए. इट्स अ टफ टास्क. बिफोर आई कम टू दैट मैं कुछ अपना लियारी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. आई डू रेडियो प्रोग्राम्स, मेरी एक ह्यूज लिसनरशिप लियारी की तरफ से. एंड अली राइटली सेड कि एक हमने पर्सपेक्टिव गलत बनाया हुआ है. लियारी से हमें बेहतरीन अभी वहाँ के चाइल्ड रैपर्स उभर के आ रहे हैं, बेहतरीन टैलेंट, बेहतरीन पीस ऑफ आर्ट लियारी की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है. हमने पास में हमारे सिर्फ हिस्ट्री के अंदर एक इंडिविजुअल मेडल है ओलंपिक्स के अंदर, वो भी शाह हुसैन शाह जो हैं वो लियारी से ही थे. ही वन द ब्रॉन्ज इन सियोल. अपार्ट फ्रॉम दैट बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स, लियारी हैज प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ टैलेंट. तो वाकई लियारी का एक बड़ा खराब हमारा पर्सपेक्टिव है. एंड थैंक्स टू यू अली एंड सरफराज कि आपने वहां काम किया और एक पॉजिटिव इमेज लियारी का भी दुनिया को दिखाया थ्रू योर प्लेटफॉर्म. कमिंग बैक टू द वीडियो, हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू शूट इट विद इन अ डे एंड हाउ वर यू एबल टू कंप्लीट इट इन अ डे? मतलब बड़ा चैलेंज था ये. बिल्कुल उमर. अच्छा, उससे पहले ये था कि आई थिंक उस वक्त जो है ना ग्रेनिच में कॉन्वोकेशन की तैयारियां चल रही थी एंड यू नो इट वाज क्रेजी. और उससे पहले आई वाज शूटिंग कमर्शियल्स एंड सम स्टफ फॉर टीवी. सो आई आल्सो नीडेड अ ब्रेक. सबसे जो अच्छा एक्सपेरिमेंटल जो मीडियम होता है ना वो होता है म्यूजिक वीडियो. In that you can do whatever you want. You can really express and so Ali can do whatever he wants, and to have Ali as the main guy, as the main lead, it's always easy because he is an entertainer और बहुत natural होता है वो. तो वो मुझे जब मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ ना तो मुझे नहीं पता, आई एम श्योर अली को भी नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है. इतना अच्छा इम्प्रोवाइज करता है वो. Right. So I just needed that video. I just needed that break for myself,
एंड थैंक यू अली। उसने जैसे अली ने मुझे गाना सुनाया था ना, तो आई वाज लाइक आई एम इन ब्रो, मैंने ये करना है और हम करते हैं साथ। चैलेंज ये था कि मैंने, अली ने जो है रेकी की हुई थी उस जगह की, वो छत की और गलियों की, मैंने नहीं देखी हुई थी। तो मैंने Right. तो उसी वक्त जाके देखी, शूट के दिन जाके देखी मैंने। बट अगेन जैसे अली ने कहा, आप जिस वक्त जिस तरफ भी कैमरा पॉइंट करें और जितने भी लोग हैं, देर इन द फ्रेम एंड दे आर सो ट्रेन्ड माशाल्लाह कि उनको पता है कि एक बार बोलो ना कैमरा में नहीं देखना, दे अंडरस्टैंड। इन फैक्ट दे Yeah. विल प्ले द पार्ट, दे विल प्ले द पार्ट। उनको जो भी बोलने, पीछे खड़े हो जाओ या आगे आगे खड़े हो जाओ, इस तरफ से चलते हुए आ जाओ, दे विल डू दैट हैप्पीली। वो दे आर नॉट शाय, और वो एंगेज होते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं, और बड़ा मजेदार था। इनफैक्ट ग्रेनिच के भी हमारे स्टूडेंट्स थे उस वीडियो में, उन्होंने हेल्प की थी काफ़ी, और बड़ा मज़ा आया था। बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज डे लाइट जा रही थी, एंड अगेन मुझे हमेशा ये होता है कि यार फुटेज कम ना पड़ जाए, ये कम ना हो जाए, सो आई ऑलवेज ट्राई टू शूट मोर, ट्राई टू गेट मोर एंगल्स एंड स्टफ। तो बड़ा मज़ेदार था, चैलेंजिंग था, लेकिन इट वाज रियली 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 फन। Yes, absolutely. और as a viewer we enjoyed it a lot. और of course वही है ना कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिवनेस की। आपस में जो है वो एक जवाब था, लेकिन वो जवाब हम सारी आवाम ने इतना एंजॉय किया कि it became into an entertainment. So hats off to you, Ali, for creating such content. कि I really I'm really very excited कि आप जो कुछ अभी लिख रहे हैं, I'll be looking forward to it because naturally आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग होगा. So what can people expect from the work they're about to see from you? Similar to my previous works, दो चीजें लिख रहा हूँ। एक थोड़ी could be controversial, and one is not. It's just funny, positive. So yeah, I expect to challenge myself as well. Try to experiment. एक collaboration है, एक अपना solo project है. So I'm trying to do the best I can and try to. मेरी मेरी मेरा कोई formula नहीं है. मेरा कोई. I just feel like things that upset me about society. Right. That is my formula, and I try to take it out in a productive way. Yeah. And then again, I'm blessed with good team that execute it. ठीक है, मेरी vision होती है, अगर मेरी lyrics होते हैं, गाना होता है, but music, production, and it takes the whole team to do what I do, and I'm just blessed. I'm lucky to be doing what I love. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओ तुम्हें बुरा नहीं लगता कि कभी ये हो जाता है या तुम्हारे बारे में कोई ये लिखता है, और मैं कहता हूँ नहीं, that's just such a small price to pay for doing what you love. मैं लोगों से रोज मिलता हूँ जो अपने बॉस को गालियाँ दे रहे होते हैं, और जो अपनी जॉब को गालियाँ दे रहे होते हैं, and I am not one of them, and that's a blessing. So Indeed. yeah. Yeah, इसमें अली एक और चीज ये कि what comes from the heart always touches the heart, and whatever you do, whatever work you do, as you said, you love what you do, and you follow your passion, you follow your heart. तो naturally वो फिर जाके लोगों को हिट भी वैसे करता है। And मैं यही कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को, एक क्रिएटिव बंदे को हमेशा दिल से ही काम करना चाहिए ना। ये सारी चीजें तो हैं, ऑफ कोर्स जरूरी भी हैं, you look at the financial perspective and the gains and all, मुझे but एक और स्टोरी याद आई है, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ उमर। वो है, हम फराज और मैंने एक और वीडियो की थी, वीआईपी गाना हमने किया था साथ। सो वीआईपी एक गाना था जो एक करप्ट पॉलिटिशियन के बारे में था, जो वीआईपी है, उसके पुलिस मोबाइल होती है आगे पीछे, और अमीर है, बड़े घर में रहता है, 3-4 बीवी हैं। सो हमें घर चाहिए था कोई, तो हमने हमने एक दोस्त थी, उससे पूछा, उसने किसी को जानती थी, तो हमने एक हिलाल पे घर ढूंढा, बड़ा घर, लैविश घर में, अंदर लिफ्ट लगी हुई है, स्विमिंग पूल, द वर्क। सो वी लाइक दिस इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है घर। सो हमने शूट करने शुरू हो गया। हम शूट कर रहे हैं, फराज, हमने सब किया, बहुत अच्छी वीडियो निकली, एडिटिंग हुई। आई थिंक मैं गांव में था जब वो एडिट हो गई थी या कुछ, और मुझे है ना अचानक से है ना फोन आता है जिनका घर था, कि ये आप है ना पहले रिलीज करने से पहले हमें वीडियो भेजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कर्टिसी, उन्होंने हमें कोई पैसे नहीं लिए दिए,
बिकॉज दे वर दोस्त के दोस्त थे, तो हमने कहा कि हम दिखा देंगे उनको, मसला नहीं है। सो लाइक जिस दिन अपलोड करना था उसी सुबह को हमने उनको भेज दी वीडियो। तो अचानक से मुझे फ़ोन आता है कि ये आप नहीं लगा सकते, और मैंने कहा क्या हो गया? एंड देयर लाइक नहीं, ये तो कोई पॉलिटिकल गाना है, और हमने कहा हाँ, तो मतलब मैं आप हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, गाना बज रहा था, आप भी उधर थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गाना है। आप उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें नहीं पता था, और ये सारी हमारी जो घर की फुटेज है ना वो हटा दें। एंड दैट वाज लाइक 60% ऑफ हमारी शूट। और हमने कहा ये कैसे हो सकता है? एंड हमारे पास अच्छी बात है कि ईमेल पे मेरे पास परमिशन थी, सो उनके घर वालों ने, और हमारे पास पिक्चर्स थी, मैंने अपने लॉयर से बात की, लॉयर ने बोला कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपके पास ईमेल पे परमिशन है और ये वो। और हमने रिलीज कर लिया, उस बंदे ने मुझे बहुत हरास किया और बहुत तड़ियाँ दी कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और फिर 3-4 महीने बाद पता चला कि वो जो घर था, वो घर था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट का, जिनका नाम अली रज़ा है। और उनके खिलाफ 2-3 महीने बाद करप्शन केसेस आ गए। सो आयरनी ये है कि हम जहाँ शूट कर रहे थे, हम उनके बारे में ही गाना कर रहे थे, हमें पता नहीं था। इट वाज अ बड़ी मजेदार शूट थी वो भी, और उसपे भी रिस्पांस बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी रिस्पांस था उसके भी। बिल्कुल नहीं, दैट्स द ग्रेट पार्ट। यस अली। नहीं, बस यही था कि इट्स फनी, दीज थिंग्स हैपन, एंड ये कभी आपको कोई आतिफ असलम की शूट पे नहीं होगा। सो दैट्स द फन थिंग के तो दीज आर फन एक्सपीरियंसेस वी हैव। एंड वही हमारी पॉलिसी फराज है, हम सब जब भी काम करते हैं पॉलिसी ये होती है कि हमें मजा आना चाहिए शूट करते वक्त। अगर हमें शूट करते वक्त हम हंस रहे हैं तो फिर जो लोग देखेंगे वो भी हंसेंगे। सो so whenever we're working, schedule, everything, budget, these things, serious things are there, but we have fun with it, and that's the important thing to do. Indeed. So definitely, and Ali, I wish you all the best for everything you're planning to do. I'm very hopeful, inshallah. In fact, I know so it will be a huge success. And before we leave, you have been to Greenwich as well. आप खुद visit कर चुके हैं as speaker, as guest. You've been there. What would you like to say about Greenwich University and this initiative that we've taken? I think it's great. I think it's great for Greenwich to be thinking about the students, even in such times, because education and formal education and structural education is important. The classes are important, but it's also important to know कि दुनिया में कैसे चल रहा है, and especially in such times to be staying at home. बहुत बार होता है कि I don't know what to watch. I'm sick of watching the same old Netflix shows, and interaction is very important. And these live sessions make us feel like, okay, we're all in this together, and we also get a good conversation out of it. So, yeah, keep going, keep talking, keep you know. It's you can learn from a book, and you can also learn from a person. And some of the best learning I've done is from people while traveling, while working. So yeah, keep talking, keep learning, and stay positive. Absolutely. और जाने से पहले कुछ हमें काफी बेतहाशा कमेंट्स आ रहे हैं. People are so happy to see you, Ali. And साथ ही साथ फराज इकबाल की आज बर्थडे है, so we've got many wishes as well. Maria Sheikh wishes you happy birthday. We have with us Tariq Iqbal. He wishes you happy birthday. Thank you. And one of your students, Siddharth. Siddharth also wishes you happy birthday right over here. Siddhant is, by the way, a very a huge fan of Ali. I know this for a fact. Oh, thank you, Siddharth. Shout out to Siddharth के लिए. ये भी है मडेरे का बेटा. Thank you, Siddharth. After we are done reading the comments, Umar, just have a quick question for Ali. हाँ, definitely. कुछ wishes ही आपकी, वो मैं बस कर लेता हूँ. नाज अलीम है, हमारे साथ इमाद करीम है. He wishes you happy birthday. Hamza Ali, Abdul Hadi, and now yes, all yours. So Ali,
So I have a lot of students. You've met some of my students जो shoot पे आए थे, साथ भट्टी and Edward. बिल्कुल 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 So obviously बहुत talented बच्चे होते हैं, हर जगह ही होते हैं. तो so जब वो graduate हो रहे हैं, तो जैसे हम थे, हम graduate हुए, कोई डायरेक्शन नहीं थी, हमने प्रोडक्शन हाउस में साथ काम किया था, बिल्कुल चीज़ें बहुत स्लोली स्नेल पेस पे मूव करी थी. सो जब वंस अ स्टूडेंट ग्रेजुएट, तो ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन नहीं होती, पता नहीं होता प्रोडक्शन हाउस जाए. मैं सिर्फ फिल्म मेजर्स की बात कर रहा हूँ. प्रोडक्शन हाउस जाए या किसी कहीं और जाए, कहीं और, मतलब क्या करे कुछ नहीं पता होता. आप क्या उनको मशवरा देंगे नए फिल्म ग्रेजुएट्स को फ्रॉम द मैं हार्ट? यही मशवरा दूंगा कि शुरू में ये ख्वारियां करें. आप भले प्रोडक्शन हाउस में कुछ अर्सा काम करें और लर्न, क्योंकि हमने है ना दिमाग में परसेप्शंस भी बनाए होते हैं ना कि ये तो ऐसा ही होते हैं. अस एंड देम नहीं करें. गो एंड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस. ट्राई टू फाइंड योर स्पेस. एंड ये अगर बुरा भी एक्सपीरियंस होगा, इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो बुरा एक्सपीरियंस ज़रूरी है for you to understand really that you need to do something on your own. I think अब बहुत हर कोई बंदा यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई बंदा व्लॉग नहीं बना सकता. बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म मेकर्स हैं जो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते. they're technical people, they're directors, they're editors, and but what I'm trying to say is कि आप ये सर्किट करें जो कन्वेंशनल टीवी चैनल प्रोडक्शन, और उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी के साथ अपनी क्लास में, और ये हमारे सैबस में भी हुआ है, एज यू नो, कपल ऑफ पीपल गॉट टुगेदर, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, अपनी कंपनी खोल दी, किसी ने डिजिटल कंपनी खोल दी, किसी ने कोई ग्राफिक्स का काम शुरू कर लिया है. आई जस्ट थिंक try to get some experience and then eventually try to become an entrepreneur, because हाँ, काम को एटलीस्ट ट्राई फॉर इट. मैं मतलब ये हम सोच के डर जाते हैं यार पैसे कहाँ से आएंगे. कोई पैसे नहीं चाहिए प्रोडक्शन के लिए. आज तक मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा कोई आज तक ऑफिस नहीं है. आई राइट एंड देन आई हैव अ टीम ऑफ पीपल आई हायर पर प्रोजेक्ट, एंड इट्स एक्चुअली पॉसिबल to run your own business. Yeah, I am a legal peer, but it took me years to reach this point, right? So till that point, I experimented. I did theater, जिसमें मैं 5,000 पर शो कमाता था. फिर मैंने प्रोडक्शन, हमने साथ प्रोडक्शन हाउस पे भी काम किया. ये वो मतलब हर दो जो भी मैं जहाँ से भी लर्न कर सकता था, एक्सपीरियंस कर सकता था, आई एक्सपीरियंस. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका फिल्म स्कूल ग्रेजुएट करना इज नॉट द एंड ऑफ ख्वारी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ख्वारी. अब ख्वारी शुरू हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितने भी आप वैक्सीन हो जाए, यू स्टिल इन अ बबल एंड इट्स प्रोटेक्टेड. बट व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, देयर इज नो प्रोटेक्शन, देयर इज नो. आप जलील, आपके साथ लोग बदतमीजी करेंगे. मेरे साथ मुझे याद है, शायद फराज को पता नहीं याद है या नहीं, हमने कि एक बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने कोई फिल्म का कॉन्सेप्ट लाए थे, उनके लिए हमने फिल्म की कोई ट्रेलर टाइप बनाना था. याद है फराज? जिसमें आमना शेखी थी. हाँ, तो उसमें एक एक्टर था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मेरे सैंडविच मंगवाया, मैं उसके लिए सैंडविच लेके गया, और उसने मुझे आधा घंटा 20-25 मिनट सुनाई है कि इसमें खीरा क्यों है. मैंने जब बोला था इसमें खीरा नहीं होना चाहिए, तो खीरा क्यों है. और उस बंदे ने मेरी 20-25 मिनट बजाई थी. और मैं वो जब सुन रहा था खीरे की सुनाई, तो मैं सोच रहा था कि मैंने यार 4 साल पढ़ा है, और मैं ख्वारी करके और क्या सोचा था, और मैं कहाँ आ गया हूँ. और it was an eye opener for me. It made me realize कि अच्छा, something has to change. But what I'm trying to say is these moments are important. जब मेरे जेब में 50-100 रुपए थे ना, और कुछ नहीं था, that was one of the best times I had. It taught me a lot. It taught me a lot. So be ready, be humble, be ready for hard work, hardship. Some people struggle for 1.5-2 years. Some people struggle for 10 years. Some people, but being an artist, you have to keep on struggling all your life. क्योंकि कोई consistency नहीं है. कोई ये नहीं है कि महीने के एंड में पेचेक आएगा. कोई महीने आप बहुत अच्छा कमाते हो, कोई महीना आप कुछ नहीं कमाते हो. So you have to also be smart with your money.
सो जिस महीने आप कमा रहे हो अच्छा, क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, तो पैसे बचाओ, उड़ाओ नहीं। वो पैसों को सही तरह रेनी डेज के लिए एक फंड बना दो कि रमज़ान में बहुत सारे मीडिया के लोग काम नहीं करते अनलेस यू आमिल याकत और डूइंग रमज़ान शो। सो you're going to be staying home. So हम मुझे पता है कि रमज़ान जब आएगा तो मेरे पास काम नहीं है, तो मैं रमज़ान से पहले काम कर लेता हूँ. So just be understand that you're a running business. Even when you're not a business, you have to operate like a, so you have to be planned. You have to, it's not just, I'm sorry I'm blabbering on, but there are a lot of things that I've learned. And Yeah, this is important. This is very important. This is you really important. you're not just an artist, you are a salesman. आपको सिर्फ आर्ट या कुछ क्रिएट नहीं करना, आपको वो बेचना भी है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे बहुत टैलेंटेड है, पर उनको बस बेचना नहीं आता. वो क्या करते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ बनाते हैं और फिर वो अपलोड करते हैं और उनके नेटवर्क में 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, वो देख लेते हैं, ख़त्म. पर उसमें पोटेंशियल होता है. इट जस्ट नीड्स टू बी मार्केटेड. जब आप बैठे हैं, क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली मीडिया में द बिगेस्ट मनी इज विद ब्रांड्स. तो जब आप one of the best things I've managed somehow to achieve is कि मैं अली जफ़र से लड़ भी सकता हूँ, मैं खादिम रिजवी से भी लड़ सकता हूँ, और फिर मैं दूसरे महीने कैंडी भी बेच सकता हूँ टीवी पे. और and that's because एड जी चिली मिली का एड आपका याद आ गया. बिल्कुल, चिली मिली, फूड पैंडा, ये वो मल्टीपल, एंड दैट्स बिकॉज वन फॉर द स्टमक, वन फॉर द सोल. ये मेरा फॉर्मूला रहा है. जब मैं अपनी सोल के लिए कोई काम करता हूँ तो मैं उसमें किसी की नहीं सुनता. मैं ये नहीं सुनता कि इसमें ये नहीं बोलो, ये नहीं करो. मैं जो करना है बोलना है मैं करूँगा. बट व्हेन आई एम वर्किंग विद ब्रांड्स, देन आई कमिट. आई अंडरस्टैंड कि यार ये जो बंदा बैठा है सूट, इसका मकसद है उसको प्रॉफिट, उसको मंजन बेचना है अपना. सो लेट्स सेल योर मंजन एंड ऑल्सो मेक इट एंटरटेनिंग, ताकि अगर कोई कार फर्स्ट या कोई जिंगल हम बना रहे हैं तो लोग सुने, तो वो उनके सर में फंसे भी. ऐसे नहीं हो कि वो जस्ट शुड बी अबाउट के प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट. इट शुड बी फन, बट इट शुड ऑल्सो हैव द प्रोडक्ट एलिमेंट. सो या आई हैव लर्न कि मैं कभी कभी मेरे पास काम नहीं आता ना, मैं कॉल करता हूँ. मैं लिटरली लिप्टन के पेज पे जाऊंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड मैं लिप्टन के पेज पे मैसेज कर लूंगा कि hey, I just want, I have an idea for you, I want to pitch it, and they give me the number of some marketing guy. I call him and then he gives me the boss का number and then I set up a meeting. I just make a presentation. मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मैं वहाँ पे जाके उनको पिच करता हूँ. और आप 10 दरवाजे खटकाएंगे, एक खुलेगा. But it's important to go and knock at those 10 doors. If you sit at home thinking मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अली गुलपीर नहीं हूँ, मेरे पास नाम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कुछ नहीं होगा. You have to keep on doing it. So yeah, these are the things. That's that absolutely. That was from the heart. Thank you. Thank you so much for being so honest, so open, because I think ये एक बहुत जरूरी चीज है for the students. They have to learn. ये मेंटालिटी, माइंडसेट खत्म करना होगा कि यार हम डिग्री के बाद जाएंगे और सब हाथ खोल के हमारे लिए नौकरी और काम लेके बैठे हुए होंगे. You need to work. If anything, you'll face resistance also. कुछ लोग बोलेंगे कि अबे ये कल का बच्चा हमें बताएगा, अभी तू पढ़ के आया है. हमारे साथ बहुत हुआ है. डिग्री 4 साल पढ़ के आए हो, तुम्हें क्या करना आता है, कैमरा, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर, तो ये क्या होता है, दिल टेस्ट यू विद क्वेश्चंस, ये क्या होता है, वो क्या होता है. आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह जो है ना, मतलब उनके लिए मजाक बने आप. सो यू रेजिस्टेंस तो बिल्कुल होगी. सही कह रहा है अली, बिल्कुल सही कह रहा है. बिल्कुल होगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार ये बंदा हमारी जॉब खा लेगा. ये क्योंकि उनको पता है कि ये पढ़ा लिखा है, और फिर ईगो भी है. अगर एक बंदा है जो ड्रामे बना रहा है और उसके हेड चलने, वो प्रोड्यूसर है, ये चैनल हेड है, और भले वो स्लीजी है और वो भले इज इडियट, but he works. He works in the idiot box and he creates idiots and he's happy with it. So you have to respect it somehow. You have to find a way where you have to respect this idiot because he's done something right. He is making money. वो अपनी कंपनी को चला रहा है.
So you have to work around it. You can't be like full head on कि मैं भी फिर फड्डा है, वो नहीं हो सकता क्योंकि आपको उसी से लर्न करना है, मैनूवर करना है. Absolutely right, and that was so fruitful. Definitely, I believe कि हमारे audience ने, हमारे students ने, हमारे viewers ने बहुत कुछ सीखा होगा, especially the ones who are interested to make their career in the media industry. And thank you so much, Ali, once again for being so open, for being so honest, for being so humble. And that's the way you are. You know, we all know you. Ali always speaks his heart out, and that's the reason you always touch heart as well. So, inshallah, definitely we'll have a session sometime soon. And if there's anything that we can contribute for your work or anything, we're always there. You know, if you want students as internees or anything, you know, एक बड़ा अच्छा learning process भी हो सकता है बच्चों के लिए भी. So once again, definitely, I've worked with, like he said, Saad Bhatti and so many others, and I've always had a great experience with Greenwich students. So thanks to Faraz. So yeah. जाने से पहले हैप्पी बर्थडे कर देते हैं सर. फराज इकबाल को केक तो मिलने वाला है. This is really embarrassing now. ये थोड़ा सा ऑफ हो रहा है. मेरा इंटरनेट थोड़ा I'm still here. You अटक जाओ ना. सर आज के दिन आप पैदा हुए थे सर. यार हाँ. नहीं सकते ना. अभी How आपने. old are you now? You're going to ask me here, Ali? I'm 18, sweet 16. I'm 33. I just turned 33. Okay. Very old. Yeah. That's all. 2 साल the new 20. सही एज शुरू हो गया. So thank you so much, guys. It was a wonderful session, and it's always an honor to be around creative people. बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत एक पॉजिटिविटी की लहर आती है आप दोनों से. So God bless you both. खुश रहें, आबाद रहें. जितने आपके फ्यूचर के काम है वो बेहतरीन हो और इंशाल्लाह ऐसे ही फ्यूचर में बात भी करते रहें. So thank you so much once again. Thank you everyone. Right. So guys, that was Ali Gulpir and Faraz Iqbal. और बिल्कुल आपने सेशन सुना, देखा आपने किस तरह से आप अपना वे बना सकते हैं मीडिया में. Even if you don't have resources, even if you don't have the money, सिर्फ जहन में आइडिया होना जरूरी है. If you have the idea, if you believe in yourself, you can go all the way. Ali Gulpir एक हमारे सामने मिसाल है for the wonderful things that they have done. इंटरनेट के सेंसेशन बने. उनका जो पहला गाना था 8.6 मिलियन व्यूज, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज भी इतने टाइम बाद टॉप 10 में डेफिनेटली आता होगा. सो यू बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, सक्सेस खुद ही आएगा. हमेशा अपना जो माइंड है उसको क्लियर रखें एंड फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव, विल ऑलवेज get success. So this was all for today's session. We'll be back tomorrow. In fact, we'll be back tonight. आज रात 10 बजे हमारा एक और सेशन है with an international guest. So we'll be back at 10 p.m. Tonight for another session. Do join us. अपना feedback, comments में आप बिल्कुल दे सकते हैं. If any topic you want us to talk about, you can definitely mention that topic as well. So we'll be back tonight at 10 p.m. with another show, another guest. Until next time, stay home, stay safe. Pakistan Zindabad. Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing. And looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा. यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा.
तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Dear students of Greenwich University, this is your chance to shine. Show us you're the true leaders of tomorrow. Good luck with all your endeavours. Thinking of you with all my heart. Good luck. रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीटी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hi, I'm Professor Serge Riviere and the Director of Research and Development. I wish Greenwich University, Pakistan, the very best of luck, and I wish all those graduating on this graduation day the very best. Mentor society platform or say the society will platform to when I my first attempt to come to university and join it, and Greenwich was my obvious choice. It's basically. That I made things that I done that I'm alumni, and the fact that I'm back here supporting more students. I think that's more than what anybody else can say. Enjoy yourself, live it, learn it, and love it. You know, the education part, especially when we are going to college, is so important, because this is something that doesn't come back. As you grow older, as responsibilities increase, you don't have time for a lot of things, baby friends, relationships, meeting, just meeting people generally. And the time that you impart and the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who's at LinkedIn. I've met somebody who I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich. There's so many people, they're all over the place. And surprising for a university when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education, and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. Faisal,
was from Greenwich when Southeastern program with Greenwich for 5 years. The and to be active and in this program. Just thank you very much. के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। आप और कहेंगे हमारा उम्मीद कर दिन अच्छा नहीं भी बात नहीं, उम्मीद शाम है आने वाली अच्छा नाज़रीन हमारी और हैं और हम किसी हद तक सोल्यूशन मिल जाए हो जाए तो हमें सुकून कम हो, किसी हद तक कुछ कामयाब हो, कुछ लोग का दे ज्यादा जो है मसरूफ हो निकालना हमारा मुश्किल ही हो गया। इसी को है कि को हम बहुत चिट चैट अपने सामने एक रोजाना फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको को मिलता करेंगे का हल भी आप सकते हैं, बात भी आप पर रख सकते हैं। ये इशू है, इस पे है सबसे पहले कर लेते हैं और बहुत सारे तो आपको बातें बता आजम क्या सवाल आते हैं कुछ सेकंड इस पे थोड़ा और उसके बाद पढ़ जाए, लेकिन हमें याद रहता है कहीं हम जिंदगी में कोशिश करें। एक कॉल है जना पाकिस्तान चलेंगे कि उन्होंने ताकत और इस को अपने को दे कायदे इल्म की उसका नहीं लगा सकते। ये जो के जरिए हम और इस आपात सेंचुरी दौर में नॉलेज हम जो है इसी तरीके से हैं। आप इस तरीके कोई भी रिसर्च जब करेंगे आएंगे आप बात नहीं पेपर पर है आप को भी और आप को कुछ करने को भी या पावर चलें उठाते हैं है कि देख रहे हैं कि एक हफ्ते से वीडियो
ने उस पे मिले अमल का इल्जाम, कहा कि गलत किया करना, गरीब नौकर काम को डांटा, उसके साथ लेकिन दूसरा देखा कि भी कहा कि हुआ उन्होंने एक इसकी वजह से सकता स्टोरी की उन्होंने उन्होंने आपके हैं मारूफ मॉडल और फैशन हुसैन ने वीडियो से वाज़ेह नादिया हुसैन गफलत किसी नहीं की जा सकती और फिर गफलत नहीं बन सकती, लिहाजा वायरल सारी मुहिम हकीकत अपनी मुलाजिम यही जो आपने देखा दिया कि इनके लड़कियां ऐसी ही आती हैं और करती हैं, एक या दो के में मौजूद ना इसी जिम्मेदारी के सैलून बरक़ी हो चुके हैं कि वेव है करे या गलत का ये कारा का कहना से की में से जोड़ा और गलत हैसियत थी करे या गलत होती है इस पर आप बॉस की डपट मैंने नादिया के दौरान अपने से मुतालिक शेयर किया और बताया हाल ही की गफलत के लिए वजह मुलाजमा को के बाद का इस्तेमाल के बाद ड्रायर बगैर बाहर चाहिए डिजाइनर और ड्रायर 3 घंटे के रूम में चलता 3 घंटे उन्हें बच्चों होकर खुद बंद लेकिन वक्त था कि उन्हें से हटा से पकड़ना डाल रहे कि कबल वीडियो सोशल मीडिया है प्लाज्मा को करने और मगन रहने पर करती
रही थी। पूरी स्टोरी या बात ना सही की, आप कमेंट अपना मौक़िफ़ कि अगर नाज़ या कि उनको ऐसा तो भी दोनों बातों कि किस तरीके से आ सकती हैं। मैं अगर रखूं तो मुझे सबके ऊपर अपनी बिजली घर में जो लाइट ये चाहे कि किसी काम जरूर तो बंद कर रोशन ना रखेंगे के बाद से कि आप ओवर चार्ज हो तो मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी। तो ये तो नादिया के सामने रखा है खाने पीने की शाम का वक्त कि आप जो है सर में थे या कहीं थे, लिहाजा बहुत खूबसूरत मैंने ये प्रोग्राम और कि आप कॉफी कराची का मौसम पाकिस्तान का मौसम फ्लैट के साथ बाहर और एंजॉय जिंदगी सी है कि जिंदगी है अपने ऊपर और अपने अहले के दोस्तों के घूमिए कीजिए। आज का दिन शाम खैर बन के साथ हमारा ये देखते रहिए, तो पसंद आई शेयर कीजिए, कहना चाहते हो तो वीडियो कमेंट कर सकते। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। जो एक अपने जो है में शामिल वो छोकरा है क्या बात काम है जो है पहले था के साथ, लेकिन ये तो है कि मेरे कंप्यूटर आपको कोई मैसेज नहीं, आपको
वाइन्स लगे और मारूफ का नाम है हमारे पास कुरैशी और दूसरे दानिश नहीं इनका हम आपको अपने में शामिल करते हैं। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह माशा सब अच्छा। बताइए ये क्या शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? कराची बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम मेरे मुझे वाइन्स मीडिया पे निकला हुआ है, वाइन्स का जूस बनाते हैं, ठीक है। उस वक्त मैं के एक पेज के नाम से क्रास किया था, इस तरह के वाइन्स को हमेशा पीछे पेज बनाए उसका, फिर आ गया तो क्या था वो नहीं थी उसके अंदर ना, तो काफ़ी ऐसी। उसके बाद मेरी दादी टीवी में तो स्टेशन में किस तरह उसको बनाते थे, हम हमें गालिब फिल्म देखिए आप? फिल्म में फिल्म की उसने नहीं 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 उसको दुकान फैमिली फिल्म है। बाद में पता चला तो थी वो अलग अलग बैठ के देख, मैंने जो लगाया है सोच है आपका। तो आप कहना चाहते हैं उन्होंने जो कंट्रोवर्सी की बाद मैंने किया कि यार है सिलसिला क्या कि यार पेज है कि आज का ज्यादा जो है तो ऑन करता है साथ ना, हमने एक वीडियो बनाई आएगा वाले सीन, उस पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं अच्छा, तो हम इसको कंटिन्यू तो हमें हम और ऐसे कॉमेडी करते हैं। चलो आप जिंदगी से रिलेटेड हमारे साथ ये समझते हैं कि एक स्पेसिफिक है आदमी कराची का नाम के थोड़ा सा प्लस एक रिश्ता जिसमें पंजाब के लोग कराची को पीछे रखा जाता है, तो इस वजह से मतलब मेरी दो लिया इसका बना दे इसमें कराची की ठीक है, कराची को नेगेटिव उसमें लेते हैं, आपको पता है, लेकिन आपको किसी ने मुझे तो लेती आपके साथ आदमी आना चाहता है वो कहता है कि भाई जाएगा तो वहीं पे डाले, मतलब शरीफ आदमी ऐसी नहीं है। खैर खैर बात की बात, मकसद क्या क्या पैसे के जरिए या इसके अलावा शौक है? सर हमने आप चेंज करना चाहते हैं, जो कराची के नेगेटिव इमेज बना था पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज, फिर पाकिस्तान इमेज है तो हमें चेंज कोशिश ये करी तो मैं कराची के डिफरेंस कॉमेडी पे मजाक नहीं उड़ाया, तो हमारे पाकिस्तान उन
इस तरह के होते, इस तरह से कराची वाले कभी ये सोच होगा रिस्पॉन्स मिले, उस चीज के लिए काम नहीं, हमेशा किया गया, अभी भी नहीं किया। हेलो, हाँ, ठीक है, कौन मोबाइल खत्म के आगे आगे सब बड़ी लेकिन देश पर जरा ये खान से खान आते में जब नहीं है, आप करेंगे यार बंद में कुछ you very शुक्रिया, बहुत 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 क्या है love you. कोई मेरा पूरी बस हमारे बस कर ताल्लुक बात रिश्तेदारी क्यों लग रही है? हमारा किसी भाई के मुसलमान भाई खिलाफ मसला ये है कि घर चल रहा है, जरा मैंने पी ली थी ठंडा ठंडा, अब वो मेरे गले पे उसमें डीजल हो गया। अल्लाह अकबर, भाई कैसी बात करती, खैर सर कोई से आगे बढ़, आपसे जो है खेलते हैं, आपको तमीज तमीज में पहना मैं अंडे वाला हम बात नहीं, हम ऐसे मजे नहीं, मजे वो सामने अलाउड नहीं, अंडे वाला तो तुम क्या बोलते हो ना, वो तुम्हारी आंखें पढ़ते हैं, रैपिड फायर हमारे साथ पहले AK-40 से चलाते हैं। अल्लाह खैर, सही है भैया, ठीक है, नाम लेके आप दोनों, उसके बाद आप बोले, बोलना होगा।
दिल और दिमाग, कोई भी दिमाग। ठीक, सबसे पहले मीरा इंग्लिश आजाद वाह 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 बात की है इबरत करने से। मैं भी रैपिड फायर एक और भी आखिर पढ़ते हैं उसके तरफ बहादुर हमने स्टार ऑफ मुझे वाह क्या हेलो हेलो पहचानती पहला दिन देखती है माय लाइफ देखती है करती है उसे अपने बाथरूम में हम यार दूर आदमी है। बताओ कुछ माय लाइफ अलमाज बॉबी। Okay, I can also listen, you know. अच्छा ये जो आ रहा है दूसरा वाला डाउनलोड हो रहा है ये आएगा हम से ये करने ढक ठीक है और 1 2 बोलो 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 क़यामत तुम इतना टाइम फिर सिक्योरिटी आंसर करना दिमाग में तो थोड़ा सा ख्याल रखो ये एक अच्छा बैन कर देगा आर्टिकल 19 मसीरा 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 सर अच्छा ये क्या ब्लॉक करना है तारिशा हाँ इसको कूलर देना चाहिए वाटर कूलर कूलर का हकदार आपने बड़े बड़े को और ये खूबसूरत लोगों को ये है दानियल शेख और बहुत मजा है इनके साथ टाइम बिताने का पे ये मैं बाद में आया This is your chance. Show us Everyone, good evening. Your voice in this Anwar, and I have a brand new show for you, just like all the time. As you know, this show we talk about education and how education is reforming after the COVID. And I have one of the most amazing guests with me today. So, without any ado, I'm just gonna, introduce my guest to you, Miss Afsha Khalid.
Where to start for Ms. Afshan Khalid? If I start at the beginning, she's currently working as a general manager, education operations, Beacon House. She has an experience for 25 years in the field of education, including monitoring and evaluation (M&E), as well as research and development (R&D). To her credit, she was among the first group of school principals who were part of Cambridge Advisory Council when it started its function in 2008. Versatile and result-oriented professional who is acutely aware of political, economical, social, and technological national and international trends that impact on educational operations and school systems. Highly skilled in schools and system internal and external evaluation processes to support organizational development and improvement. She received her training as a reviewer for evaluating schools from Education Review Office (ERO) Ministry of Education, New Zealand. Collaborative with who has helped promote and develop policies and structures for school improvement as well as teachers and school heads professional development programs. She has actually got over approximately 200 schools in her part. Mama was actually trained by as a facilitator by Cheryl Watkins, founder and director of SAI, Student Assistant Training International, Phoenix, Arizona. A comprehensive primary prevention and early interventions program that helps in students' development, such as systematic efforts to educate, identify, assess, refer, and support students with substance abuse problems and other high-risk behaviors which are interfering with the students' educational and life development. As a General Secretary of PJCA, Japan Cultural Association, SIND, she organized, amongst many other events, the first international symposium on photojournalism held in Pakistan. She received a recognition award by PAPP, Association of Press Photographers, for her contribution. I welcome to you all, Ma'am Charlotte. Ma'am, how are you? I'm good, thank you. Assalamu alaikum, everybody. First of all, thank you so much. It's a big honor having you with me and, interviewing you and asking you questions. It was a huge, what should I say, leap in my faith, I would say, कि ये किस तरह हुआ, क्या हुआ. But ma'am, starting off, first of all, you tell me, how is your experience now as an educationist who is, evaluating and researching in every single part? How are things changing in education? Well, first of all, thank you so much for having me on your forum. It's a pleasure to be here. Thank you. And coming to your question about how education is changing, well, if you had asked me this question 4 months ago or 6 months ago, my answer may have been very different. But with the current situation, I think a lot of changing. Our lives have totally changed. So my response would be in light of that. So there has been, I think, a gigantic step towards unlearning and learning many things. The basic premise of the question, one lesson when we all started with the lockdown with this COVID-19 was that let's do this a bit, and then after COVID, we'll go back to normal. But as we stand today, 4.5 months into lockdown, I don't think it's going to change. The life has already changed. It is not like the world before, and then there's this bit of this pandemic happening, and then we'll go back to what our lives were like. No, I don't think it's going to happen. The transformation is what started, and things are going to change. Our lives have changed, and they have changed forever. So in education also, technology has played a huge role in the last 4-5 months, where everybody's gone, scrambling to learn more about technology, about how to adopt it, how to go for online learning and online teaching. So it's huge and learning. I mean, it's so true. It's like an ongoing process. We're still learning. We're still adapting to different things, different technological, processes that are coming along, trying to make sure that, we try to get out of it. So the number one question is this COVID effect theory, or has it permanently altered our lives? What do you say to that? Well, it's just like COVID has forever changed the face of education and the student experiences with it. It's we are not going to go back to normal ever. This is going to be part of our normal.
in the coming days, in the coming years. So lives have all changed. So I think the pertinent thing is to accept the change and to say that we are transforming, and how well and how fast can we transform and adapt ourselves to this situation is what will make us survive. I'm just reminded of, all around us, we say that it's a disease, and we keep saying that those with existing conditions are most at risk. So exactly the same way, it's true for institutions, for education, for countries, for policies. Those with existing conditions are most at risk. So crisis has just not caused new problems, it has made us realize that we need to change, we need to transform, adapt to the new situation. So true, Miss. I totally agree to that. Miss, taking your point forward, I always believe that teacher and a school is a very pivot role in any student's life. They actually form and develop new coming generation. So will this post-pandemic world really be different? Will the new world order be the better food, will the better food security, healthcare, and nutrition? What do you say about that? That's a very good question, and a tough one also, at least it is. We don't have a lot of answers for teachers, for students, school life, college life, university life. You are representing Greenwich University, so it's not going to be the same. It's just that institutions will survive, but they will not look like they do now. Technology is not going to look like what it does now. It's also going to transform. So a lesson learned, again, is that this is not a moment of dealing with crisis with the assumption that it is going to go, but this is a moment of dealing with transformation. And the faster we accept that, and if you make, when it comes to education, when it comes to the triangle of home, school, and student, if you break that into, it's a lot of unlearning and a lot of learning for everybody, for teachers, institutions, for students, for parents also. I mean, everyone is clueless about how to deal with the situation, the life that is everybody's in a lockdown, teaching and learning on online. So how to adapt to it, how to figure it out, and how to stay positive during this also, because it's not just things changing, it is with a lot of loss and grief also. So if you think of little ones, because I represent a school system, so when I talk about education, I talk about 3-year-old to an 18-year-old. So for them to accept the change, to adapt to the change, to understand the change also, for ones, for young adults, it's a huge challenge. And then for parents to also handle this change, to figure out the change. And that again is a lot of learning, and we don't have all answers. We really don't. We really don't. That's so true, Miss. I would say that I was going through codes, and I would just register the code that without a teacher, life would have no us. So I believe that teachers are a huge role, and you especially being in the education field, and now you've almost have 26 years. First of all, it's a huge honor for to have somebody just see how things are going with them. Miss, tell me, do you think that now education is somehow in a crisis in terms of education and skill set? Where do you see this? Because this is a huge change that's gonna come. What do you have to start? Okay, so in this first thing, let me rectify your statement that it's a huge change that is going to come. It's not going to come, it's already there. So that I've been saying since we started this little conversation, that the change is already there. So the faster we recognize it, the better. And about limitations or challenges in education, going online, adopting technology
has actually highlighted the limitations of online education. It's not easy. It's not just a Zoom class. It's not just a Google Hangout where you sit in front of a screen and talk. Online education is a very difficult concept, and it needs to be learned too. And therefore, it's pretty expensive also because of the training that is required, because we have never, ever experienced it. Now, if I were to say that this was just happening in our institution, so we could have turned around, looked at other institutions, looked at other countries, looked at other societies and learned. But this is a global situation, a global crisis. So everyone is just looking at other and trying to figure out and trying to learn. So there's a lot of opportunity in it also, because this is how we maximize on the resources that we have, and how fast we learn every day from our experiences, and then adapt to a new way of life and a new way of doing the same thing. So it's a daily learning and unlearning that's going on. That's so true. Miss, what kind of cognitive and social skills we will require to succeed in the unknown future? Okay. Well, the global pandemic has forced schools to shut down, universities shut down, and it has led to a breathtaking expansion of education, online education. So therefore, globally, you see everybody glued to the screen. I myself have never spent so many hours in front of a screen as I have in the last 4.5 months. So the world has gone digital at a breathtaking pace, and then for us to figure out how to ensure that the emotional, cognitive skills are in that of little ones, of students, of adults also, because it's just suddenly become a pretty silent life, which is all silent communication, with a screen. So it is going to have a huge impact. It has forced us to recognize these challenges that may have existed in a smaller percentage earlier, but now it's just everywhere. And coming back to your question, how to address this, I think, and whoever we are in contact with, physical contact, and that is at the moment at home, parents and their children. So to make an effort to engage in conversation is really essential, and then to speak about your feelings, and to have voices around you. That's extremely essential. So it is going to have a huge impact, but to what extent, again, time will tell. Recently, I was talking to one of my friends, and she told that her brother-in-law's son was facing a lot of problems. He was facing so much problem that he was admitted to hospital because he couldn't stay at home for some time. I don't know. Maybe it was his mental health problem. What if he was just missing school? Miss, did you ever come across any of these situations? Because you had a very big radar in front of you. You deal with a lot of people. So did you ever got to know anything like this? Yes, definitely so. I mean, one gets to hear a lot if you look around you in your immediate also, which is our homes. There are a lot of things are just different. Just a few days ago, there was this going on about an early years class, and the little ones they were exchanging some ideas and the teacher trying to engage them in a conversation. And I just turned around and said that I get up in the morning, my class starts, but it is not the same class. I can see my friends on the TV, so it is not the same. So in his own way, this 5-year-old was trying to express the change that he's going through. So yes, it is definitely there. There's a lot of anxiety
happening, a lot of stress and distress is happening, and that is because of a lot of factors. There's illness around you, there is uncertainty around you, there is economic crunch around you. So, it's taking its toll on adults and on children. So therefore, how you address it, it's essential to engage in conversations, try to be positive. Situation all over the globe is the same. It's not just that maybe in Lahore or in Karachi or in Peshawar we are facing a particular situation, and it's not the same otherwise. So, therefore, we need to ensure that adults at least ensuring that they think of ways to engage children, to engage the younger ones. I'll give you another example that in July, everybody would look forward to this Father's Day. But this time, when in the lockdown, what to do on Father's Day? But so I know a family, they sat and planned a number of activities, which I know from my childhood days, I remember. But we had just stopped those. So it was like early in the morning, get up and watch the car we had, and then take photographs and see how that felt and what fun the family had, what fun the kids had, because they'd never done it. There was no time for it 5-6 months ago. So again, parents, teachers have been pushed into unknown situations, and the spillover effect is felt on children also. So it's something very new for everybody, and there's no answer to anything. So therefore, we need to keep on thinking of ways on how to engage with children, with young adults, and how to stay positive. I would totally agree to that. It's just that when you start talking, everybody's just listening and I was just lost. I was like, okay, what to say? Ma'am, taking social, isolation, it has led to many multiple issues. Just right now you talked about mental health issues. What are the issues that faced by the schools? Like, there are thousands of issues now coming. People are getting their students out of the school. Some are enrolling them in the other schools. Crazy hectic situation. हर जगह there's a cluster happening. गिर रहा है कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ कहीं पे गिर रही है, student count rate तो कहीं बढ़ रही है. What would you say about that? Well, we are facing a lot of problems because we are a very large system. So we have, obviously the of issues is again larger than what usually people would have. So the shift to everything online has its challenges. Again, how to manage cyber safety, how to educate youngsters and children also to stay safe when they are online, how to coach parents on understand that this is now the need. So they need to adopt this because 6 months ago, there may have been very different kind of rules in different families. There may have been a very regimental screen time for children, but now the need is a lot of screen time because you're spending your whole school day in front of the screen. So how to stay safe, how to interact, and then how to have those boundaries in those interactions also. That's essential because sitting in an online class is not like a physical class, although the teacher is there, but there are limitations. A teacher cannot control the behavior of students. So we have had a number of challenges from, young students, especially the ones who are in middle school years and secondary years, because suddenly this freedom of being in a class with the classmates and having that teacher in front of you, but
in front of you, in control, but not really in control. And also when this younger generation is more tech savvy, so knowing more about how to maneuver a Zoom class or a Google Classroom or StreamYard. I mean, this platform where we are speaking right now. So it has been a challenge to address these issues, but again, staying positive. I know that this is also a lot of exploration on students' behalf, on teachers' behalf also. So it will settle. The most important thing is that the respect factor, as long as that is there between a student and the teacher, between home and school, things get sorted out. So I look forward that after all this learning and learning, to a day where we sit together and feel good about all that we achieved. That's so true, Miss. I would totally agree to that. Shad, you talked about the challenges, you talked about opportunities. You've given us a handful of advices. Being the new teachers, being the the forward carrier of what you guys are training. What do you see? What do you give us a piece of advice? Because that'd be worth gold. Okay, worth gold, I'm sure. No, ma'am, I have to say that because, mashallah, I have to say this because you were the first one who actually addressed me when I did my teacher's training. You said, good job, this, and it actually tilted me. Coming up from that level and addressing us teachers who are just already started their career and we're just going forward, we're trying to achieve it, it means a lot. Recognition and just a good word means a lot. So tell us something. To sum it up in very few words, I'll try to say that the most important thing is to stay connected. That's most important, to stay positive. Social isolation is something we have never experienced. It has given birth to multiple new issues, feelings, emotions also. So a piece of advice for everyone that matter, for young adults, for parents, for teachers, for leaders, would be to think of steps that we can take to keep our children engaged, and in a very, very different way. So engagement also has totally changed its meaning. So how can we these different life skills to our children? How to survive loss, grief, change, transition, lockdown, social isolation. So these are new skills or skills that were dormant maybe. They need to be polished, they need to be brushed. Also, we are in the process of adaptability and the recognition of the same, that we need to adapt to a new life. That's essential. That's extremely important. So they're keeping children meaningfully engaged, recognizing adaptability, and then thinking how do we approach the task of raising children during this pandemic, which may continue for who knows 18 months, 24 months. So how to be prepared for that? Yeah. That's so true. I was, I was so engrossed in talking to you and actually listening to you. I completely forgot that there's a huge section of comments coming in. People are loving your conversation. If you could just me, I'd really appreciate that. Some of the comments were like, Ms. Safshan, good going, very informative. I'd love to see you on screen again. Amber Madhav says that Corona has redefined our normal. Similarly, we need to set new visions for ourselves of today too. So, that's 100% agreed. And what I like in this point is that she has been school of today and not tomorrow. So, yes, so where we stand today, the school of tomorrow that we used to talk about is there. So, yes, our vision and our action in light of that vision is to be redrafted and implemented. That's so true. Nurjit Heather says that teachers need to understand and learn digital etiquette and set class grounds for more effective online classroom management. I remember Ms. Nurjit telling me that there's a whole section of digital citizenship etiquettes that we need to teach students. And taking that advice forward, we actually implemented that. And what do you have to say about that?
the educates that you just told us about? It's very important, a very pertinent comment and extremely important. Thank you for posting that comment, Narjis. We need to be aware of the risks and opportunities that our children have while they're spending an unprecedented amount of time in front of digital devices for both for school, for work, and for recreation also. Because see, games are also now all through a device. So it's essential to set boundaries and to talk to them and bring an awareness and talk to them from their own security and safety point of view. So it applies not just to teachers, but to parents also, and all of us for that matter, because it's a whole new world there, and we need to define our boundaries and be aware of the threats that are there too. So Sanati says Corona has pushed us into the future a little earlier than we had assumed. Online schooling is the new thing after all. We totally agree to that, Sana. Ma'am actually said the same thing about it. Can you just Shah Sultana Tahir Ali. Challenges are there, but teachers are taking their challenges as a part of their learning. So, ma'am, what do you say? You are leading a big group of teachers as well. How do you see them? How do you see the teachers changing, going forward? Well, I don't have words to express my gratitude for all teachers, right, for that matter, because the way it changed, it's not that they're going to change, but they changed overnight. I mean, today it was the lockdown, and tomorrow the schools started online. So that kind of a leap of faith into an unknown, abyss, I must say, is something that is remarkable. And the way teachers have worked round the clock, day and night, to adapt to this change, to ensure that they give the best to the students, the best of what they have. And when I say what they have, what they understood, what they have grasped. Honestly, the gratitude that we all feel immense, and it's beyond words. So hats off to teachers. I can stand and start clapping for them. That's sweet, man. That's really appreciated. Thank you so much, ma'am. Just time went by with you. I did not even got to, feel like that I was out of topic, or if there is so much more I want to ask you. I'm going to bring you another time for one of my sessions in which you're going to specially talk about how you evaluate school development and how do you see the changes in it, because that would be an amazing topic to discuss with you. Thank you so thank you so much, ma'am. Ma'am, any last words before you go? My last words are: keep your chin up, transform ASAP, and adapt to the new world. And life is yours to discover and live. So sweet. Thank you so much, ma'am, for your time. We from Greenwich University really appreciate your time and your effort given to us. This was Miss Narjis. This was Miss Afsha with us. And Miss Afsha actually told us about all the great, facts that were teach. Aisha Najmi also says Miss Afsha is an inspiration for all our beacons. So glad to see her today. The way Beacon House has provided organized way of dealing this pandemic is amazing. Thank you for your time, for your teachers. So yes, ma'am, thank you so much. We really appreciate it. Aisha Azam, she was one of your, you are one of her mentors, and she's one of my friends. And she was so on top of the moon. She was like, wow, to come. So she's saying remote teaching and learning is a facility mostly afforded by the privileged. How are schools going to help the parent community that is struggling with the economics of remote learning and teaching? So you can wrap it off with this one. Well, this is a thing. I can go on and on for that, but the shortest possible sentence revert to asynchronous teaching. So this is essential. This is what life is going to be like. There are no ways about it. And as parents have always invested in their children's education, face-to-face, physical, now's the time to do the same for online education. I totally agree to that. Thank you so much, ma'am, for your time. This was Ms. Afsha Khalid with us. As you all know, in our segment of education, we talk about how education is developing and how we are changing education within the time.
COVID has brought a huge change. We're trying to develop and we're trying to adapt this change. We're trying to go on a new future. The school of today, as Miss Afsha said, that 100% agree that now we're going to have a school of today with us. I wish you guys with this beautiful sentence: the mediocre teacher tells, good teacher explains, the superior teacher demonstrates. The great teachers inspire. One of the great teachers, Miss Afshan, was with me today. She inspires all, and I hope that I inspired you in any way possible. Please let me know if there's Professor Director of and I wish on this very best career. Changes in Major General have to work. Try to aim to your goal. My name is. I'm a alumni of Greenwich University. I'm of Abbas Bin. Setting up has been in shaping personality, providing us the life for the that some of our career. Proud. So I'd like to thank the platform, education, Major General Iftikhar यूनिवर्सिटी
आज भी कि ये मेरी फील्ड होगी, ये मेरा पैशन है. एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक, सो हैव यू सक्सीडेड इन व्हाट यू वांटेड, या you're सक्सेसफुल वैसे भी, लेकिन जो चाहती थी वो हुआ, या रास्ते में कुछ मुख्तलिफ हो गया? आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो टीन्स की अगर आप बात करते हैं तो आई वॉज वेरी फेयरफुल ऑफ वॉट वॉज इन फ्रंट ऑफ मी. मैं 90s के दौर की टीनेजर हूँ और हमारे सामने MBAs होते थे, इंजीनियर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे जिनकी इज्जत होती थी. आज भी है, लेकिन उस ज़माने में एक वो दौर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी. हम वो जनरेशन थे जिनको आप कहते हैं कि ट्रूली न्यूक्लियर फैमिलीज जिन्हें कहा जाता है. तो हमारे पेरेंट्स काम करते थे, हम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जाना शुरू हुए और वहाँ पर हमें सिखाया जाता था कि, और हमारे घर में भी सिखाया जाता था कि पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. हाँ, अब उल्टा हो गया. क्योंकि मसला ये है कि पढ़ना लिखना जो है उसको समझ लिया है कि हम कुछ बन गए हैं. पढ़ना लिखना इज नॉट द एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. हर बंदा जो है, आप मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हालांकि हम मीडिया की फील्ड में, लेकिन आपका जॉनर कुछ और है सक्सेस हासिल करने का, मेरा कुछ और है. मुझे ये पता था कि स्कूल जाना मुझे शदीद कमबख्ती लगती थी. आई हेटेड स्कूल लाइक एनीथिंग, आई हेटेड कॉलेज लाइक एनीथिंग. जो मुझे ज़िंदगी में सुकून मिला था जाके, वो जब मैंने NCA में स्टेप इन किया था, क्योंकि उधर मुझे अपने जैसे लोग मिले, अपने जैसे दिमागी तौर पर गुंजल लाए हुए, सताए हुए, परेशान हाल, जो 9 to 5 जॉब्स में बिलीव नहीं करते थे. मुझे लगता था जब तक मैं अपने घर में हूँ मेरे साथ कुछ मसला है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी मेरी सहेलियाँ थी, मेरे दोस्त थे, मेल फ्रेंड्स थे, उनका फोकस था कि उन्होंने ये करना है. और मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैं बैंक्स में भी जॉब की. मैंने बहुत यंग एज पे, आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग समर जॉब्स एंड विंटर जॉब्स, क्योंकि हमारे घर में हमें कहा जाता था जाओ जाओ कमाओ जाके बाहर. एक वो माहौल था घर का जिसमें इंडिपेंडेंसी हमें सिखाई जाती थी. तो ऑब्वियसली अंडर अ लॉट ऑफ लाइमलाइट और अम्ब्रेला में हम होते थे, अपने कुकूंड होते थे, लेकिन हम जाके बाहर करते थे जॉब. बैंक में फेल हुई, टाइम लाइफ मैगजीन में काम किया, वहाँ फेल हुई. एक अखबार में नौकरी करने गई, वहाँ पर मतलब रखने से मुझे इनकार कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजी अच्छी नहीं थी. तो मुझे लगा कि मैं तो इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ. बड़ा गुस्सा था मेरे अंदर, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी. और मैं देखती हूँ आज के दौर में हमारे मीडिया के फील्ड में भी बहुत सारे बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको घर में एक्सेप्टेंस ही चाहिए, घर वालों, और उनकी भी गलती नहीं है. माँ बाप समझते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBA कर लो, जिंदगी बन जाएगी. उनको ये नहीं समझ आता कि और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं जिंदगी को आगे चलाने के. तो गाना गाती थी, नाचना बहुत अच्छा लगता था. किसी की भी मेहंदी हो, चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार भी ना हो, तो उसकी शादी में भी, मेहंदी में भी जाके डांस करना होता था. सबसे पहला मुजरा जो था वो मैंने किया था 12 साल की उम्र में, और वो एक मेहंदी में था और वो रेखा का मुजरा था. दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. बहुत खूबसूरत गुलजार की डायरेक्शन में रेखा ने काम किया, और मुझे लगा ये अदा, ये ठहराव, ये कहाँ से आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड की थी उस वक्त. फिल्मों को किसी और तरीके से देखा जाता था. आज आपके पास इतने सारे वेब प्लेटफॉर्म्स आ गए कि आप बैठकर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा फिल्म का अंदाज, कौन सा एक्टर किस तरीके से लेके चल रहा है. हमारे पास उस वक्त वो नहीं था, एग्जाम्पल्स नहीं थी. तो ये वो दौर मेरा बड़ा गुस्से वाला और फ्रस्ट्रेशन वाला रहा, जिसमें मेरे घर वालों को आई एम श्योर बड़ी मुश्किल हुई होगी. एक तो आर्टिस्ट पैदा हो गया घर में, ऊपर से वो एक औरत है, और फिर उसको कैसे बाहर भेजा जाए.
तो आई एम श्योर मेरे घर वालों ने एक बड़ा इशू मेरे साथ गुजारा, कभी इजहार नहीं किया उसका, लेकिन उनको मसला ज़रूर हुआ होगा। लेकिन एनसीए के अंदर जाके मुझे फोकस मिला कि मैंने अब ज़िंदगी को चलाना कैसे है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, क्योंकि गा भी सकती थी, नाच भी सकती थी, एक्टिंग भी आती थी, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना मुझे बुरा नहीं लगा। मास्टर मैं किसी चीज़ में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस मामले में हॉप करती हूँ एक से दूसरी जगह। इट टुक मी ईयर्स टू अंडरस्टैंड एंड बी ओके विद इट कि अगर मैं 2 साल गाना चाहती हूँ और अगले 2 साल डांस करना चाहती हूँ और अगले 8 साल एक्टिंग करना चाहती हूँ और फिर कुछ भी नहीं करना चाहती, इट्स फाइन। दिस इज हाउ एन आर्टिस्ट लाइफ इज। हम बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जो 9 to 5 का हमारा एक हम पे छापे लगाई गई थी, another brick in the wall is a beautiful example of how people were trying to mold us. पर मेरा ख्याल है आज का मीडिया का दौर आपको भी, मुझको भी, बहुत सारे ऐसे लोगों को इजाज़त देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। ट्रू, बिल्कुल। मैं 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, उस पर बात करना चाहूँगा। एक कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर लाइफ में आप नाखुश हैं हर चीज़ होने के बावजूद, तो देर इज़ समथिंग दैट यू नॉट डूइंग राइट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन, इफ़ यू डोंट डिस्कवर व्हाई आर यू बॉर्न एंड व्हाट आर यू मेंट टू डू इन लाइफ, तो आप ज़िंदगी गुजार देंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या किया। बिकॉज फॉर मी, मेरा पर्सपेक्टिव है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट पेइंग बिल्स month after month and just die. Life is about exploration. Life is about living. You live every moment and you feel alive rather than आप दूसरों की मर्जी के लिए, दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए जीते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी इसमें कहाँ चली गई, कहाँ ख़त्म हो गई, पता ही नहीं लगा। एट द सेम टाइम कैफ ने जिक्र किया आर्ट का, और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक्सप्रेस करती है। अगर आप पेंटिंग की बात करें तो बग़ैर कुछ कहे बहुत चीज़ें हो जाती हैं। डांस की बात करें तो बग़ैर कुछ कहे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे दिए जाते हैं। इस तरह से आर्ट वो ज़बान है जो बहुत ही एक पीसफुल वे में बहुत कुछ कह जाती है, कर जाती है। तो मैम एक चीज़ आपसे, सॉरी कैफ, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर देयर आर ऑलवेज टैबूज, यू यूज द वर्ड एक्सेप्टेंस का थोड़ा इशू होता है, जजमेंटल बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं और चीज़ को उस वक्त नहीं समझते लेकिन लोगों के जाने के बाद समझते हैं। जैसे अगर हम सादत हसन मंटो की भी बात कर लें तो उनकी ज़िंदगी में उन पर पत्थर पड़े, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके काम को सराहा जा रहा है, उनके ऊपर PhDs हो रही हैं। उस टाइम पीरियड में लोगों को समझते नहीं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डांसिंग, शोइंग योर एक्सप्रेशन थ्रू दिस फॉर्म ऑफ आर्ट, कितना चैलेंज आया, कितनी प्रॉब्लम्स आई एंड हाउ यू गॉट ओवर देम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लकीली आई बिलोंग टू अ सोसाइटीज क्लास वेयर I don't really care about what other people say. I'm sure lots of people have lots to say negative about how I use the genre of dancing and singing and acting in my life to express myself. But they've never been bold enough or courageous enough to say it on my face. But I would like to speak about women who have gone through such a turmoil in their life. And I would also say that's mainly because they don't realize that they're entrepreneurs. They don't realize that they're artists. They victimize themselves. Right. I'm not judging them. I know everybody has their own background, their own conditions and circumstances. But what they need to see is that when you get out of the house and use such genres which are taboo in our society, you also need to make yourself accept that you're leaving the house because you are earning through your passion. True. Also through something that God has given you. It's instilled in you. गाने वाले जो हैं, अच्छे गाने वाले, वो acquired नहीं होते। आपको खुदा की तरफ से वो आवाज मिलती है, तोहफा होता है वो। उसकी बेहुरमती करना किसी भी तरीके से, चाहे वो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ये एक बहुत बला का जुर्म है। डांस आप अक्वायर नहीं कर सकते। आपके जिस्म में वो सरायत होता है जब आप पैदा होते हैं, जब आप बन रहे होते हैं अपने माँ के पेट में,
आपकी बोन्स, आपकी मसल्स उसी बैलेंस के साथ क्रिएट हो रही होती हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं, वो बैलेंस अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, वो आपको इंस्टिंक्टिवली आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा होता है। उसको निगेट करना, उसको जलील करवाना या करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये गुनाह है। और इस गुनाह को बहुत सारी खवातीन और मर्द सह रहे हैं, जी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसको हमें इसको एड्रेस जब तक हम नहीं करेंगे, मतलब अभी एक बड़ी दुखी कहानी हमने पेंडेमिक के दौरान ही सुनी कि खातून प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स और उनको वो गा रही थी, ये अंदरून सिंध में हुआ। और उसको किसी वडेरा था, जो भी ऑडियंस बैठी हुई थी, उसने कहा ये फलां गाना गाओ और नाचो भी साथ। उसने इनकार जब किया, क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसको उसने गोली मार दी। शी डाइड ऑन द स्पॉट विद द चाइल्ड। Now, what is the reason that that woman had to go through that trauma? We need to address all these things. क्या वजह थी कि इतना आसान था एक आदमी को या औरत को किसी गायिका को या गायक को मार देना या इंसल्ट कर देना? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे इतना सा ले लें आप, लोग गा रहे होते हैं बाहर, सामने बैठ के कोई गायक अपनी सलाहियत दिखा रहा होता है और हम बातें कर रहे होते हैं। True. ऐसी महफिल में बहुत बुरा लगता है। बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है अप्रिसिएशन, और आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए होती है, सिर्फ दाद चाहिए होती है, सिर्फ सराहने वाले। लेकिन वो दाद भी उमर आपको तभी मिलेगी जब आप अवेयर होंगे कि ये दाद आपकी लेने की है। अगर ये इस चीज से आप अवेयर ही नहीं है, मैं आपको छोटे तबके पे चले जाए, ग्रास रूट लेवल पे चले जाए, हमारे घर की मेड्स ले लें। औरतें कब से घर से निकली हुई हैं, अपनी जिंदगियां इज्जत दाव पर लगाकर दूसरों के घरों में काम करती हैं, जाके सड़क पर काम करती हैं जाकर। लेकिन वो कभी समझती नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कभी समझती नहीं है कि ये उनका बिजनेस है, और तभी वो विक्टिमाइज्ड रहती हैं, तभी उनको कभी कोई इज्जत नहीं मिलती। मुझे ये बात तकलीफदेह लगती है, और कोशिश मेरी ये होती है कि हम अगर किसी ऐसे हलके में बैठे हों जहां पर एक नॉट वेल टू डू खानदान से कोई औरत या मर्द आके डांस कर रहा है या गाना गा रहा है, मुझे उसको उसकी जगह देनी है। और अपने मैं उसको इज्जत दूंगी तो उसको पता चलेगा ये मेरी इज्जत है। क्योंकि हर एक हमारे माशरे में एक सदा से जेनेटिक कोडिंग चली आ रही है, जिसमें हम बता रहे हैं लोगों को कि ये अच्छा प्रोफेशन ही नहीं है। वेरी ट्रू। और बहुत वैलिड पॉइंट्स कैफ ने रेज किए, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं लाइटर नोट का माहौल जरा लाइटर नोट की तरफ लेकर आऊंगा। और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी सारी जर्नी रही, एक्टिंग की, डांसिंग की, और जैसे आपने कहा कि आप आर्ट के अंदर आके जब आर्ट की तरफ आई, सो यू फेल्ट अलाइव, तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि हाउ टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड हाउ टू फिगर आउट व्हाट यू मेंट टू डू इन लाइफ? Well, I mean, something that you need to figure out is you figure out it yourself. You know, I don't like have a formula where I can say कि ये करेंगे। 2 + 2 हमेशा 5 होते हैं आर्टिस्ट फील्ड में। We are always living in the parallel world. We are always the outsiders. We're always the others. We'll never be normalized. एक तो अपने आप को नॉर्मल समझना छोड़ दें, हम नॉर्मल हो ही नहीं सकते, हम हैं एबनॉर्मल लोगों की। आज तक मेरी वालदा कहती हैं, मुझे नहीं पता तू क्या करती है, मुझे नहीं पता तू कैसे कमाती है, पर कमा रही है, क्या बात तो बस सही है। क्योंकि उनको इस जिंदगी का कभी पता ही नहीं है। आप जो घरेलू लोग होंगे, जो 9 to 5 जॉब करने वाले होंगे, आपके माँ बाप ही होते हैं उनमें से ज्यादातर जिनको यू लुक अप टू देम। आई वुड से मेक देम योर आइडल फॉर थिंग्स लाइक कि आपने इज्जत कैसे करनी है, आपने घर कैसे चलाना है, आपने अगर आपके वालिद बुजुर्ग हैं तो किसी और बुजुर्ग को भी उसी जगह पे रख के उसको इज्जत दो, जैसा हुकूकुल इबाद हमारे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना जैसा कोई ढूंढना है जिंदगी में, तो वो बाहर जाके ढूंढिए, बिल्कुल अपना मुर्शिद तलाश कीजिए, क्योंकि मुर्शिद आपके पास नहीं आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लाजमी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और इसमें खास तौर पे मैं जितने हमारे पेरेंट्स हैं या जितने जो अब
की जनरेशन को अप्रेस करने का भी एक बड़ा डिफरेंट तरीका है। इस पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक बचपन के अंदर छोटा हाथी का बच्चा अगर छोटा हो और उसको उस वक्त उसके पैर में बेड़ी डाल दी जाए तो वो जब कोशिश करता है तो वो बेड़ी उसको रोक लेती है। सिमिलरली वही जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाए तो वो चाहे तो बेड़ी क्या वो दीवारें तोड़ सकता है, लेकिन सिंस उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मेरे पैर में बेड़ियां हैं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वो कोशिश ही नहीं करता। सिमिलरली जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे कैफ ने इतनी खूबसूरती से बताया कि वो अपनी सलाहियतों के साथ माँ के पेट से आता है, तो जब हम ही बच्चों को बचपन में हर चीज में बोल देते हैं कि ये मत करो, नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो आप उसकी क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं, आप उसकी वो सारी पैशंस को किल कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे के जहन में बचपन में ये बात बैठ गई कि मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है, मैं वहां नहीं जा सकता, ये गलत है, तो उसकी एक एक्सप्लोरेशन की चाहत ही खत्म हो जाती है। तो प्लीज डोंट डू दैट और अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उनको इनकरेज करें, जहां वो गलत जाए उनको संभालें जरूर, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी किल ना करें। और क्रिएटिविटी से मुझे ख्याल है, आपने जिक्र किया था कि आप को खुदा ने एक तोहफा दिया है गाने का, तो मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहूंगा कि कुछ आप हमारे व्यूअर्स को अगर 2 लाइनें सुना सकें। हाँ, ये आप ना मेरी आप मसले में मुझे डाल रहे हैं क्योंकि मैंने रियाजत छोड़े मुझे कुछ साल हो गया है। और लेकिन मछली तैरना नहीं भूल सकती, इस तरह एक गाया गाना मैं एक बात बताऊं आपको, इससे पहले मैं सुना दूंगा गाना लेकिन सुर का दामन जब आप छोड़ देंगे ना रियाजत का, तो आपकी आवाज जो है वो, आपका सुर जो है वो आपसे छिन जाता है, और वो मेरे साथ आजकल हो चुका है। नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए, अंदाजा हो जाता है, तो नो वन जजिंग। तो मैं आपको क्या सुनाऊं, सिंपल सा कोई गाना। आजकल तो मैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, मैं आजकल अपनी बेटी को सिर्फ नर्सरी राइम से सुना रही हूँ और सिखा रही हूँ, तो वही मुझे याद है। लेकिन क्योंकि सिंस आप क्लासिकल जो है वो जॉनरास हैं, तो कुछ हम किशोर, मुकेश, लता, कुछ इस तरह से। ओके, सो अभी मुझे आसान गाना कौन सा याद आ रहा है, वो है ऑलराइट, ये रातें, ये मौसम, ये हंसना, हंसाना, ये रातें मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें, ये बहकी निगाहें, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये आँखों की काजल में डूबी फज़ाएं, फ़ज़ा के लबों पर फ़ज़ा के लबों पर ये चुप का फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें। क्या बात है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आवाज में ज्यादा घूम गया था या फिर जब कैफ गा रही थी उनके एक्सप्रेशंस में, क्योंकि एक सिंगर कितना अपने गाने में घूमे वो उसके एक्सप्रेशंस बताते हैं।
और इंडीड इट वाज अमेजिंग। मैं आई जस्ट लाइक टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ ऑडियंस नहीं है वरना स्टैंडिंग ओवेशन होता। या तो आपके कान जो है वो बज रहे हैं, क्या आपको सुर गिरता हुआ ना नजर आया? देखिए इट्स नॉट कि मैं यहाँ पे इस वक्त की कोई जज नहीं बैठा हुआ जो आपको मार्क कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे गाने की मेरे हिसाब से ये होता है कि जो सिंगर है वो उसको कितना एंजॉय कर रहा है। हाँ। और गाना हो या डांस हो, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है वो बताते हैं कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व हैं एंड यू वर सो मच लॉस्ट इनटू योर ओन सॉन्ग। वही फील आपके ऑडियंस भी फील कर सकते हैं। आई होप सो। सो इंडीड इट वाज लवली। और जैसे आपने मेंशन किया यू हैव अ डॉटर, इट्स रियली हार्ड टू बी अ वर्किंग मदर। घर देखना, एक टॉडलर को देखना, और साथ इतना मुश्किल मीडिया का काम देखना, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द बनवट फेस्टिवल्स गोइंग अराउंड एज वेल। हाउ डू यू मैनेज? Oh, I wish there were more than 24 hours in a day. We all do. And I wish I wouldn't sleep. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको सोना भी पड़ता है, आपको बच्ची को भी देना पड़ता है टाइम। Luckily again, Umar, I think I'm very blessed to have had a family who's very supportive. My mother is a very doting grandmother. My brothers are very doting uncles. My husband is a very supportive husband and a father, and he takes care of Ambal a lot. So I don't feel that I can. मुझे कभी कभी नहीं लगता कि मैं उस तरह की माँ हूँ जिस तरह की मेरी माँ थी। क्योंकि वो खाना बना के देना, मुझे ना खाना बनाना आता है ना मैं सफाई करती हूँ घर में। इट्स अ वेरी ऑटो पे चलने वाला हमारा सेटअप, एंड टच वुड I think without a very supportive spouse, partner, this thing would not have happened. What I'm enjoying right now. Right. Obviously, जब उसका टाइम होता है, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो जब वो काम करते हैं तो फिर मैं टेक ओवर करती हूँ। तो we try to juggle our time in a way कि कभी मैं स्टे होम मॉम बनती हूँ और फिर जब मेरा काम आता है तो वो स्टे होम डैड बनते हैं। तो it's a very blessed situation for me. बट अगेन ये वो चीज़ें हैं, इस दर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस वर गिवन. Ambal came into our life when I was 40 years old. So those last 16 years that I've been married to Zishan we made choices which made us stay away from each other quite a bit, and क्योंकि वो भी ट्रैवल करते थे, मैं भी ट्रैवल करती थी, हमने कोशिश की कि जब हमारे बच्चे हमारी जिंदगी में आएंगे तो हमारी सेटल्ड लाइफ होगी, हम स्ट्रगलिंग पेरेंट्स नहीं होंगे. तो उसमें हमारे घर वालों को कभी ये होता था कि क्या कर रहे हो, ये इस तरह से नहीं होता, बट वी मेड देम रियलाइज कि नहीं, ऐसे ही ये हमारी जिंदगी है और हमने इसको रूल आउट नहीं करना क्योंकि ये पाथ हमने चूज किया है. और आपने शुरू में जो बात की थी कि जो आप जहां पे अपने पहुंच के अपने आप को सक्सेसफुल समझते हो, क्या समझते हो नहीं समझते, आई थिंक इवेंचुअली व्हेन नाउ दैट आई हैव व्हाट आई थॉट आई शुड हैव, द जर्नी वाज मच मोर प्रेशियस. आई विश वो जर्नी वापस आए. आई विश कि वो जो अनसर्टनिटी थी, वो जो upheavals थे, to get to where we are, to get to have a daughter now like Ambal, वो दोबारा से हो, because it was so exciting. सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर जब आप मंजिल पे सपोजिटली पहुंच जाते हैं, और ये बहुत सारे सूफीज ने भी अपनी कलामों में मेंशन किया है कि जो रास्ता होता है वो बहुत जरूरी होता है उसको एंजॉय करना. एंड थैंक गॉड नो रिग्रेट्स टू डेट कि हमने उस रास्ते को बहुत एंजॉय किया, चाहे वो स्ट्रगलिंग का था, चाहे वो छोटी खुशी थी, बड़ी खुशी थी, जैसी भी आई वो हमने उसको एंजॉय किया. इसलिए आज बच्चे का हमारी जिंदगी में आना इज दुगना खुशी का बायस. और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जर्नी जैसी भी हो, मुश्किल हो, बहुत अच्छी हो, बहुत उसमें हर्डल्स हों, उसको एंजॉय करें. हैंग इन देयर, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स लाइफ. क्योंकि अगर एक फ्लैट लाइन हो तो ईसीजी मशीन जब आती है फ्लैट लाइन, तो दैट मीन्स यू आर डेड. सो यू नीड अप्स एंड डाउन्स, यू नीड दैट एडवेंचर, यू नीड दैट आर्ट. वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. एंड मैम, एज मच एज आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन, okay, Kaf, as much as I'm loving this conversation, sadly we're coming towards an end. लेकिन
हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार सरप्राइज आने वाला है, आपकी एक फिल्म आने वाली है। Yes. सो आई वुड लाइक यू टू टेल एंड ब्रेक द वो सरप्राइज फॉर देम, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा अगर आप फिल्म के बारे में बता सकें। So basically, this film was done about a year and a half ago. इसका नाम है इंतजार, Waiting, and it's a directorial debut of Sakina Samo, and she came up with not came up with it, but she came with the script to us where she was trying to explore the idea of family and the sacrifices that one gives, and today's nuclear families kind of disconnect with their children, and the children's disconnect with their parents, and so it's a very powerful script, and currently the film is on its kind of route. It's routing into the festivals, the international festivals. So अभी हार्लम में उसकी हुई स्क्रीनिंग हुई है, अभी निसाफ फेस्टिवल में हो रही है स्क्रीनिंग उसकी कनाडा में. So I hope that you guys will be able to watch it once it gets screened there. यहाँ पर उसने रिलीज होना था 20th March को, but the pandemic happened and the lockdown happened, so we couldn't even see the film. But considering that it's a small cast and a very intimate cast, so quite excited about how it's turned out. Right. जितने लोगों ने इसको फेस्टिवल्स में देखा है, हमें जो फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला है. So I hope that the Pakistani audience also enjoys it as much. डेफिनेटली, बिल्कुल. इंतजार का मुझे भी खूब इंतजार रहेगा. और मैम, लास्ट थिंग बिफोर वी लीव, आपका आज इस इंटरव्यू पे, इस शो पे, लाइटर नोट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे. आई लव टॉकिंग टू द यंगर जनरेशन. इट कीप्स मी यंग ऑल्सो, gives ideas, and I think these web platforms are the thing of the future. We are now in competition with not only our neighboring countries but the other continents as well. True. So we need to up our game. And I think platforms like these, hosts like you guys, directors and DOPs like behind this camera, I would like to congratulate you all for making this happen, and also getting our voices across there into the viral network, so that people can connect with us. Thank you so much for your time, ma'am. कैफ. So बिल्कुल सुना आपने कैफ गजनवी को, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, और उर्दू लिटरेचर की अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए जो इनकी एक जद्दोजहद जारी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी आज की जनरेशन के लिए, उसको भी हमने डिस्कस किया. एट द सेम टाइम ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी को समझने के ऊपर हमने बहुत सी बातें की, जिसके अंदर ख़ुद को समझना, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ टैबूज़ हैं, जहाँ किसी एक टॉपिक पे कोई बात करता है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, जब तक आप किसी टॉपिक पे खुल के बात नहीं करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? तो किसी भी चीज़ को ये बोलना कि ये अच्छा है या बुरा है, उससे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है. खुद भी जिएं, लोगों को भी जीने दें, और साथ ही साथ ज़िंदगी एंजॉय करें. लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. ये जो एक रेस में हम चले जा रहे हैं, जो इस एक रेस में हम चले आ रहे हैं कि ज़िंदगी में हमें आगे दौड़ना है, हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, सक्सेसफुल होना है, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े घर चाहिए. इस रेस में ना पड़े. इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आप घूम जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है ज़िंदगी, जिसको आप जीना भूल जाते हैं इस दौड़ में. So I hope you enjoyed the show today. बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हैं on Greenwich University Facebook page, and at the same time you can follow us on our YouTube channel, that is Greenwich University. अपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में with another guest. Until next time, keep smiling, stay positive, and Pakistan Zindabad.
Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing, and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। आप और आप कहेंगे हमारा शाम बखैर करते हैं कि आपका गुजरा होगा, अगर तो कोई बात, फिर भी ये उम्मीद कि जो जो आने वाली रात अच्छी नाज़रीन बहुत और आपकी जिंदगी कोशिश उसका उन मसाइल थोड़ा सा मिलेगा हमारे, तो लोग जो है वो और किसी हद तक आप नहीं होते, लोग इतने लाइफ में मसरूफ, तो वक्त निकालना मुश्किल, तो थोड़ी प्रोग्राम के थ्रू की चाय आ सके आपसे जो है अपने सामने आएंगे रोजाना के फेसबुक इंस्टाग्राम पर को मिलता है करेंगे हल भी हम आप कमेंट भी आप शेयर कर सकते हैं कि क्या जो पे आपकी प्रोग्रेस अच्छी बात शामिल ये है कि आजम के हाल जगह अच्छी अच्छी और कायदे आपके मुख्तलिफ अक़वाल अच्छा लगता है कि काश कर लें आगे बढ़ जाए तक जो है हमें कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी कोशिश या एक कॉल है जना का पाकिस्तान, वो आपके फिर ने कहा कि तवार से भी वर्त है ये मुल्क में बड़ा कोई आप नहीं कायदे के इल्म है उस लगा सकते, ये जो जरिए हमें मिल और इस शिकस्त आप देखें कि और इस सारा बेस है और सर्च कर रहे हैं, इसी की मिसाल सकते हैं कि तो जब नहीं करेंगे
आएंगे आप, लेकिन बात नहीं कि सिर्फ पर है, आप टाइप और आप गूगल सर्च इंजन सकते हैं। इशू ये है कि हम देख एक हफ्ते की वीडियो ने उस पर मिले अमल का इज़हार के किया, उसको करना चाहिए, नौकरानी काम कर रही थी, उसको जलील बदतमीजी की। दूसरा पहलू हमने लोगों ने के साथ सही और बढ़ते घर में जानी पहुंच सकते। वो स्टोरी हुसैन की उन्होंने के हैं मारूफ मॉडल और फैशन डिजाइन ने से मुतालिक जिक्र दिया। मेरा कहना था कि बर्दाश्त और गफलत भी बन, लिहाजा हकीकत भी होती, मुलाजमा के साथ सलूक होता। इस वीडियो में ने बताया अक्सर लड़की ऐसी जाती हैं और ठीक है दो के पूरे इंसान के लिए बन सकती है मुताबिक और गैर जिम्मेदार उनके हो चुके के वेव ओवन या गरीब होती है। मौक़िफ़ था कि मेरी गुफ्तगू को के दर्ज गया है और में रखती करे या होती है पर आप बॉस की जानिब की जाती वही हुसैन ने आजमा की गफलत पर भी हाल ही मुलाजमा की गफलत खाना के लिए की वजह मुलाजमा ने बात हेयर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल वो बंद किए बच्चों के कमरे का कहना था कि 3 बच्चों के रूम तरह चल और 3 उन्हें बच्चों कर खुद बंद कर लेकिन प्लग उन्हें जाने के लिए कपड़े से कुछ रोज की एक वीडियो वायरल हुई है वो घरेलू 2 इंच बंद
मोबाइल में डपट दिखाई दे रही। नाज़रीन, आपके सामने बताइए कि हुसैन ने गलत कीजिए नहीं के सामने आप समझते हुसैन ने गलत नहीं किया या आप समझ नहीं करना सामने रख साहब कैसे हैं। मैं अगर अपना तो मुझे सब कि अपनी घर में लाइट होती है, चाहे वो आपके किसी गैर जरूरी जो है उसको बंद, ज्यादा रोशन 6 बजे आप देखें बल है वो ओवर जाता है। सेव करना हैसियत कौम है का मामला। और अब जरा कुछ कर लेते हैं। उम्मीद कर अगर 10 से घर आ शॉपिंग घर पर आ गए, शाम की चाय बनाइए, चाय पी स्टार्ट करने से हम अच्छे से रहेंगे। बाद बहुत अच्छा का मौसम, बहुत प्लान कीजिए कहीं घूमने बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए। नाज़रीन ठीक है, जिंदगी में है अपने ऊपर और अपने अहले दोस्तों के घूम एंजॉय की। आज आज की वो बात एंजॉय, हम शाम बखैर। वीडियो पसंद प्लीज इसको शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो कमेंट कर सकते। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। Chance to shine. Truly, endeavors. Good luck.
runway 36. Soon after takeoff, the aircraft was observed by ATC and other eyewitnesses to be maintaining very low altitude and drifting right in a bank. ATC control tower tried to establish contact with aircraft, but no contact was established. It was conclusively established in the technical investigation that the aircraft had the right engine failure during takeoff. The pilot continued with the takeoff and climbed through segment 1. The eyewitnesses' statements and the FDR report confirmed that the aircraft after segment 1 was observed to be turning to the right while flying at a very low altitude and ultimately stalled after about 45 seconds of flight and crashed in a mango garden 1 to 2 nautical miles at 042 degrees from the takeoff point. The increased takeoff distance could also be attributed to the asymmetric power and overall reduced available power for takeoff or higher takeoff speeds. Before impacting the ground, the aircraft stalled and was hammered on the ground. Due to all these movements and throwing around, all passengers and crew sustained serious injuries, and the wreckage caught fire due to the presence of colossal amount of fuel in the aircraft. It is also known that ground fires of jet fuel produce up to 16,000 Fahrenheit of temperature when burnt in the aircraft wreckage. Human exposure to such a high temperature can cause death in seconds, let alone 10 minutes of burning. Therefore, as per the doctor's report, the cause of fatalities was attributed to high degree of burns. The local residents who had gathered around the wreckage within few moments described the fire and heat to be so intense that nobody could go close to the burning wreckage until the firefighting crew reached the site after 10 minutes of burning. The possible consequences of the ill-fated focal crash which took place in Multan on July 2006 was that one of the engines of the aircraft flamed out immediately right after the takeoff. The accident of the focal crash could have been avoided if the crew was able to tackle the emergency in the proper sequence and as those published and mentioned their checklists. However, the crew which appeared in the CA reports that the combination of the crew was probably inexperienced or they were not very much confident on how to handle the emergency situation. And the more possibilities that the airlines, they have the training procedure. Each pilot undergoes a 6-monthly refresher training on the simulators. So if such drills are repeated in due course of time, so the crew would be mentally prepared how to handle the situation in the very critical phase of flight. The pieces of the broken blades of the right engine turbine were found on the runway edges, indicating that some abnormality with the right engine and breakage of turbine blades had taken place. When these hot turbine pieces fell on the edges of the runway, the dry grass on the edges caught fire. The evidence on the runway also showed that the aircraft took off in much longer than the prescribed takeoff distance in those ambient conditions. इब्रार साहब बहुत अच्छे लड़के थे, बड़े नेक आदमी हैं, हमारे पास से ट्रेन ही रहे। बस वो आखिरी टाइम में हमारे पास आए थे क्लब में, हमसे मिले हैं, सलाम दुआ हुई है, फिर वापस गए। डिपार्चर टाइम पर कुछ देर के बाद ही जहाज़ क्रैश हो गया। सिविल एविएशन वालों का टूटर बजा, एकदम गाड़ी में भाग दौड़ शुरू हो गई। उसके बाद हम परेशान हो गए, कोई पता नहीं क्या हो गया, जहाज़ क्रैश हो गया। हमने कहा इब्रार साहब हमारे से बिछड़ गए, बड़ा अफसोस हुआ। The message to all the pilots who fly these multi-billion machines is that they should always take the job as a very important and a laborious task, and they should concentrate on the exercises and all the check items which they are being trained for in the airline procedure, because it is not a very simple way to just you get up into the aircraft and take out and do the flight. You must consider the job very seriously and invest a quite amount of your time in keeping yourself current with the
knowledge and the level of skill required at each stage of your experience, and what you are expected to do in such situations. Dying in a plane crash might seem like the easy way to go to many, but to the victims and their families, not so much. Sudden death is always terrifying, may it be a car accident, a murder, or a heart attack. Norman Cousins once said, "Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live." Hi, I'm Professor Serge Riviere and the Director of Research and Development. I wish Greenwich University, Pakistan, the very best of luck, and I wish all those graduating on this graduation day the very best for their future careers. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Mehdi. I'm a very of Greenwich foundations of Bismillahirrahmanirrahim. फरमाई पैदा किया उसी ने इंसान को अल्लमहुल बयान सिखाया उसी ने बोलना उसको अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान सूरज और चांद पाबंद हैं एक हिसाब के वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल अल्ला ततगौ फिल मीज़ान ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम और जमीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए फ़ीहा फ़ाकिहतु वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं
जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। والحب ذو العصف والريحان और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? خلق الإنسان من صلصال كالفخار पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से। وخلق الجان من مارج من نار और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? رب المشرقين ورب المغربين रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मगरिबों का। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? مرج البحرين يلتقيان रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं। بينهما برزخ لا يبغيان दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावुज। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? سنفرغ لكم أيها الثقلان अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बोझल जमातों, जिन और इंसान। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ए ग्रोहों, जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला।
فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग। يطوفون بينها وبين حميم آن घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोजक के और खौलते हुए गर्म पानी के। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهما عينان تجريان इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? كأنهن الياقوت والمرجان गोया वो हैं याकूत और मरजान। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان नहीं है जजा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का।
فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهما عينان نضاختان उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهما فاكهة ونخل ورمان इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهن خيرات حسان इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? حور مقصورات في الخيام वो हूरें जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। Hi, and I am the teaching officer of proud alumni. Thank Greenwich. DG Rangers असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद
जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़ुबां पर प्यारे आका, सलात व सलाम हो ज़ुबां पर प्यारे आका, सलात व सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, सलात व सलाम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तरफ जाने वाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तरफ जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था। तसव्वुर था अब तक जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need
to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing, and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। I, Bibi Amina Firdaus Garib Hakim, do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President and will, to the best of my ability, without favor or prejudice, defend the Constitution and the institutions of democracy and the rule of law, ensure that the fundamental rights are protected and the unity of the diverse Mauritian nation maintained and strengthened. This documentary film takes audiences on a journey through the President of Republic of Mauritius's past and present life. Amina Garib Fakim, an internationally renowned scientist and biologist, is the first woman elected President of the Republic of Mauritius and is the third woman to serve as head of state. She was born in Mauritius on October 17th. The secret of her charm is a beautiful mind that made us believe that any extraordinary deed can be accomplished. She is an incredible president with a true passion for research and horticulture to benefit the society and improve the people's lives. She has become a role model to many women. She grew up in Plain McNean and completed her studies at the primary school in St. Patrice and finished her highest school certificate at Loreto Convent, Cottrebones. She graduated from the University of Surrey in 1983 with a BSc in chemistry and did a PhD in organic chemistry at Exeter University. In 1988, she married Anwar Fakim, who is a surgeon. She has 2 children, a son Adam and a daughter Iman. The President of the Republic started her career in 1987 as a lecturer at the Faculty of Agriculture at the University of Mauritius. She gradually climbed the ladder to serve successfully as Dean of the Faculty of Science and Pro-Vice Chancellor from 2004 to 2010. She was until recently the Managing Director of the Center for Phytotherapy and Research and Professor of Organic Chemistry with an endowed chair at the University of Mauritius. Within the field of biodiversity conservation and sustainable development, she has authored scientific articles and has lectured extensively across the world. She is a member of the editorial boards of major journals, has served on technical committees in various capacities, including the chair of several national committees in Mauritius. Amina brilliantly succeeds in her ambassadorial role as an international interest on her research. She travels a lot to deliver speeches at worldwide conferences in France, United States, Brazil, and in Africa. Her Excellency is proud that her daughter is studying science as well, and son is studying arts, and mother is equally happy of the children's choice. She believes in the philosophy, choose a job you are passionate about.
we have exclusively taken a short interview of Her Excellency, which will surely give you a brief insight into her remarkable life. First of all, I would like to begin the interview by asking you that being so busy with your research work, did you ever imagine that you would be the president of your nation one day? Well, I think throughout my career, even through the research, wherever I was presenting Mauritius, I was always kind of raising the flag of my country very high. So in my own ways, I was celebrating my country and I was serving my country. Sure. So I think to be given this opportunity to serve at the highest position, I think has been a blessing. Thank you. Could you give us an overview of the circumstances that led to you becoming the first woman president of Mauritius? It was completely by surprise, coincidence, and I think it came by the fact that one party was presenting constitutional reform with an executive president with full powers, 7 years, and the other party came up with no change in the constitution. And as you know, we have a very Westminster style of government, and so the party went with this, and I think the fact that they also presented a woman at that level, along with all the circumstantial kind of situation that was there, so it made the party win, and they also won with a landslide. Okay. Your country holds a magical attraction for people due to its immense natural beauty. However, what is your favorite tourist place? I should say it's my favorite tourist place because we have such beauty in terms of the tropics. I have always been attracted to countries where there's a lot of historical past. So I have been very attracted to Asia because I think a lot of our civilizations stem from that part of the world. Africa holds a very special place in my heart because this is where humanity started. And I think the Middle East, with countries like Turkey, for example, where you feel there has been the weight of civilization as we know it. Yes. And also the New World, because at some point they represented the new El Dorado. So there are many, many places like this that are very close to my heart in terms of tourist destination. Thank you. Every child has a plan for themselves when they're young. Some want to be doctors, some want to be astronauts. What was your plan? I think from the very early on, I was blessed to have witnessed the landing of the man on the moon. And so ever since that event, I think it kind of made me think of becoming a scientist. So I have always dreamt of being a scientist, and there were two events that I have remarked my decision. One of them, as I said, the landing of the man on the moon, and the second one that firmed it up was the birth of Louise Brown, the first test tube baby, because then I realized the importance and the impact that science can have on livelihoods. Thank you. And what is your greatest passion? My greatest passion has always been work, and a work well done, a piece of work well done. But I think over the years I've learned to make my work become my passion, because I always believe that if you enjoy what you do, you won't have to work a single day in your life. Yes. Thank you. Gender bias has always been a problem, and did you ever face any limits or boundaries as being a woman? As you have said, gender bias is always there and always will be. But the message I've had for girls is to focus on the quality of your work, because when you focus on quality, it has no gender, and you get assessed for the quality of your work. So if you do that, then there's no limit to what a woman can do. Okay. And to end the interview, I would want to ask you the one person who has inspired you the most. The one person, well, there are a few people actually. There are people who have influenced me, for whom I have a lot of admiration for, and that person will be Marie Curie. Marie Curie, because in the time when she was working, she was not even accepted to teach as a lady scientist. She still managed to get 2 Nobels. And then, of course, there are the freedom fighters in Africa, and among them you have people like Julius Nyerere, you have Mandela, and in Asia, of course, you have Gandhi, and all these people, they have in their own way shaped the destiny of mankind. Thank you. Thank you. Thank you for your time, Ms. President. Thank you very much. Thank you. Now, let's have a look what her family has to say about her. What is the thing you love and admire most about your mother? I personally think that the thing I love the most about my mom is basically that she always had time for my brother and I, even though she was a really busy woman. And I admire that she always has respect for other people and that she has a lot of dedication for hard work. And how has your life changed since you're the president's daughter now?
It didn't really change though, because I basically stayed the same person and she stayed the same person too. Nothing has changed back then at home, so I guess it's pretty cool like that. I think we have always had busy schedules. From the time we got married, she was working and I was working. And you know, we really had very little time together. But like you said, quality time is the important. The quality of the time is of essence, not the quantity of the time. So we had to make do with whatever we had, and I think it didn't do us any harm. I think that the important thing is that it is necessary to educate your children, whether they is a boy or a girl. In the past, a lot of Asian families neglected the education of their girls, and a lot of brain power has been unused or has been given not enough attention in the past. And you will find that there is now a revolution all over the world, but essentially in the Asian countries, where girls are being now pushed to develop their faculties as much as possible, and very often they do as well as, if not better than boys. As you have said, and I think this is equally true both for Pakistan and for Mauritius, the key word I think is respect. Respect in the widest sense of the word. Respect for yourself, respect for your parents, respect for your neighbors. And I think the source of a lot of intolerance in the world, I think, comes from the fact that there is little knowledge of your neighbor, of the differences, of the cultures, of the tradition. And this, of course, can lead to a lot of problems. And we've seen that happening in many places. That the key word is to learn to respect. Bien qu'on a passé, comment il y a pas naissé ou comment il y a mon enfant était, Laurette, il fait Laurette Maïbou, mais Laurette, quand il parle d'école, ça, Laurette fait appeler, dire qui fait il pas venir l'école aujourd'hui. Mais moi j'ai un petit peu, comment il y a la fille, il pas capable aller. Mais Laurette est bien content, Laurette Maïbou. Dans son enfance, moi j'ai eu des filles grandies, comment il y a une fleur. Voisins, famille, tout content lui. Moi j'ai pas assez guette lui satisfait là. Il a fait son étude en soirée en Angleterre. Toutes les semaines il parcourt comment il fait pour son nous. Well, it's a dream. I never thought that Amina will be, because she had many. The proposal for the nomination to be president of Mauritius, she was not in Mauritius. She was in Brazil for that talk. Okay. For that talk for 14 or 12 minutes. And when she landed on Tuesday morning, the press people phoned her whether she was aware that her name has been everywhere on the lips of Mauritians, that she will be the future president. And she answered, I just landed, I don't know what is the proposal. And she asked my advice. I just only tell her, those who dare succeed in life. Yes, true. Father, well, as father, I'm very proud. And I always support her in any moment. Passionate, devoted, visionary, realistic and humanistic. This is how we would certainly describe Amina Gharib Fakim. At 54, she has had a rich experience and is now a fulfilled, radiant, happy woman, enjoying most serenely the exciting life she treasures above all things. Greenwich, this is your chance. The true leaders, good endeavors, you with all my heart.
Good luck. इंतज़ामिया ने डीटी रेंज सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। I am Omar, mentor of society here at University, sporting festival campus, cricket, basketball, table tennis, FIFA, in-house fitness free. Participate, be soon and Greenwich University. Assalamu alaikum everybody. I'm Zawais, mentor for the society at Greenwich. I would like to the university. In this society, have sessions. Your business. We are going to discuss. We are going to have guest speaking in which we are budding on to share their with you. Our main is going to be where we invite you the business them in front of investors. Winner will prize or to incubate to your to this society. Show. This is the purpose of, so is the purpose of society. What is art? It is all about songs of human stories. We are complicated, connected stories. The purpose of this society is into life stories and of and people of. Welcome all of you to Greenwich University. Forward for your the society. You are very here. This is Ali Jalan for Greenwich University Society. The vision of the society is to provide opportunities in scenarios of entities to foster critical wisdom skills. The society is responsible for the conduct of universities for more than one part of the society, and will have some of you are passionate worldview part of the moving forward. By the way, welcome you all here. Thank you. हुसूल नकज़ बिज़र ये मकतबा है हर बशर के लिए CSR सोसाइटी में आप कल कर लिए कुछ करने का हौसला रखते हैं, तो आइए सोसाइटी वो नहीं किया है इमरान में खुशामदीद you love and to work aims to help
Identify and then explore paths you to follow your career, you to your skills, seminars and corporate sessions. Join us now, fulfilling journey. In a world which something much more a collection of it's this that Ms. Faraz Iqbal for the photography industry. 3-4 months planned a lot of that will be under this contest photography trip help you guys understand and taking the picture. We also have planned photography you'll understand in what is good, what is good, and get a chance to yourself. Forward to in the let's have. Thank you. It's my childhood and to speak public is that this when you put your situations where you chat and you push your limits, the purpose of society to refine your skills, your and peers and support so that we together. I look forward to all as Mauritian working with future. Thank you. Hi, I'm the Rani Mentor Society. Because of this platform provide platform. Greenwich, I am इसमें बहुत टूर हूँ सोसाइटी और मैं आता हूँ जिन किया है वो फ्यूचर सोसाइटी है हर करती है सीख और से और सोसाइटी Hi, Javier. Development style graduating for their
for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then, so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Like wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they're very helpful in communicating that with us. Also, university was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot, and all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Hosei University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were live like different cultural and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Mr. Ali Jilani. He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan,
with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Tilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic, trade, and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013. With the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through neo-imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance use to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, 2 steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level. To ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the 4th industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few
Technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. My name is Haider Javed, a graduate of 18 years. I've been in the working for 5 present. I'm working for I'm heading the corporate and I would like to face the knowledge given to me university from day I entered the market. My career post structured and of their own kind, which were promoted in Pakistan. I was able and excel form transaction knowledge university and tech, which was by the teachers were professors from the finance were from the all head whoever to Greenwich. A part of Greenwich, like you just say, whatever I am, so I would मेजर जनरल इफ्तिखार में तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan and I'm back with another show, another guest. And let me introduce my guest for today. Well, he is the founder of Fuel Your Business. He received the Man of the Year in 2019 in Business and Social Enterprise. He has won several awards for his public speaking skills. He's also the international mentor at Mentor X. In fact, that's not all. He's also a licensed meta coach and he's a meta NLP practitioner as well. The very warm welcome, Mr. Atish Bagola. Welcome to the show, sir. How are you? I'm very well. Thank you, Mary. Thank you for such an introduction. It looks good when you read it, but when you say it seems very long. Well, absolutely. You totally deserve it for all the wonderful things you've been doing over the years. And, they say that hard work doesn't go to waste. So naturally, the things we've been doing for over the years, and now
people are benefiting from the wonderful things you're doing, especially being a life coach, being a public speaker, a motivational speaker. You change lives every day. So that's an additional add-on, when you can do such great things. I mean, yeah, definitely. By God's grace, I can say that God has blessed me blissfully with so many things, so many warm blessings from so many people. And, I like saying one thing, it always starts with one conversation at a time, and the world gets changed one person at a time. So yeah, it's a real blessing to be around here and to be on this planet, and to be enjoying every moment of my life, be it good or bad. I just take it bad. The world is a show. We have to play the actor. Absolutely, very well said. And that's the whole thing about life. You have to stay positive no matter what comes towards you. Talking about the positivity thing, we all know we're stuck in this COVID-19 situation. How is everything at your end in Mauritius? Well, so far, we've got we've got exactly 332 cases of COVID. And so far, inshallah, thanks to God's blessing, we have no further cases. And I believe we are taking all the necessary sanitation, hygiene precautions. And slowly but surely, the world is starting here in Mauritius, and work has started. Things are getting almost back to normal. But yes, normal is something else. The new normal is again something else. Absolutely, very rightly said. The new normal is something else. So how has this whole time in this COVID situation changed you, or how have you been spending your time? How is life and work affected? Well, to be honest, it hasn't really affected me as a person, but it affected a portion of my mind, a portion of maybe of my soul, if I can put it that way. Because being a public speaker, I'm used to being with people. And now I'm getting used to being with technology, to people. So basically, it's a drastic change, if I call it that way. But as a person, I'm still the same. But maybe a few of my qualities have changed. I'm more IT conversant nowadays. Wow, I never knew I could be that IT conversant before that. And I had to grow a few of my skills as well, to be honest with you. So aside from technology, but the pace of my speaking, being in front of people, and then being alive on a screen, I'm so used to speaking to real live people in front of me. The flesh and the blood. But now it's like hard screen, but I'm just making with it. I have to. So in any case, I have so many people around me whose life have changed. In fact, a few of my ex-colleagues, I would put it that way, who used to work in a firm, some of them had to accept the fact that they had to reduce their salary. Why? Because if they have to stay alive and survive and get inside the survival mode consistently, they will have to change with time. And change is such a drastic stuff, it's such a thing in itself. But politically, many things have changed as well. Tourism has gone down. Obviously, it's throughout the world. But I'm very glad when I'm going throughout the city this past week, as many people are actually giving food for free. Yes. A charitable act that I wasn't used to see in a city. And now people are moving around in vans and vehicles around and giving food. Wow. A bread a day saves the lives a day. Wow, it's beautiful. Indeed, it is beautiful. And we've seen around the globe that whenever some difficult times occur, the whole humanity comes together, no matter what religion they're from, what country they belong to, what color they have. They all come together. And that's the most beautiful thing about humanity, that when difficult times comes, they all stand together. And that's like the most beautiful sign of them all. You mentioned the change. So definitely this new normal, as you mentioned, will require a lot of adaptation. The trends of working, the trends of business, the strategies of organizations, everything going to change a lot when the new normal will come. So how do you look at it?
Well, that's one of the actually beautiful question, Umair. Thank you for that. One of the things, and this is why actually last week I created something on Facebook called, I just created the page for it, but the idea was always there, doing it through my own workshops and seminars. It's about fuel your business. Now, be it a big dog organization, I'm not paid to really advertise big companies, but Google, Facebook, StreamYard, Zoom, all these big fat organizations now are turning really to some hardcore reality, and that reality is being human through a screen. And this is something that we've seen throughout the course of time. People saw advertising promotions through videos, live shows, and so on. But really talking to people, speaking to people using words and images, we call that the visual and the auditory are being used much more. However, I think that one of the things that we will have to do is to be not comfortable, but to get a little more comfortable in our uncomfortable zone. So I would say that before this COVID pandemic, humanity in general, we were in some sort of, I would say, comfortable zone. We know we had to go to work. We know we had, like, for example, kids, they knew they had to revise, and private tuitions were there, private schools were there, university were there, life-to-life interaction. But now the whole scenario changed. We're in fact talking about a massive change, a change which I call abysmal change, from in person to on screen. And I think that's the kind of change we're now talking about. It's a huge scale, Umir, to be in IT interactions. Absolutely, it is. But then again, I always mention this thing that around the globe, when we look at the large level, especially in the developing countries, even in Mauritius, not everyone is not comfortable with these platforms. Everyone is not ready to cope up and adapt to this IT things. Talking about the people who don't have the resources, people who are not that privileged, people from the rural areas, the workers on the daily wages, they have the issues, adapting to this online. So when you talk about people who are educated and who have the platforms, who can easily adapt, it's good for them. But we have to carry the people who actually needs to be carried right now, because they don't even have an opportunity to use these IT-based things. So as people and as a trainer, of course, what would you suggest? How can we as humanity, as a group, as people, carry them together with us during these testing times? Well, again, I think today we are in such an era, at a point in our time, that I believe that every person, at least I'm talking about here in Mauritius, they have a smartphone. Maybe our old-aged people who are above 60, 65, in villages here in Mauritius, they might be having some real troubles now, because during confinement, they were not able to get out, to move around. And, when you come at a certain age in your life, mobility is such a problem. You want your heart to beat, you want your blood to be pumped inside your body. Okay, you might be doing some household chores, but it's not the same as going out, maybe paying your bills for electricity, for water. So for them, definitely, talking with a family has been, I think, one of the best things that happened to them. Why go far? Take my example at my home itself, my mom. I mean, I go out from the house at 7 a.m. in the morning time. I go to work, and then I'd return home, obviously around 6 p.m., 7 p.m., sometimes 8. My interaction with my own mom, who is above 65, has increased so much within this pandemic lockdown period. I'm having to, I like really having a food back again in my mouth. And I go back to my younger days. I'm not saying I'm old, but I go back to my younger days when I taste the salt, I taste the sweetness, I taste the spicy thing that she does. And I think one of the things that has happened really, really good, we say a coin has two sides.
the bad side, we are seeing it already in the world right now. People are not there. So many people have passed away because of this virus. But look at the other side. People like me, who, inshallah, we are getting blessed by our parents, spending time with them. Before the door of life closed on them, at least I'm accompanying them, at least her, and I would wish all the people do that. I was having a chat with one of my friends, and he has 2 kids, and he was saying to me the other day that, you know what, Hatish, most of the days I go to work, and then my wife is at home with the kids, and both kids will actually watch TV almost whole day, and then they do their homeworks, go to school, back again, TV. And most of the times they watch the French channel. So actually in Mauritius, a lot of people speak in French. English as well, not so much, but then our local language. But French is very, very common. So the other day he was home during the confinement that happened just 2 weeks back, or maybe last week. And his son, 8 years old, told him, "Dad, so why are we seeing the meteo for Mauritius? Why are we not seeing the meteo for France?" So my friend, his dad, said, "Well, son, we are in Mauritius. We are just looking at the meteo, the service. How is it going to be, the weather?" The son just replied, "Dad, but are we not in France?" So an 8-year-old kid watching TV whole day, the French channel, thinking the entire life till he's 8 years, he's in France. And even when he goes out, he still thinks he's in France. Wow, what a discovery. I never heard of such kind of story. And it's a story worth sharing, that kids, even if they're at home, through TV, they are learning so many things as well. It's not that they're just glued to the TV, but they're also learning things. They know what is happening around the world as well. So yeah, the question is about adaptation, I think, at the end of the day. And that is something that's, we have a long way to talk about adaptation, Umir. Absolutely, and I totally agree to this, that in fact the youngsters these days, everyone who's getting born after the 2010s in this technology era, they're very bright and they're very sharp. Now the attention span and the things that they're adapting and they're absorbing at their early age, from by the time they're born to the age of 5, they have the capability to do wonders. So that is the time, you of course being a trainer as well, whatever they learn, whatever they see, whatever they experience, builds their personality there and then, builds their confidence there and then. So it's very important and essential for even the parents to give them that freedom, to give them that space where they can explore themselves and where they can move on to, be something that they really want to, rather than forcing them to do things that they want them to do. So that's also very essential. Exactly, that's part of the piece. Very correctly, Umair. That's also an integral part of the personality as well. So we say that from the age of 0 to 3 years old, that's the maximum amount of neuroplasticity, which is the pathway that the mind, that the neurons, the nerve cells in the mind, in the brain, functions very well. That's a lot of memory cells getting introduced in the head of the kid. And as they move on, as a meta coach, we say that they are experiencing the world, they're experiencing the territory. Because you see, the map is not the territory. So the map that you and I, we both have, are so different. So my map is a territory for you, and vice versa. So I believe that as a trainer, one thing that has to happen really now is the relationship that parents have with their kids, to define that relationship very, very clearly. And it is now time than ever to really go and start narrating stories, beautiful stories, folkloric stories, stories that the kids can listen not just before bed or during bedtime, but stories where they can learn about, okay, how our ancestors used to live, how ancestors used to, in a way of saying, breathe, what were their activities,
and that life should not be taken so at ease. We have to show that kind of gratitude, teach them humility at the end of the day as well, on the personality trait that yes, Umar, you're talking about. Absolutely. And in addition to that, there's one thing that we notice a lot in the world, especially amongst the youth. We're noticing that there's a lot of depression. There's a lot of frustration in the youth around the globe, not just one country. Young people, at the age of 12, 13, 14, they are diagnosed with depression. There's less clarity of mind. They're very confused. They're very scared of their future. What has caused this amongst the youth around the globe over the years? What is that thing, and how can we overcome it? Because if our youth is affected, our future generations are affected. Very correctly said. One youth affected is a whole generation affected. Well, let's get back to this question about youth. When we talk about youth, we are talking actually just this, we call that this barrier between very young as a kid to getting slowly into becoming an adolescent, to slowly becoming 18 years old, a very young adult, and then to really becoming the adult and then the old adult, if I can use that word. Okay, so what's happening to our kids nowadays? Right. Think clearly. In days gone by, I would say in my days, when I was a kid, I used to play with the soil. I used to feel and smell the soil. And there was no problem if I didn't put my slippers on. I would still walk. Yes, my mom would maybe come and tell me, be careful, you might get worms. But guess what? It built my immunity. Let me talk about immunity now. One of the biggest problems kids are having is they all almost have bottled water. It's like they have sanitized their digestive system, if I can put it that way. Whereas in my days, we used to really go towards tap water. At least in Mauritius, you can have your tap water without any problem. So you can either boil it when the weather is bad, or you can just have a bottled water. But most of the times, we have tap water. So we have a very strong immune system here. And basically here in Mauritius, I'm talking about Mauritius principally because I live here, I understand the system a little bit more. So we have like 2 seasons, winter, summer, nothing more complicated than that. So our body, our human body has adapted to these seasons. But as kids, we see that parents now have to work more. We see that suddenly parents have started realizing that financial literacy is a big problem in this country, or maybe around the world as well, it's a big problem. So because financial literacy is a big problem, parents find the necessity to go out and work. And what we mean by work is offering a service to a company, meaning that you have to spend time away from home, spend time away from kids. So let's look at kids now. Kids stay at home, go to school. I think the closest they get to are their friends at school. And they might also consider their teachers as parents in some sort, authoritative parents teaching them something. So as it is, I'm not saying parents are not doing their job. In fact, they are accomplishing a part of their duty to grow up the kid. But there's more than that. There's more than that. For example, spending quality time. So let me explain quality time now. One example of quality time is telling stories to kids about how they, the parents, used to spend their childhood, how they used to respect their mom and dad, their grannies, their forefathers, their grandparents, and ask the kid through the story, you know what, you could be doing better than me. I was a bit more naughty than you, but you could be less naughty than me. Now, this is a beautiful anecdote, if you can teach kids this. Number 2, we see that nowadays the world seems like in a rat race. Wow. Maybe not even rat race, it's a jet race. So in my days, it was called rat race, but now I think it's much more jet race. So there's now, I think every kid nowadays, the modern kids, urban kids, I would call it that way, even in rural areas, kids have a mobile phone. Why? Looks like it's a substitute for a parent. Looks like it's a substitute for a grandma.
looks like a substitute for reading. They put their mobile phones everywhere. They think taking pictures of themselves will prove the worthiness of themselves. And I'm actually here talking about those young girls, about 15, 16 years old, trying to find their identity. And that's a big problem. Talking about girls, Amir, Right. how many countries do not still allow girls to voice out? I mean, what I like is that in some Bollywood and Hollywood movies, at least we're teaching that our ladies, our future generation, the forebearers of humanity, do have and certainly needs to have their chance to speak, to voice out. It's not only for boys to voice out. Genetically, boys are much more aggressive by nature. It's very normal because we've got the genes of a caveman, and we had to protect ourselves. We had to go in that fight and fight, fear zone, run away or run after animals, things like that, or danger. So, but women used to stay at home, fending for their kids, giving the milk they need, giving the warmth of their arms around the kid. And I think that's one of the reasons why the female generation, the female species that we have, whom we have to respect so much, they need to have a platform to actually say much more about themselves, about how they feel and so on. So kids nowadays lack this kind of fending. Certainly. Totally agree. Totally Other agree. thing I would say, Umer, is because of this jet race or rat race, there is a tendency that parents in general, they feel that if the kid doesn't pass the exam, then their self-worth gets diminished, their self-esteem get diminished. And most parents then add this sort of pressure to say that, my kid is not doing brightly at school. But one thing we have to know that Albert Einstein failed his 6th grade 2 times. And potential is something else. Learning is something else as well. And implementation of learning is something else. Last word on that, Umer, is entertainment, I would say. How are kids now entertained? As human beings, we need to be entertained by something or by an event, by anything. So kids nowadays, because they have the easy way to go inside their mobile phones, chat to their friends, it has become the newest form of entertainment. Now, with COVID, that could be the potential, I could say, danger now, because this is going to magnify a lot now. Earlier, they used to go to school, but now they're glued to the screen. Now it's the friends who've become families. It's the friends who've become the co-host of their life. So we have to be careful about that. And that's why I would say we need to take this pandemic in the most beautiful way, obviously by not forgetting that it's a pandemic as well. Right. So very beautifully explained and with a lot of details. I'll just summarize this, and what I think about it is starting from point 1, that I totally agree with the fact that because of this jet race, the family time has been reduced. You're so much busy in your daily life trying to meet your ends that you forget to live that little things in life. Spending time with family, having dinner together, talking it out, how you spent your day or how was your day. So that family time matters a lot. The second thing that you mentioned is, be connected to your roots. That if you're connected to your roots, if you know what your ancestors, how your ancestors have spent their time, how they built whatever they built, what were their struggles, so you'll have the sense of realization. So that, again, beautifully quoted. And once again, that in this generation, things are very easy for the youngsters. So if they, connecting it to the previous point, they have the realization and the actual worth of how things are done or how things are made, I think that would create more awareness and realization in this youngsters. So very rightly said. We'll include some messages now, and we have the first message is from our Honorable Chancellor, Madam Seema Mughal is here.
Welcome, ma'am. And she says, Atish, looking forward that you take communication skills of our students in Pakistan as well. Seema ma'am, thank you so much for getting here and listening to us. Really, you can count me in any time. When it comes to education, anywhere in the world, you'll tell me. That would be a very, very warm pleasure to be. Yeah. I'll include some more messages. We have with us Mr. Imadul Kareem. He's also a brilliant teacher at Greenwich University Karachi campus. We have with us Tariq Iqbal. He is with us. We have with us Manur Faruqi. She says, yes, immunity is built by exposing them to the environment and building immunity to fight with the bacteria. The point you were quoting earlier. We have with us a student provost, Mr. Naveed Mughal, and he says, always a pleasure to listen to you, Atish. I totally agree to that. Thank you, Naveen. Always a pleasure to see you as well and speak to you as well at a point in time, definitely. Oh, we have Rab Nawaz, and we all love Rab Nawaz. He says, one of the best faculty member of Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. And I totally agree with that. I think Mr. Rub is a work alcoholic. He never lets anything down. I don't even know if his agenda is, if there is something in his agenda, on his agenda, which hasn't been done. He's a super jet. Indeed, he is. In my previous program, we were talking about it, that at one position, there are 5 people, and at one place, there's Mr. Rab Nawaz. And every time, Rab Nawaz, he'll outplay those 5 people when it comes to working. So he's such a workaholic and wonderful gentleman. So moving on with our conversation, we mentioned the roots. We mentioned the family time. Now, I'll take that personal example. I'll share a personal example of mine. Like, I was really close to my father, and we were so close, and we talked so much about his life, how he spent his life, the exact thing that you were talking about, that I actually relived his childhood, his early ages, his life. So I actually felt like I was there with him. Confident, I'm more realizing, and I've got more sense of responsibility. All because I was really close to my parents. I spent a lot of time with my parents. So I totally agree with the fact that the gap that we are facing in these days, these jet race days, that the parents are unable, though they want to, but they're unable to spend that quality time when required. And by the time the parents get old and they want to build that connection, the gap is too much to be covered. So we need to fix this thing before it gets, gets the space bigger. Yes, this is one of the phenomena that we call the generation gap. And well, we want it, we don't want it. In my opinion, I think generation gap is in our mind, in our parents' mind. Now, I would wish I become parent soon, but because I'm not yet. But there's one thing, I still have my parent. And I have to be honest that sometimes, and we have to be human as well at the end of the day, that sometimes as a young person, you are trying to find your happiness score in the span of time. And then you're looking to make a name for yourself. You're looking to make a life for yourself. And you're really using your survival genes almost every day to do something around you and for you, hopefully for others as well. So what happens in this time is my mom, for example, is at home. Now, when I come back and, for example, on a weekend, I'm trying to have a conversation with her because our parents nowadays, imagine our 60, 70-year-old parents, or even grandmoms, granddads. I mean, not all of them are like that, but some or many of our parents, we do have some sort of, I would say, territorial differences. Now, I'm very, very clear here. It's territorial differences. I think as young people, there is one thing that we will need to understand, and
This is a presupposition that I would like to infuse in the mind of as many young people as possible, that the map is not the territory, that the map is not the territory. Our experience is our own visual that we live, is our own auditory that we hear, is our own kinesthetic that we feel. So our life has its own experience, has its own feelings. We have our own thoughts that we've built around our set of beliefs around ourselves. Now, the same is for our parents. They have their own experience, their own feelings, their own kinesthetics, their own thoughts, their own set of expectations. So when we go this generation to that generation, there is that gap. Now, because we know that there is that gap as young people, there is one thing that we will need to start doing as young people as well, to have a word called acceptance. Can we accept that there is a difference? Can we have the courage to accept that they are the ones who raised us, who bred us, who made us however we are right now, that we are safe, we are in true health, all because of their efforts. So if we have that dose of acceptance, the whole story changes now. The gap starts to get filled by acceptance. Now, another word for acceptance in my mind is tolerance. Can I tolerate someone else? Now, that someone else, what picture that someone else holds in the movie of my mind? So what film am I playing? What reel am I playing in my mind about the other person? And whatever that reel, the end result is, positive, negative, even if it's negative, well, can I tolerate that? Because the map is not the territory. And if I walk my life with the level of acceptance that, hey, this is another human being who raised me, the picture changes. But let's get back to your question now. This is one side of the story. The other side of the story. If parents could understand that they have got kids who are now grown up or growing up. Now, growing up is a big, huge process. If parents start to think that, okay, my kid has grown up now, they need to show responsibility. Ah, what a word. Responsibility. For me, it would mean the ability to respond. That is responsibility. So they know their kids can now have the ability to respond to the pressures of the world. They will need to know that they also need to give time and space for that kid to get used to that world that they never went through. Exactly. Because this world is a changing world almost every day. So I hope I was around that concept. Absolutely. Yes, absolutely. And this actually applies the adaptability thing we were talking about, that the world is changing so rapidly that even the parents have to adapt and understand to the things. But at the same time, I would add on to the point that even the children, they have to realize, they have to respect. For example, if when I was born and I was an infant, I was helpless. I couldn't even move. I couldn't even eat. I could not even speak. Right? So if I'm here today in a position, that is all because of my parents. And no matter what I do in life, I can never repay them back. And that goes to anywhere around the globe. How a person starts walking by holding the finger of their parent, their dad, their mother. How the mother cares for a little child. Like, that is so beautiful and that is so amazing that even if we spend our whole lives, we can never repay back for that little favor. But what we can do, that if we're lucky enough to serve them back when they get to their old ages, I think we can never repay them, not even 1%. But at least we can have that sense of realization when you said tolerance. So we've seen so many old age homes now. We've seen so many cases where as soon as the parents get old, the youngsters, the children, they take them as liability. What if the parents call the little child a liability and never let them grow? So we have to pay back. We have to have that realization. The respect, the understanding should be mutual. And that's how we can reduce this gap
and build our relationships in a much stronger and better way. That's what I personally believe. What would you say on that? Well, I've got a beautiful story about when you say this old age homes. So there was this man who was a well-known personality in the world, and he used to receive a lot of letters from different companies. Okay, there were some sort of launchings to be done, so he would used to come and cut the ribbons because he was such a big personality and people used to respect him. Now, one day he was at home, and during his breakfast, he was opening a letter that he received on the eve. Now, as he opened the letter, he read the few words. He read it, took a blank page, and started writing. He wrote a letter and sent it back to the old age home. So actually, an old age home sent a letter to the person saying, "We would like you to come for the inauguration of our facility." We call that geriatric facility. So the person now wrote back a letter as reply. And when the manager of that geriatric facility, old age home facility, read the letter was like this: "The day you close the home, that day I will come personally to do the launching and cut the ribbon back." Wow. So if I continue, I would say that what the person said in very simple layman's language, the person replied to say, "You know what, don't invite me for the day you're opening an old age home to cut the ribbon. Invite me the day you close it, I'll come and cut the ribbon." So I think I would do the same thing because I know the story now. This is another story by itself. We can never repay that. I also believe that just like we have breath in our nose, just like we have heartbeats in our heart, just like we have blood in our veins and capillaries and arteries, we also need to have that genuine feeling of gratitude with us as we move in our life, be it in front of our parents, be it with our partners in life, be it with our siblings that we have, friends that we consider friends, even our enemies if we think we have enemies. Because we never have an enemy. It doesn't exist. It's just in your mind. Actually, who is an enemy, if you can have a chat about that very quickly, is just a person whom you do not have the belief that that person has the capacity or capability to be in the subset of friend. Means that you've closed the door and characteristic for the friends. So you have an avatar for friends. But that's not true. Anybody can be your friend, even if those whom you do not like, or you don't like one thing about that person, and you say, okay, that person is my enemy. It's so wrong. You just mentioned something a few moments ago, Umir, that with COVID-19 now, with this global pandemic, I think, and everybody would say that humanity has become humanity. So the one has learned the oneness in itself. Absolutely. So, and you mentioned gratitude because since we're talking about understanding people and all the relationships, it's not just limited to parents and children. We have relationships everywhere, between co-workers, between friends, between partners, between colleagues, and everywhere, even amongst the students. So what we need to understand and realize that this very strong word called hate, and how easily we use this word, that we hate this, we don't like this, we don't like that. It takes a lot of heart to use this word hate and actually apply it on something. This world is full of acceptance, as we were just talking about. If we just accept things the way they are, if we just try to understand the other person, walking into their shoes and trying to understand why they are reacting, why are they aggressive, or why are they upset, I think we will never react back. Our tolerance level will increase. And this is something that we all need to do. The reasons we do these kind of sessions is to spread the awareness. The reason we talk about these topics, because we need people to talk about these things. Because the biggest problem in the relations these days, people don't talk, they assume.
they put their feelings into social media statuses rather than calling up the person and clearing it out. So what we need to do, as you said, we need to talk it out. We need to express our feelings. We need to show we care while we are alive. No use of putting flowers or giving gifts to the family of the person who passed away. Do it when they're alive. So this is something very important that we need to realize. Yeah, very correct, Umer. Again, I have actually three things in my mind as you spoke, and I'll just get them one by one. Number one is trying. What a word! I honestly would like to meet the person who invented the word to try. Literally, it means to make an effort. Okay, but most people we use the word to try. Now, here is one beautiful thing: no one can do by trying. You can only try. For instance, everyone who's listening to this show right now, and even you, Umer, try to look at the back. It will never happen. Because I'm not saying look at the back. It's a direct command. Look at the back versus try to look at the back. Because by trying, you will just keep trying. You will be forced, but then you won't look at the back. So you just have to go on a directive command. Look at the back. Okay, I'm trying to do my homework, Mom. Don't try, my son, do it. I'm trying to work hard in life, and I'm trying everything in my life. Well, don't try, my boy or my girl. Please do it. I'm trying to build an empire in my business. I'm trying to put my business alive. Don't try. Do it. So that's the thing about from trying to doing. And this is something that we call from the knowing to doing gap. So in whatever context we apply it, we have to do. Now, the second thing that, yes, I heard you saying the word hate or any such words like that. You know, there's something that I personally say, and it is something that comes directly from me. Why react when you should not even act? So most people will react to circumstances. We react to situations, to people, to things around us. We react to ourselves, actually. But then why react when you shouldn't even act, but just absorb whatever's coming to you and feel free in the abundance of life? Just accept that we are just one with oneness. There's nothing more different from me or she. Whatever the eye sees doesn't mean that it's different. It only means that that's a different form of me. So if you think in those terms and wake up every day like this, in this sort of state of mind, I guarantee you 21 days is enough to change our perception in life. So I'll now go on the third point, which I was thinking is we all have our differences. We all have our dislikes about things. But the moment we believe in the power of abundance, and I'm just not using words for words, I'm actually asking people to feel that word. They can close their eyes to feel it during their breath. They can close their eyes to feel it in their heartbeat or maybe on their skin. But to feel abundant, even if you don't have a morsel of food at your home, or even if you don't have tap water, something to drink, even if you don't have the kind of money you would like to have to buy the next bungalow, maybe the next Ferrari, whatever you want to do with with money, but just feel that you have it, because you have it. It's just that you didn't touch it. So if you walk around with those kind of mindset, Umer, you know what? My next neighbor would be a happy neighbor. And if all happy neighbors around the world start becoming happy, we have a one global world in its own time global. Absolutely. And I totally agree to this, that mindset defines everything. How I look at myself is what's important, because this world is full of negativity. And if you react to that, I'll share a little story. And then, of course, we'll move on, because as much as I'm loving this conversation, we're running out of time as well. I look at it this way.
the world is like a boiling hot water, right? And there are three kind of people in this world. One are like the eggs, hard on the outside but soft in the inside, right? So when Right. you put that egg into water, that is the world. That thing that was hard on the inside and soft in the hard on the outside and soft in the inside, it becomes hard on the inside. So when you're hard and this boiling water, that means this world, the negativity, the hate, and everything, the pressures, it changes you on the inside. It makes you harder. It makes you, it's make your heart like a stone. The other person is like a carrot, hard on the outside, but as soon as they enter in the world, the boiling water, they turn soft, they become vulnerable. And then the third sort is like the coffee beans. When they enter the boiling water, they don't change, but they make the boiling water more meaningful. It changes the Yeah. scent, changes the taste. So it's up to the people what sort of personality they want to be. The egg, the carrot, or coffee beans. I would like to be the coffee bean any day. Make this world a better place. Give more meaning to life and to people around me. So, summarizing that little story, we always need to stay motivated. We always need to back each other up. Rather than pulling each other down, we need to support each other because life is short and we can make the best of it while we are together, spreading love and spreading affection. Definitely, Umer. So very beautiful. Well said. In fact, that topic about boiling water, they say that if a person has to change for the better, and because water boils at 100 degrees and not 99 degrees, but the moment you keep heating water, it becomes 98, 96, 97, 98, 99. It is only that one extra degree Celsius that boils water. And I think everyone needs to find their 1 degree Celsius to make them change and transform, but for the better. And there you are, yes. Right, absolutely. So always I say one thing, expect miracle, believe in yourself, stay positive, keep smiling, and accept the the hardest of the challenge in life with open arms. Because when even if we look at our ECG, our heartbeat in the hospital, if it's flat, that means you're dead. So we need ups and downs in life to learn. We need ups and downs to stay alive. So I loved this conversation, and as much as I want this to go on, we're running out of time. Atish will definitely continue this session. It was lovely having you and discussing people, their behaviors, and how we can turn this world into a better place. Before we leave, I would like you to share your feelings and your one word for Greenwich family. Right. First of all, I'll share my word for the Greenwich family. First, the Greenwich family, Greenwich University, you have been one of the kind that I will continue to support because I believe in your endeavors. Mr. Rubna was personally whom I know. He's working so hard to make this one with oneness. And I believe that Greenwich University is certainly doing a lot of things. I mean, really out of ordinary sometimes. I have been on your campus in Mauritius and I have seen things. I have seen your love for education, not just because you offer this service, but really this love for education, for what you do and your endeavor for what you do for those children who want to actually have a better and brighter life. And thank you for what you're doing. Now, coming back to the show, Umer, I want to thank you for being such a nice host and someone who's so energetic from your voice itself. I would wish I would come one day next to the other show if the God bless. And I've enjoyed it. And my one last word about everything is contagious. Yes. If the world can find a virus to be contagious, well, so does a smile. There you are, Mir. True. Absolutely beautiful. Thank you so much, Atish, for your time. We'll definitely have another session because we need to talk a lot about these things and spread awareness and make it real. Because if you keep talking about it, I think that's when you increase the sense of realization.
amongst people. So I wish you all the best. Stay safe, and we'll definitely get back together again sometime soon, inshallah. Thank you, man. So, Thank guys, you. you heard Mr. Atish. Absolutely, you're most welcome. So you heard Mr. Atish Bagola and the beautiful things he had to say. We discussed life. We discussed how people behave, why they behave like this, and how we can make this world a better place by just understanding each other, and rather than reacting and acting, just stay and understand why things are happening the way they are. So we'll definitely be back tomorrow with another session, another topic. You can always leave your feedback in the comments, or if any topic you want us to talk about, please let us know. We'll be back tomorrow, inshallah, with another show, another guest. Until next time, stay safe, stay home, take care of yourself and your loved ones. Keep smiling, and Allah Hafiz. Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing, and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Dear students of Greenwich University, this is your chance to shine. Show us you're the true leaders of tomorrow. Good luck with all your endeavours. Thinking of you with all my heart. Good luck. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hi, I'm Professor Serge Riviere and the Director of Research and Development. I wish Greenwich University, Pakistan, the very best of luck, and I wish all those graduating on this graduation day the very best for their future careers. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा।
Assalamualaikum. My name is Kareem Theli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream नाम सुना होगा आपने. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone. And once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point, because being an entrepreneur is not as easy as it seems. आप लोगों ने कुछ सक्सेस स्टोरीज ही सुनी होंगी, लेकिन हम उस सक्सेस स्टोरीज को बेंचमार्क बना देते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि यार इसको देखो हम इस लेवल पे पहुँचें. तो उस लेवल के पहुँचने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन is the time you come up at that certain level. So I would like to thank you, Greenwich University, once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today and also making me part of the Greenwich family. Thank you. It is always photography much more collection of it's the pictures. The name is a mentor for the next I have planned events that under this have photo contest in photography, help you understand and taking the picture. We also have planned photography. You'll understand what the body, what is good, what is good composition, and you'll have a chance to so to the let's thank you. SB15 University in and experience and memories after so taught 8 years working at the university. My good friends along with my good friends intervals thank once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा. यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा. तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल हैं. नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें. हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी. यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा.
political forum. Need to the idea SDG at its institution innovation at local, regional, national level, accelerate implementation of 16 mode in all of approaches. It's essential in order to tackle challenges such as inequalities, economic, climate change, rapid disruption. Is to rate this institution affected tested to mount response effective or distributed and state and cohesion resilient social the democratic building and government as key on the SDG. Vulnerable, exposed to it, and face more in a just normal. Ensure the are and affect the poor, and for this governance is. Уважаемые господа, хотели бы сделать по теме moderator, aka state SDG. The Russian also developed COVID on technical platform them as being used being 5 billion people ready for with other future to put to the pandemic to achieve. Bon, de l'expérience. In French. Mr. President, ladies and gentlemen, the COVID-19 had a spectacular impact of the world's to also provides us context in sustainable development partnerships governments at all society, university world, organizations and companies. We also approach based on build more fair and inclusive. No one. Merci. Thank you. We believe G7 is an important pandemic. This SDG international partners is that it's after. We live in strange times. Out of a pandemic, measures in charge has been even harder. Times when transformative counter difficulties are. This decade remains in the pursuit of home and who has recent steps for the integration of equalities in its cooperation and uphold law is into EU and external
The pandemic has on governance. Will continue progress on the rule of law. Progress are built on justice. Nepal has international ethos. This process transformation. I'll start with my ambassador on the new social to prevent simmering camps. A crucial out of only has caused inequalities that were in existence, but not so. And that has of grief of in the end of social this social act. I think it covers all the SDGs medicine. Emphasis. Try the leverage and influence the national community in order to build fiscal capacity rather than undermining. Two ways those alas have been in the past the ideology of freedom, and that is reducing or on luxury, and second, deeply entrenched resistance of the international to a good example taxes and when they are developing, and let we mobilize sources. Governance, of course, is government, and there I think the principle very clearly crisis again in the climate that equal right and to a safe principles that deeply embed national content around the world be upheld. It's not a constitution have to be on paper. Has diverted investment in health, corruption, government spend less gas in among also among the UN Secretary out same story in the same boat of the campaign of account SDGs, Contraloría, Supreme Court are committed. At the same time, the crisis that institutes that transparency, accountability are important. Supreme institutions can carry at all levels essential task assessing how money is used and whether the making are transparent, sustainable. COVID-19 elevated our societies to crisis and exposed macroeconomic governance. 40 out of countries are experiencing unprecedented to GDP rate Pacific alone. Yet, as usual, as almost 6% of the supply by multilateral international finance to countries in loans amounts or debt relief. Inequality 1%, 0.6 billion is worth
54 than the combined Asia Pacific countries for the pandemic. So rather than countries for processing address illicit tax and neoliberal investor to strengthen systems in asset privatization, and yet 6 out of IMF negotiations 2020 further belt that could result to public health protection. Such issues have escalated into and environment. As a result of progress, hunger, education, water and inequality, action, institutions reversed. Transformative tract urgent action to inequalities within countries, relations and political dismantling governance and climate justice. 19 has accelerated in light of the pandemic, health, social security, and progress 2030, such as COVID-19, change, diminished and continuing economic, judicial inequality. Our call for while some care, medicine, many suffer, while human rights are punished and means that societies will not know. These are well, but civil society role in advocating and well-being, inequality, inclusive, broad agreements that we need global tax rules. We still don't have an inclusive those rules in taking on global being led by 7, the OECD, also known countries, assaulting and do not reflect of the world's poor, but also not effective the world's relations and either and do not global consent. Comes to we as UN experience many and negotiations. People are agents of peace. Equal treatment should occur. From to active. This is why working on these work debate negotiations was agreed upon as an SDG so-called test to motion into by the Secretary General never too young too old to campaign member states to advisory international and the link change as well as the concept of social justice. Governance standards and rules in taxation, financial must under national achieve and include societies. The implementation of the security agenda, the national community is back on a plus
seen and even progress for the civics, human rights on the rise, trust in deepening, are widening, blossoming programs in many countries feel left behind. Continue to approach challenges, better prepare resilience and crisis, reinforce security. Continue to encroach on ecosystems, the human think of and will recognize as usual is we the way we use and eat to a new resource use that is equitable, resilient, healthy, resource that it is. Gracias. All the participants in political peoples have it that the 31st and provide with a historic unique opportunity that the 70 is people at least are not, and yet be victims of violation. Access to person who have access by guarantee and listen. Yes. So, again, and to all of you participation. Let me at the outset congratulate a woman he came from a city that has that a government men पर और एज इतना जिंदगी में मैं समझता हूँ रोल मॉडल होने चाहिए TV difficult task children moving on to Sultana Siddiqui Hum TV
सिखाती जाती हैं और उसके पास है इतनी देर में absolutely is amazing motherly love everyone treat any I think was बड़ी डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग उसके हर काम और कहती है जो बैठो और अगर आप देखें सिर्फ और थोड़ी सी बेटर वी नीड has has been behind our names Tina's son mind. She's one of those who has skills, communication in the field of into a legendary within the context and artistic National including the government of Pakistan. सुल्ताना आपा तक अच्छा तो आपका वीडियो पहुंचने जिंदगी इनकरेज किया बहुत सी चीज़ें जो लगी तो बहैसियत का सामना के निकल के होती है में आपको समझ में आती है कि कोई तो जब मैं की तो बेहतर काम शायद किया चाहेंगी जो अगर ऐसी जरूरत उनके लिए अपने पास उनको सिखा सकते of Greenwich to show us really to good luck with all my good luck. Thank you.
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल हैं।
नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Assalamualaikum everyone. This is me, Sindhu Sanwar, your host for the day. As you know, on Mondays we talk about careers and different career opportunities in our show Reimaging Education. When we talk about re-imaging education, one thing that comes to my mind is how much we have evolved and we have actually, learned from different educational backgrounds, different educational careers. One thing also when we talk about education is that the awareness of most of the careers or most of the career opportunities somehow still lacking in Pakistan. Even though I do believe that there are a lot of people out there who are actually doing so much for the, different career sites and building up of different careers, but I do believe that there are some people still who do believe in the conventional part of careers that, okay, some part can go. I have a very special guest with me today. Her name is Amna Ansari. Assalamu alaikum, Amna. How are you? Walaikum assalam, Sundar. I'm fine. Thank you. How are you? I'm fine as well. Amna Ansari is a psychologist. She's a mental health coach, certified NLP practitioner. She's currently involved in a training and development program conducted by Performance Warren Nell, certified by the John Maxwell team. So, Amna, when I talk about your career and I talk about the different opportunities that, I can see in psychology. So psychology is a very, very vast career, and it is a lot of work. It takes a lot of work. Takes a lot of hardship, a lot of different fields that you can actually explore in it. So you tell me about it, that starting off with your journey as a now a psychologist, you are, mashallah. So what made you Amna Ansari, and now you're developing a program, so it must be big, but it must have different sides. So you tell us about it, please. So yes, I would definitely agree with you. Okay, this journey has not been an easy one. थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो my major in FSC was pre-engineering, maths, chemistry, stats, ये सारी चीजें थी, physics. But I was never interested in all these things. I wanted to explore more. और मेरा हमेशा से emotions की तरफ बहुत inclination रही थी कि what are emotions, how they impact our behaviors. अगर कोई एक certain तरीके से behave कर रहा है तो why is he or she behaving like that? So pre-engineering के बाद I completely switched to social sciences. और उसमें I got the chance of studying behavioral sciences. Behavioral sciences is a very vast collection of subjects. We studied anthropology, sociology, neurosciences, child psychology, health psychology. तो वो एक कॉम्बिनेशन मिल गया था मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ने का. With time, जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होती गई, इन्फॉर्मेशन मिलती गई, आई स्टार्टेड टू थिंक मोर कि मैं कहाँ पे इस चीज को अप्लाई कर सकती हूँ, व्हाट मोर कैन आई स्टडी इन डेप्थ मोर अबाउट. फिर मास्टर्स जब आया तो मैंने थोड़ा सा अपनी लाइन स्पेसिफिक कर ली, मैं अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ चली गई. उसमें भी 3-4 काफी मेजर एरियाज हमने पढ़े. न्यूरोसाइंसेस बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ा हमने, चाइल्ड साइकोलॉजी एडवांस लेवल में पढ़ा, फिर साइकोलॉजी इन जनरल हमने एडवांस लेवल में पढ़ा. सो वो मेरा जो है ना बस एक इमोशंस और बिहेवियर का इंटरेस्ट और डेवलप होता गया. फिर आई हैड अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 years. आई गॉट मैरिड, आई हैड किड्स बैक टू बैक, तो मेरा एकदम ब्रेक आ गया था. आई कांट डू एनीथिंग. फिर मेरा कनेक्शन हुआ 2-3 लोगों से. दे एक्सप्लेन्ड मी कि ये NLP, neuro-linguistic programming एक field है, it's emerging and it's more like an advanced and a modern type of counseling and therapy. So मैंने उसकी certification की, hence I am a certified NLP practitioner as well. फिर मुझे हुआ कि नहीं, एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक अप्रोच पे नहीं रहना चाहिए. मैं साइंटिफिक चीजों से ज्यादा मेरी अप्रोच है एज अ होल ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग के लिए कुछ करना. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोचिंग. एक कोचिंग एक प्रोफेशन, एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है कोचिंग.
व्हाट डज कोचिंग डू? वो एज अ होल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को देखते हैं, वो एक स्पेसिफिक लाइन पे नहीं चलते. काउंसलिंग और साइकोलॉजी जो है वो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है. कोचिंग जो है वो हर चीज को होल में देखती है, हैप्पीनेस एज अ होल, वेल बीइंग एज अ होल, और वो ज्यादातर फोकस करती है ऑन द प्रेजेंट rather than the past. What we as coaches can do in the present to help the individual जो हमारे पास आ रहे हैं. So from behavioral sciences and applied psychology, now I'm a mental health coach. Mental health coach और mental health counseling में there's a bit of a difference. वही वाली चीज है, mental health counseling focuses on a specific problem, whereas mental health coaching उसमें niche जो है वो counseling और therapy का होता है, but you are more focused on the present state of the individual कि आप presently उस individual को कैसे help out कर सकते हैं उसके problems में, and what motivation you can give to that individual कि वो future में move forward कर सके. So it's an amalgamation of these interesting things कि वो NLP techniques भी आती हैं, फिर coaching भी आती हैं. So थोड़ा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, since I myself went through postpartum depression, that was एक sign था मेरे लिए कि I need to do something for women out there, especially who are lacking the information about postpartum depression. Me being a psychologist as well, I was not able to identify what was happening with me, क्योंकि वो इतना impactful वो emotions होते हैं ना कि आप identify नहीं कर पाते unless you have a very good supporting system, which fortunately I had. But sadly, in our society, a lot of women and a lot of girls, they don't realize कि वो postpartum depression से गुजर रही हैं, और which is complicate होके it may turn into any psychotic mental illness. So इस चीज को लेके भी मैंने अपना mental health coaching शुरू की, so that I can give the knowledge, the guidance, and the support to women who are young moms, or they are going to be moms, so they can have that kind of guidance and self education कि हमें ये signs, कुछ specific signs हैं जो हम अगर experience कर रहे हैं, they could be red flags, और ये this is the time we need to reach out to us for a support. Another thing, Sundar, with so I'm not talking to you about, I'm sorry, I'm cutting you out, talking to you about postpartum depression, or talking to you about the because you yourself faced it, so you had an idea what it was, how you went through it, and how is the whole process gone. Talk about it, because usually in Pakistan, and I would say majority of the people, I myself, I was a science student, so I've seen that only the experiments that were done, they were done on men, or they were done on animals. Women were actually left behind. And somehow, if I can relate to it, one of the best literature novels or literature writings that was about Yellow Wallpaper, it actually talks about postpartum depression as well. We as linguists and literature students, we have always been open about it. We talk about it. We see different problems, but people from different careers, and especially people who are entering their relationships, or even girls who are going to become moms, inshallah. So there's a very, very thin line that we don't understand. But we have to give our body, give our mind some time. Yes. It takes an individual a little time to refocus on everything, because your body changes, everything changes. So talk about that, Amna. That how much do you believe that? Obviously, you must have done it with different girls. You must have seen different girls in it, and you must have practiced or experienced or experimented on it. So what are those few signs that we can see that postpartum depression actually reflects in? Okay, one of the biggest signs for postpartum depression is the mother starts either losing connection with the baby, or she's having a very difficult time in developing that connection with the baby. ये सबसे major sign होता है. What happens, हमारे unfortunately स्टेटमेंट्स एंड जजमेंट्स पास कर दी जाती हैं कि इसमें तो ममता ही नहीं आ रही है, तुम कैसी माँ हो कि तुम्हें बच्चे का रोने की पहचान नहीं आ रही है, तुम कैसी माँ हो कि तुम ना उसको सही से दूध पिला रही हो, ना खुद सही से खा रही हो. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ये मिल के इतना प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं मॉम्स पे इमोशनली एंड फिजिकली कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, either is it the start of the postpartum depression, or either is it actually the fact that I'm not a good mom. So what I believe is कि जब आप when the girl gets pregnant, maybe
during the second trimester or even the third trimester, there should be a proper guidance given by the doctor as well. Okay, you might experience these things. You might experience continuous crying spells. You might experience आपकी body आपका साथ नहीं दे रही है. You might experience the feeling that you're not liking the baby at all. So ये चीजें जब actually feel करना शुरू हो जाएंगी moms, तो they would be educated enough to understand कि this is something not right और इस वक्त हमें एक support की जरूरत है. अगर आप वो सपोर्ट अपने घर के एनवायरनमेंट से नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट अ प्रोफेशनल. आपके पास आपके गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर होता ही है. कॉल हर कि मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट डू आई डू. एंड there have been cases in the world कि the moms have actually, unfortunately, they have strangled their babies क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस इतने हाई हो चुके होते हैं उनके वो ना उनको अपने इमोशंस की आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, ना वो बेबी से कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है, ना सोसाइटी उनको वो टाइम दे रही होती है हील करने का. सो देयर हैव बीन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, या तो अडॉप्शन के लिए बेबीज दे दिए इस गिल्ट के साथ कि आई एम नॉट अ गुड मॉम, या दे हैव स्ट्रैंगल्ड द बेबीज, और द मम्स हैव एक्चुअली ट्राइड टू do suicide attempts with themselves कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ. So there is a need of a lot of creating awareness about it. Postpartum depression is very, very real, and you bringing another human being in this world is nothing more than a miracle. ठीक है, और पुराने जमाने की बातों से निकल के बाहर आ जाना चाहिए. This depression is actually taking lives, unfortunately. Please give a supporting hand to the new moms. हर mom एक different set of emotions experience करती है, बजाय इसके कि उसको ये कहना कि अरे हमने भी बच्चे पाले हैं, बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो घर के काम भी किए हैं. Her body needs time to heal in every way possible. So this is क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी थी, मेरे crying spells बहुत थे. कनेक्शन विद द बेबी वाली चीज नहीं थी, बट आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ क्राइंग स्पेल्स. मैं क्राइंग की हो चुकी थी, इरिटेटेड थी, रिलेशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे अराउंड मी, बट माई मदर इन लॉ वॉज वेरी हेल्पफुल विद मी विद इट. सो मैं क्योंकि इस चीज से बाहर निकल गई, बट हर जगह नहीं होता. सो समटाइम्स यू नीड टू सेल्फ एजुकेट योर सेल्फ फॉर दीज थिंग्स, एंड योर डॉक्टर और अ प्रोफेशनल काउंसलर से ये गाइडेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है. That's so true. I would say I'm a very big supporter of mentorship, and that you should always have a mentor in your life, because sometimes your focus gets a little blur. And if you talk about it with somebody who has better experiences than you, and they have seen the better scope in life, or even they have studied about life, so they can actually guide you way well about it. So I'm not talking about opportunities ahead. And that when I see psychology, I see a very big and vast field. You were telling me yesterday as well when we were having a call, that's in this, it's like an endless sea. You have so many things in it. You want to, so you had a pre-engineering background, came to psychology, and then you actually went really well with it because you had an idea what to go for and how to go with. So you tell me, what are the things that are very, very important for the opportunities even ahead, that a person who is choosing psychology as a career, what should their set be, their mindset be? Because usually hum log le to lete hain psychology because it's a very hyped career now, because it has very, very it's a renowned career now. But masla ye hota hai ki kyunki hum log we don't know that we are actually ready for the career or not. We kind of cannot find our spark in it. So what do you think that the opportunities ahead, and as well as what should we be trained when if I am stepping into psychology? Okay, first of all, I would say that you need to have that empathetic factor in you, that you need to help people regardless of anything. ठीक है, regardless of the fact कि ये इस एरिया से बिलोंग करता है या इस स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, regardless of the fact. ठीक है. Secondly, psychology is not only restricted to mental illnesses or brain illnesses. When you have studied psychology, it opens the doors for you
to explore more for the fact that how the relationships are going on, how the society is working, how the individual is working, how the individual is behaving, वो workplace में कैसे behave कर रहा है, वो घर में कैसे behave कर रहा है, वो relationships में कैसे behave कर रहा है. So you need to have that interest in you कि अच्छा ये चीजें मुझे explore करनी है. A certain kind of behavior अगर हो रहा है तो what emotions are involved in it? Is it happening because of any past experience? Is it happening because of any environments that the individual is living in? So ये चीजें सुनने में तो लगेगा कि these are not so important, but these are the most important things. ये factors हैं जिसकी वजह से how we are behaving right now is dependent on the factors around us. So if the people are empathetic, they want to understand the emotions by putting yourself in others' shoes as well, then you can always progress in this field. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो इस वक्त साइकोलॉजी के साथ कोचिंग की तरफ भी अब डाइवर्ट हो रहे हैं, बिकॉज कोचिंग एक आपको मजीद वास्ट एरिया दे रही है एक्सप्लोर करने का, हेल्प करने का, कि वो लाइफ को फोकस करते हैं रादर देन द इवेंट. सो this is how psychology can be more interesting for you. अब जैसे मैं अपने clients के साथ बेसिक्स में साइकोलॉजी की रखती हूँ, लेकिन मेरा जो वर्किंग का जो मेरा क्राइटेरिया है वो कोचिंग के साथ लिंक्ड है. मैंने उसको कोचिंग के साथ लिंक कर दिया है. सो आपको एंटर होने के लिए यही 2-3 चीजें अपने अंदर देखनी है कि मेरे अंदर ये फैक्टर्स हैं कि नहीं है, कि मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ साइकोलॉजी को, इंडिविजुअल को मैं अंडरस्टैंड करने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है. Now, when I talk about, empathy, it's actually one of the biggest things that a lot of individuals do lack. And somehow we do not discover it until we are not, in a situation where we needed an empathetic shoulder, or when we don't, see somebody facing it in our, family or nearby. So, empathy is very important, even say, because I'm an educationist, and I do believe that empathy comes in my profession as well. Yes. Until or unless I cannot understand my student, it's very hard for me to, think about or, develop any idea. So Amna, thank you so much for this, small insight about your career. And but do tell me, because now you must see different graduates coming or different individuals, entering the field. People are, changing their fields as well. They think that, they can actually work in it. So what are those few tips that you want to give the future generation or the future girls or boys ahead that, keep this in your mind when you're coming in this profession? I would say, first and foremost, be empathetic. ठीक है, क्योंकि जब तक, एज यू सेड, कि ये चीज बहुत सारे इंडिविजुअल्स लैक करते हैं, और जब तक हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं आती एक्सपीरियंस करने के लिए, वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट एम्पैथी इज. You do not have to wait for a situation to be empathetic. ठीक है, look around you. There are so many people who do not have the basic necessities of life. आप कोविड की सिचुएशन देख लें. I personally believe इस कोविड की सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों को empathetic बना दिया है, because it has created a very sad blanket on everybody's life. ठीक है, one way or the other. A lot of people lost their jobs. A lot of people had to move back to their countries जहाँ पे उनकी जॉब हो रही थी, वापस home countries में चले गए हैं. और some of them even now they don't have jobs. ठीक है, तो अगर जॉब नहीं है, how are they living? How are they surviving? ठीक है, so this COVID is a big example of empathy. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड की हद तक रह के आप जो है एम्पैथी को अप्लाई करो, कहीं अप्लाई नहीं करें. दिस शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग एम्पैथी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, और जब आपके अंदर एम्पैथी आ जाती है, यू आर बेटर एबल टू कम्युनिकेट on the level of other individuals. उन्हीं के लेवल पे आप बात करेंगे, and it becomes easier for you to connect. What is coaching? Coaching is also coming at the level of other individual and having a common ground to communicate. और वो सब कुछ empathy से आता है.
So this is my message to everyone out there. Start becoming empathetic about everyone. Don't wait for a situation कि आपके साथ कुछ हो तो समझ आए या आपके loved one के साथ हो तो कुछ समझ आए. Whatever we are hearing these days or seeing these days is an eye-opening example for everyone out there. So this is one thing जिसको आप अपनी life में apply करके you can have a big change in yourself as well. I totally agree with you. Thank you so much, Amna. I really appreciate you giving us time and coming to Greenwich Thank you University's so platform much. Thank you so and much for talking having to me. thank you. Talking to our students about ingrowing what should I say, career opportunities in psychology. So this was Amna Ansari with us. The whole idea of bringing different individuals from different careers is to help you guys understand that people are developing a lot of different opportunities. It's up to you that how much interested and how much engraved you want to be in a career, and if this career is really for you or not. It's better to have a mentor, better to have a coach than have nobody with you, because that actually develops way stronger relationships and it makes you more foresighted, more clear about what you want to do in your future. This is me, Sindhu Sinwar, signing off. The holidays are near. I hope you guys are enjoying, and I hope you guys are, staying safe and staying at home. And Christmas is around the corner. I wish all my, Christian family a very, very Christmas. But I'll have a show about it as well. So we'll see you soon, inshallah, in that. So stay tuned for more. Thank you so much for coming. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Hi guys, my name is Khurram Parvez and I am from SB 151087. I'm a proud alumni of Greenwich University. I graduated from here in 1997 and I think it's my life-changing experience, and there was a lot of fond memories, past memories which I have of Greenwich University. In fact, after doing my graduation from Greenwich, I also taught in Greenwich University for about 8 years, and now I am working as an assistant professor at ICRA University. I thank all my teachers who taught me during my studies, and I have made many good friends, and we are still, along with my good friends, meeting at different intervals with each other, and I very much thank Greenwich University once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you. Is Rehan Khwaja, working as director in KB Group and Minerals. I am a proud Greenwich University. Thank Greenwich doing my second conference and the foundation. Thank you. नौजवान नस्ल ख़ुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan. I'm back with another session and another guest. And yet again, I'm very excited to introduce my guest for today. When I talk about my guest for today, well, she has a very deep association with Greenwich University. She has been the favorite teacher of lots of students, and we're really close to her. So without any further delay, let me introduce our guest for today. We have with us Ms. Mavish Amir Lodi, who is the head of Credit Risk Management, Summit Bank Limited.
she also was associated with a Canada recruitment firm in the years 2013 to 2017 that used to recruit people for the banking sectors, the three largest banking sector, let me correct myself. And during her teaching days, the courses that we used to learn from her were mostly related to economics, and one of her own favorites were business research methods. So without any further delay, welcome, ma'am. Hope you're doing well. I'm absolutely doing very well. Thank you very much, Umar, for having me on your show. I've been looking at quite a lot of programs that you've been doing every day with a lot of commitment, and my colleagues, friends that I know from Greenwich. So didn't know I would be here, in one of the programs, but thank you very much for having me over. The pleasure is all ours, and thank you so much for taking out time. Indeed, everyone is looking forward to the show, and the basic reason for these sessions is not just to share the experience that you have, but at the same time, a reunion for the entire Greenwich family and all the wonderful years that we've spent together. So, ma'am, how have you been spending all of your time during this COVID-19 situation? So I'm not going to say that I did take off because people were really not going to offices and they were staying home, considering that the pandemic has really, made people stay at home and keeping that social distance. But my thing was a little different. I actually look after credit risk management at a bank. So this is exactly the area that has to work when there is a situation like what is happening right now. So I did actually made my team go on alternate days, and we were trying to keep less people in the office as much as we can. But I was actually there every day. So I sincerely did not have a day off to myself, first of all. And reason being that you understand, being a credit risk head, I have to really gauge the risk the credit now has, considering that businesses would not be able to do well in the next, I wouldn't say a year, but couple of years. Because the way the pandemic has hit the business, we really have to strategize ourselves. And State Bank has also, there's so many circulars, there's so many warnings, there's so many relaxations to businesses. So I, being the head of credit risk, had to be there at all times to make sure things are going well. So I really did not have a day off to myself. So that is something, very kind of, अफसोस सा हो रहा है, क्योंकि जहाँ लोग सारे पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे there are people like आप काम कर रहे हैं. But then again, we're talking about the situation, and as you said, the business aren't going to be well for the couple of years in the coming future. So how do you think this will affect the banking sectors? Because then again, people are being very reluctant to put in investments. People are very reluctant to use their cash. People are coming towards the selling part and survival mode. So how does that affect the whole banking sector? Good question. I've been actually telling my teams also. Since I look after credit risk, so a part of my job is to look after risk mitigation also. Now, in normal course of action, when there's nothing like that, there's no calamity, no pandemic, no fear, no nothing, no economic distress. What we do is we have a separate department which takes care of business continuity plans. अच्छा, उस department को ना nobody really gives a lot of attention के ठीक है, that's there, State Bank rules follow कर रहे वो. But as soon as this entire thing happened, we realized that we have to have a disastrous recovery management unit working 24/7 to make sure that if say everything is at halt, how to make sure the business keeps on going. Now, for me, what is more important is to see that how the banks are going to work in a situation where businesses are given relief by the government and the State Bank of Pakistan. Now, there are couples of schemes that I'm sure you know, or maybe you've heard of. So if you are not able to provide salaries to the employees, the government and the State Bank of Pakistan, in collaboration with the banks, have come up with a refinance scheme where we are offering them a loan for a year where they're able to pay at least 3 months' salaries to their employees. Now, considering
A, we're doing the refinance. B, we're actually giving deferments of principal and markup in many cases. C, we're actually having less people coming to work. The functional, performance of the banks have really gone down with that. It is going to be a very, very tough year. And I think it is going to be tough for the next 2 to 3 years to come, because when there is a disastrous recovery for what has happened, हम 6 से 8 महीने को देख रहे होते हैं कि if there is a calamity, if there is a zalzala, सैलाब आ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, आपके पास agri loans आपने दिए हुए. But you see, this is entirely different. This has an effect not only on, say, for instance, industrial area or agricultural area or services area. It has an effect on the entire economic setup. And it is not for Pakistan, it is global. So what I see is that I think a new world order is in place. Indeed. And the new tomorrow will nothing be like what we are seeing, what we saw in the past. I think we've stepped up. And we are already, I think we're welcoming a new world economic order. And what I see is banks, like just going back to your question when you said how banks are going to take it, banks' incomes will definitely go down because you see you're giving deferments for markup payments and principal payments. And that is for a year. And considering that the businesses might not do well, it may continue for the next year also. Otherwise, one other thing that I really want to mention here is technologically advancements जो नहीं हुए पाकिस्तान में बहुत अरसे में, उनकी अब जरूरत पड़ गई है. You have to be hands-on with technology. So that's the change businesses have. I just link this to one thing that, as you said, that it's not just Pakistan. Globally, banks have been affected. Nearly 70 banks in the United States of America have filed for bankruptcy. I've seen many branches in my city, Karachi, closing. And that's due to this effect of the COVID-19, because, of course, they have to meet the expenses. And as you said, that they're taking loans just to pay off salaries. So things won't fix up unless we recover the situation. So at the same time, I have this question as a client, as a user of the banking system and credit cards. As you said that government and state banks is also providing reliefs and all that projects. So usually a credit card has a cycle of payment for 51 days. And there's an option of minimum payment. So is any kind of a relief for the customers where if they go for minimum payment during this hard times, they can, the interest rate could be lower or could be waived off for during this COVID time, because of course everyone's facing a situation. Bilkul hai. There are actually two things that we're talking about right now. There are two areas of banking. One is corporate banking, where we are dealing with businesses. So corporate businesses, big businesses, and then small and medium enterprises. Your question pertains to consumer banking. So you as a consumer, if you're using a credit card or you have a mortgage loan or you have an auto loan, bilkul hai, the government has given relief to credit card users. आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स के अंदर आपको डेफरमेंट मिलेंगे, आपको ऑटो लोन में मिलेगा. आपकी जो बैंक है, ऑल यू हैव टू डू इज गेट अवेयर दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ इन कोऑर्डिनेशन एंड इन कोएलिशन विद State Bank of Pakistan, and as soon as you contact your bank, they will let you know. छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ. वैसे तो मैं रिटेल में नहीं देखती हूँ, लेकिन I do hear from my colleagues and peers. Biometric system बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जब बने तो उन्होंने तो फिर ये भी कह दिया कि इसके बगैर आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते हैं, स्टफ लाइक दैट. अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ बैडली यू सी वी बीन हिट बाय दिस पैंडेमिक, आपका बायोमेट्रिक भी अब डिफर हो गया है. तो यू कैन एक्चुअली ओपन एन अकाउंट जिसमें आपका बायोमेट्रिक उस वक्त अगर हो गया तो ठीक है, अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो मतलब दिस इज नॉट अ हिच एनी मोर. इससे आज से पहले ये आप खोल ही नहीं सकते थे. तो आप यहाँ से देखिए कि पॉलिसीज आर चेंजिंग, फंक्शनैलिटीज आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग. We're at the verge of a big change right now. Right. So let's just come towards the lighter side, because I know when we talk about banks, so even in my student life, when it comes to finance,
I used to, get a headache and all that stuff. So we've got lots of Mariams with us. And let's see who we have with us. This will ring. Let's see who is there with us, and lots of students and lots of faculty members with us. Mr. Tariq Iqbal, does that ring the bell? Not really. Not really. Okay, you can look at the small picture on the corner. You might recognize. Right. So Mr. Tariq Iqbal is in our admin, and he is with us. All right. This is one of your. No. Okay. Now that's one. Yeah. Mariam. Yes, she's with us, and Fahim Ayan, another student of yours. I'm sure. I'm sure. All right. Salman Sardar Aziz. Does that ring a bell? सलमान को बिल्कुल मैंने पढ़ाया. सलमान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया मेरे पढ़ाने की वजह से. सलमान के लिए उनकी कोई एक शरारत अगर आपको याद हो अपनी क्लासेस से. मैं सलमान की मुझे कोई शरारत नहीं याद, बस इतना पता था कि सलमान इज अ टॉल बिग गाय, और मुझे ना वो हमेशा इस तरह होता था कि वो जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो आई वाज प्रीटी पेटीट, मतलब लॉट्स ऑफ पाउंड्स दैट आई हैव पुट ऑन. तो वो मैं ना इनके मुकाबले में बस वन ऑफ द स्टूडेंट्स ही लग रही हुआ करती थी. तो मुझे याद है जब ये सलमान और इसका एक पूरा गैंग आया करता था, आई यूज्ड टू फील कि अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं क्या करूंगी, मतलब क्या होगा अगर. लेकिन वो अलग बात है कि बेचारे मुझसे मतलब थोड़े सहमे में ही रहते थे. सलमान तुम सच ना बता देना प्लीज इस वक्त. Actually, Salman was at our session yesterday, और वो सारे और वाक़े was on, so I'm sure he's going to comment. We're going to include that as well. So next we have with us Hira Mohsin Salim. Lots of love, and that's my sister actually. She's just logged in. All right, that's lovely. And Meher Lodi is watching, right? That's brilliant. So that's my daughter who's sitting next in the next room watching me. Okay, that's very nice. Hi to your daughter from the entire Greenwich fraternity. We have with Mr. Imad Kareem, is also from faculty. जी इमाद साहब अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल इमाद साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त है हमारा. Okay, another bright student, Asad Umar. Another very dear student of mine, Asad. And he says one of the best teachers ever. We were hoping if she could take 6 courses per semester and we could enroll all of those. मैम इसके पीछे क्या राज था? क्या A ग्रेड गारंटीड होता था या क्या होता था? मेरा A ग्रेड तो क्या, मेरा तो B ग्रेड भी गारंटीड नहीं होता. अब असद को ही जवाब लिखना पड़ेगा वैसे इस बात का. बट यस, एक चीज जरूर है, जितने लोगों ने भी मुझसे पढ़ा है, आई एम श्योर दे कैन वाउच फॉर इट. I don't want to spend a single minute in the class not teaching or not sort of influencing my students to a point कि जहां वो ये सोचें कि यार, you see, in the first class I tell them I'm not here to teach you economics, because the first thing you get to see, oh Pakistan economy, micro, macro, बड़े hard subjects हैं, बहुत dry subjects हैं. In the first class I always tell them मेरा objective ये नहीं है कि आप मुझसे पढ़ने आए. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप क्लास से अपने 12th या 14th क्लास के बाद when you're going away, you are able to speak about your subject among your friends, among peers, people. You see, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको अपने सब्जेक्ट से उनसे प्यार करना सिखा देती. That is very important. हम किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं अपना सब्जेक्ट मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाती. मैं कोई पाकिस्तान इकोनॉमी की किताब लेके कभी भी क्लास में नहीं एंटर हुई. आई एम श्योर मेनी ऑफ स्टूडेंट्स कैन वाउच फॉर दैट. एंड व्हाट आई रियली वांट इज दिस, कि जो एक प्रैक्टिकल टीचर होता है ना, उसका काम होता है कि वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठे हुए स्टूडेंट को कनेक्ट करे टू द एनवायरनमेंट दैट इज आउट देयर. बहुत बुकिश ना हो चीजें. तो फिर जब ये स्टूडेंट्स, बिकॉज एज हेड ऑफ क्रेडिट रिस्क I do interview students when they you see come for banking jobs. मुझे लगता है हम अपने बच्चों को ना बस किताबी कीड़ा बना देते हैं. Totally agree. उनको प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होती. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकलिटी पढ़ाना और सिखाना चाहती हूँ, और मैंने हमेशा किया है. It's been how many years now? 16 years. 16 years since you're associated. So, man, that's the reason why a student will always remember you, because जहाँ आप एक कोर्स पढ़ते हैं वहीं पे if a teacher teaches you how to deal with life, the situations of life, trains you for the worst, trains you for things that you're not prepared of, like contingency plans and all. So that's something that is
the real add-on. So let's add a few more messages. Shazia Anwar is with us, another dear Greenwich family member. So I'll add on some more messages. Eman Shan Ali, undeniably an amazing teacher with real teaching abilities and extended knowledge. I'm humbled, and I'm, it's, I don't know what to say, but शुक्रिया बहुत बहुत, thank you. नहीं, अभी तो बहुत मैम शुरुआत है, अभी तो सेशन की शुरुआत है, अभी तो बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी मेमोरीज डिस्कस होंगी. सना फातिमा इज विद अस और वो भी काफी खुश है आपको देख के. बहुत पुरानी स्टूडेंट है सना, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट. ओके, देखिए ना कितनी खुशी होती है कि जहां हम आपकी तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग कम हो रही है क्योंकि आप काम पे भी जा रही सब है, बट यहाँ पे वी कैन मीट ऑल आवर ओल्ड स्टूडेंट्स, ओल्ड कोलीग्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स द काइंड ऑफ सेशन व्हाट वी हैव क्रिएटेड. काशिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी कह रहे हैं बेस्ट टीचर. इतनी मैम आपकी तारीफ सुनो, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे क्यों नहीं पढ़ा. हाँ, ये बात सच है. मैं ये सोच रही थी बिकॉज जब मैंने आपको पहली दफा देखा सेशन करते तो मैंने कहा मैंने उमर को पढ़ा. अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है बिकॉज व्हेन you're doing semesters, तो आप बहुत टाइम तो नहीं बट 3 से 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो आप साथ गुजार रहे होते हैं. तो एंड माशाल्लाह 16 years, so you can understand how many semesters and how many students. So I've been trying to look at you and मैं सोच रही थी कि मैंने उमर को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो मैंने नहीं पढ़ाया. मैं उसकी रीजन भी बता देता हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपना MBA कर रहा था उस टाइम पे आप कनाडा में मौजूद थी. ये वजह है. That's the reason. और अब हम उस तरफ आते हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स हैं who wants to build their career outside Pakistan. They're looking for opportunities beyond borders. So can you share your experience? How was it to work outside of Pakistan? How's the environment? And if someone is willing to move, तो उनके लिए क्या obstacles होंगे to work in Canada or anywhere else out of Pakistan? Sure. देखिए, मैंने एक चीज मैं जरूर कहूंगी जो मैं हमेशा encouragement के लिए कहती हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये कि हमारे बच्चे जब पढ़ के जाते हैं and when they are there and when they are working, they definitely have a class with them, because the way they've been taught at schools and colleges, when they go to those universities, most of the students that excel are from Asia and this Asian region. तो एक तो ये कि अगर मैंने हमेशा कहा है वैसे अपने स्टूडेंट्स को कि इफ दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स एंड इफ द फैमिली अलाउज एंड इफ दे हैव एन ऑब्जेक्टिव, तो मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि मास्टर्स की डिग्री के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर चले जाएं. उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास मास्टर्स के अच्छे प्रोग्राम्स नहीं है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं. मैं खुद ग्रीनिच में पढ़ाती रही हूँ एंड आई लिटरली लव टीचिंग द MBA sessions, but one thing is there, वो ये कि आपको ना थोड़ा सा एक्सपोजर जरूर मिलता है, and that is not only because it is for academic purpose, but for practical reasons also. Like you said कि क्या hurdles हो सकते हैं, क्या चीज है. I always feel that when you leave your comfort zone and go to another country, say for instance हम कनाडा की बात कर लेते हैं, तो आपके वो hidden चीजें जो घर में आपके या आपके अपने होम टाउन में रहते हुए वो थोड़ी suppressed होती हैं, even they you realize that you have those added advantages to your with your personality and with yourself. I think that comes out. Then the way we teach our students and the way our students have gone through the examination systems and आपके presentations, आपकी quizzes, आपके assignments, ये सारी चीजें आपको एक्चुअली रेडी कर रही होती हैं अगले सिस्टम के लिए, जहां जाकर के बहुत कंपटीशन भी है. और अब स्पेशली बिकॉज आपको पता है कि जो एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो चाइना की है, आपको कनाडा में बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलेगी, बहुत कंपटीशन मिलेगा उन लोगों के साथ. लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बच्चे और स्पेशली पाकिस्तान के गए हुए लोग हमेशा एक्सेल करते हैं. तो एक तो ये कि आप अपने कंफर्ट जोन में से निकलते हो, दूसरा ये कि आपके अपने अपने हिडन टैलेंट्स आपको पता चलते हैं, और तीसरी चीज ये होती है कि कभी कभी ना चैलेंजेस लेने से यू रियलाइज दैट व्हाट यू कैन डू इट. तो ये एक बहुत वो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ रियली गुड टाइम देयर इन कनाडा. आई वाज एक्चुअली वर्किंग नॉट
only for banks. We had oil and gas companies also. We had construction companies. बहुत बड़ी 3 construction companies थी जिनके साथ हम काम करते थे. But 3 largest banks, TD Bank in Canada, it's BMO जिसको कहते हैं वो, Bank of Montreal, और इसी तरह CIBC. ये तीनों बैंक्स हमारे, हम इनके पैनल पे थे और हम रिक्रूटमेंट फ्रॉम मैं और माय हस्बैंड आल्सो टीचर्स एट ग्रेनिच, सो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम आल्सो. तो मैं और आमिर दोनों वी वर टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस देयर, और माशाल्लाह वी डिड वेरी वेल, because A, we knew banking, B, we wanted to come out of our comfort zone and sort of do something for ourselves. I thoroughly enjoyed my time in Canada. और जो भी जाना चाहे, बस मैं ये कह सकती हूँ कि I am there. Amir is there. If you need any help, please let us know. We would be very much happy to guide our students or do anything that we can do for you. But yes, opportunities हैं. हाँ, एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, सॉरी अगर मैं नहीं कहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. अगर आप अपने पाँव पे खड़े हो, अपना एक्सपोजर ले लें, and you've done well in your life, at one point in time, do think to sort of come back to Pakistan, because I would definitely want you to contribute here. See, we need a lot of people to do well in our country. In economic point of view से तो है ही है, but otherwise also we need good people who have exposures to come back to Pakistan and bring those experiences with them. तो वापस भी आ जाए, मैं ये भी कहती हूँ फिर. Definitely. I'll add on few more messages. So there's student Iram Khan. She says, hello ma'am, how are you? You and Sir Amir taught me when I was in BBA. जी, Iram is a wonderful student. अस्सलाम वालेकुम Iram. Thank you. आपको याद आ गई हैं? बिल्कुल Iram, मुझे याद आ गई हैं. Iram मुझे बिल्कुल याद आ गई. और इरम मेरी बहन है. माशाल्लाह. तो फिर आपके father was also associated with Greenwich? Yes, yes. Oh, okay. Right. So I have a big respect for him. इरम को पता है मैं उसके साथ बहुत दफा बात करती थी. चले, wonderful. Thank you. शफीक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी सर हमारे he is the economics department head, and he is very involved with all the TV channels as well, and very learned. आपने तो उनका इंट्रोडक्शन करा दिया, लेकिन एक इंट्रोडक्शन मेरे पास भी है. शफीक साहब मेरे उस्ताद हैं और मेरे पीएचडी सुपरवाइजर भी रह चुके हैं. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि उन्होंने टाइम निकाल कर मुझे एक मैसेज भेजा है. थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एम सो ऑनर्ड. थैंक यू. राइट. सो मैम, अब थोड़ी सी आपसे एक मैं सवाल करता हूँ. यूजुअली जब कॉपीज चेक की जाती हैं तो कुछ ऐसे जवाब आते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं. तो कभी इलास्टिसिटी डिमांड का कर्व बनाने में या सप्लाई कर्व बनाने के अंदर कोई आपको ऐसी आंसर शीट में अनयूजुअल चीज आई हो जो आपको याद आ गई हो, या जिसके ऊपर आपका कहका निकल आया हो कि ये बच्चे ने लिखा है? अच्छा, मेरे साथ ना एक कॉमन चीज होती है जो मैं आपको अभी बताती हूँ. बहुत अच्छा सवाल है ये भी. मुझे ना जब मैं कुछ चीज बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाऊं और फिर वो चीज स्टूडेंट ने गलत की हो और मैं उसको ना जोर से ना बड़े बड़े 2 मार्क्स लगा के लिखती थी, प्लीज सी मी इन द क्लास. ये मेरा एक पेट जुमला है. आई एम श्योर मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू इट. जब मैं पेपर्स, बिकॉज यू नो हाउ ग्रेनिच का तो बड़ा फेयर सिस्टम है, आपको पता है. हम जब पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो कॉपीज पे नाम नहीं लिखे होते. नाउ आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन और दिस लेडी इज. आई हैव टू मीट देम कि ये हैं कौन जिन्होंने एक दफा भी ठीक नहीं लिखा उस चीज को. तो मैं लिखती थी, प्लीज सी मी इन द क्लास. अब 40 बंदों की क्लास है, मैं कहती थी, सो हु इज गोइंग टू कम एंड सी मी? नो वन वुड स्टैंड अप. मैं कहती थी, नहीं, देयर आई हैव रिटन अ कमेंट. तो कौन लोग हैं जिन्होंने उठ के मुझसे मिल? नोबडी वुड स्टैंड. तो फिर मुझे एक एक मार्किंग शीट देखनी पड़ती थी कि वो कौन हजरात हैं जिनसे मैंने मुलाकात करनी है क्लास में. तो ये बहुत दफा हुआ मेरे साथ. और वाकई जब जाहिर है कोई इतनी मेहनत से चीज पढ़ाई जाए और बिल्कुल आउट और बिल्कुल अनयूजुअल सा जवाब है, तो जाहिर है हंसी की जगह एक टीचर को तो गुस्सा ही आएगा. फेलो स्टूडेंट जरूर हंस सकते हैं. बट एक आपसे मैम सवाल मैं करूंगा. यू बीन टीचिंग फॉर ओवर एन डेकेड नाउ, माशाल्लाह. जब से ये डिजिटल की तरफ हम बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया है, have you seen a change in the students, in their behavior, in their focus, like comparing the students of the 2004s, 5s to the students of now? Do you feel any difference in them? बहुत. और इनफैक्ट जितने मेरे स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा एक बहुत बड़ा लेक्चर होता है इस बात के ऊपर
क्योंकि मैं आपको बताऊं, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब बहुत सारी दफा जब मैं क्लास में आके बात करती थी तो मैं यूं कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको पता ना कि ये अब मैं क्या आपको याद, हाँ, बास्फोरस की लीज जो है वो एक सर्टेन टाइम के ऊपर जा करके खत्म हो जाएगी, एंड देन दिस एंटायर रीजन विल सी के बास्फोरस जो है वो टर्की की चूंकि ओनरशिप में। अब ये बात जब मैं इस तरह करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपको पता है ना इस चीज का, तो द स्टूडेंट्स विल बी लाइक या मिस, वी नो। अच्छा तो फिर क्या पता है आपको? दैट्स माय एग्जैक्टली, नहीं मिस, वो बास्फोरस उधर टर्की में, अच्छा तो फिर क्या है उसमें? नहीं मिस, वो हमें पता है कि वो एक लीज है, वो कुछ वो है मिस, वो जो हो रहा। So I tell them that this is where you guys go wrong. What we do is we read news on, unfortunately, on social media. अखबार हमने पढ़ने छोड़ दिए, न्यूज हमने देखनी छोड़ दी। आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमी पढ़ाते हुए मेरा पहले क्लास में आकर ये होता है कि इफ यू गाइज डू नॉट हैव बिजनेस रिकॉर्डर्स एट होम, make sure just before my class please go to the library and have a look at it, because I'm going to ask you कि business recorder में आज क्या खबर आई है, और आपने उस खबर को हेडलाइन नहीं पढ़ लेना, आपने उसके नीचे पढ़ना है। ये एक चीज है, हम पढ़ना भूल गए, हम रीडिंग नहीं करते। हम एकदम से हमें कोई खबर पता चली, जी हमें पता है कि ये हुआ था, अच्छा क्या हुआ था, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई थी, नहीं वी डोंट नो, बिकॉज हमने उसको बहुत सरसरी पढ़ा हुआ है। तो प्लीज मेरा ये एक, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आई स्टिल मैं ऑफिस में भी ये चीज कहती हूँ, हर डॉक्यूमेंट को पढ़ें, हर चीज को रीड करें, देन यू स्टार्ट लर्निंग एंड नॉट, आपका लर्निंग कर्व पर डेवलप होता है, फिर एक टाइम आता है आप you get along with it, फिर आप एक सेकंड में एक डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत हमारे साथ भलाई की है, अच्छाई की है, हमें अच्छी बातें सिखाई हैं, बताई हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है दुनिया को, बट एट द सेम टाइम we have forgotten how to learn, research, investigate, analyze, and then you see have a review on something. हम लोगों के रिव्यूज को पढ़ के अपना रिव्यू बिल्ट अप कर लेते हैं। Absolutely. I second this because being associated with the media industry for over a decade now, I would say कि ये जो हमारी रीडिंग ना करने की आदत है, इसका नुकसान ये हुआ है कि whatever we see on TV or radio or any person giving his opinion, we forward it without the research, as you just said, कि हम उसको analyze नहीं करते, समझते नहीं है. But if we are reading on our own, if we are connected, if we have the knowledge, if we know what's going around the globe, we can always correct that person on the television. हमारी as a generation, as हमारी future generations अगर एक intellect वाली हैं, so उससे एक पूरा environment एक बहुत बेहतर हो सकता है. And because जो एक manipulation होती जाती है, या जो एक misguidance media के बहुत different forums से होती चली जाती है, you can always counter it. And for that, we have to build our own opinion, and for that, we have to do our own research. So that is very important. So I'll add on some new messages, and let's see who we have with us now. Ikra Anwar Shah, कहती हैं, I've been taught by Miss Mavish back in 2008. She taught me 2 courses, and yes, we started reading Business Recorder because of her. I'm honored, Ikra. Thank you, Viche. Thank you. मैम कितनी खुशी होती है कि आप अपने कोई पुराने स्टूडेंट को आज भी, क्योंकि जाहिर है कहीं बम्प इन करें आफ्टर 10 years, 12 years, 15 years and they're doing well in life. So how is that feeling? Oh, I can't tell you. This is why I'm still teaching and associated with this university. और ये मैं आपको बता दूं, इस मैं अक्सर लोगों से कहा करती हूँ, इस यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ग्रो किया है, because when I came here I was very young. It's quite a lot of years ago now, or I have actually grown up with my students and with this university. ये मेरा दूसरा घर है. I literally call it second home. और मैं अपना कोई वक्त मेरे पास हो या ना हो, मैं ऑफिस में कभी कभी बहुत बिजी होती हूँ. At times my Saturdays are also engaged. I make sure even if I take one course, I do it. Reason being, मुझे जो कमिटमेंट एक फील होती है ना, जैसे कल आपका स्टूडेंट कहीं गया, उसने आपके बारे में एक अच्छी बात की, आपसे उसने एक अच्छी बात सीखी. अच्छा, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट टू से, जितने टीचर्स हमें देख रहे हैं या बाद में इसको देखेंगे, ये एक सदका जारिया है. आप क्या ऐसी चीज करेंगे
जो फिर बरसों तक चलती रहे. आप एक दरख्त लगाते हैं, reason being that it's going to be a really big tree one fine day, and then you see you have the sawab of the. This is also one of the things. आप किसी को पढ़ाते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो अपनी हलाल रोजी कमाता है. This is sadqa jariya. So I love to do it because I think I'm contributing towards betterment of not only an individual but to the society also. Right, ma'am. So we have a question here, and the question is from Fahim Aryan. He asks, any suggestions for those who are seeking for an internship or job but having really hard time to find it because of quarantine and the lockdown? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसका जवाब बल्कि किसी और को भी देख कर आई हूँ. जॉब्स, आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू कि थोड़ा टाइम आप लोगों को रुकना पड़ेगा. रीजन बीइंग के अभी थोड़ा सा जो है वो अच्छा टाइम नहीं है. बैंक्स भी थोड़े, लाइक आई सेड, वो एक डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट में आ गए जो हम ऑलरेडी अदरवाइज नहीं कर रहे होते. तो आई थिंक बहुत एनर्जीज लग रही हैं एक चीज को हैंडल करने में. इंशाल्लाह आई डू सी डाउन द timeline, say for instance September October tak things will be all right. However, as far as internships are concerned, अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो वो जरूर केटर कर रहे हैं, बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आप भी इस टाइम पे बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं. यू सी, सेफ्टी इज एब्सोल्युटली मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. आई अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खुद अपने पास इंटर्नशिप्स ऑफर करती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये बात, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ इंटर्नशिप की है. लेकिन मेरे अपने थोड़े से ऑनेस्टली इस वक्त हाथ बंदे मुझे नजर आ रहे हैं. रीजन बीइंग कि मैं लोगों के लिए नहीं चाहती कि खुदा ना खास्ता कोई सेफ्टी हैजर्ड हो जाए, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती. आप देखिए ना, जहां हमने यूनिवर्सिटी बंद कर रखी है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त ले लीजिए इसके लिए. आई एम श्योर इंशाल्लाह इन अनदर 2 to 3 months थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से we just have to wait for the right time. Definitely. So, ma'am, as much as I'm loving this session, we are coming towards the end. और बड़ा एक अच्छा टाइम रहा. आपके सारे स्टूडेंट्स भी देख के आज आपको काफी एक्साइटेड थे. सो कीपिंग द होल करंट सिचुएशन इन माइंड, जो कि आजकल चल रहा है और आने वाला टाइम भी इज वेरी अनसर्टेन, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग राइट नाउ, और अपने फ्यूचर में करियर को लेके जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, what field would you suggest and what direction would you guide them in? अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक. आपने कहा कि जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है सपोज टू अदरवाइज, जो हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं उससे बहुत कुछ चेंज हो गया. देखिए, दो चीजें मैं जरूर कहूंगी. मैं स्टूडेंट्स को अपना हमेशा से कहती हूँ, ट्राई टू हैव अ मिक्स एंड मैच ऑफ बिजनेस एंड अकाउंट्स इफ यू कैन. ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ अकाउंट्स को मैच करें बिजनेस के साथ. और अब now that I'm looking at the situation, the way it's changing, technological advancements are taking place, I thoroughly suggest mix and match your business degree with IT degree. Either do something in IT infrastructure, software development, IT support, agar aap interested hain usme to, but have a mix and match always. I did my bachelor's in business and had to match it with economics का masters. ठीक है, तो I have a mix and match. Number one. Number two, देखिए, वक्त बहुत बुरा है, मैं मानती हूँ. आप बाहर नहीं जा सकते, आप अच्छे खाने नहीं खा सकते, you're not meeting friends. बहुत हालात खराब हो गए हैं. और हमारी एज के मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो बेचारे जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं मैं समझ सकती हूँ इस वक्त. लेकिन एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए उस काम को करने के लिए जिसका आपके पास वक्त नहीं था. ऑनेस्टली रीडिंग करें, अच्छी किताब पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटिक्स पढ़ें, लॉ पढ़ें, अपने आप को मेक श्योर. ये ना एक इंसान का, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, वेयरिंग अ लवली ड्रेस, अ गुची, दिस एंड दैट, द अदर, अ लुई वुइटन, व्हाटएवर, बट देन as soon as you start speaking and you don't know what you're saying, the entire impact goes down the drain. So when you speak, you tell people what you know. जब आप जानते ज्यादा होंगे, impactful बातचीत करेंगे, लोगों को influence कर सकेंगे, आपकी knowledge होगी. पढ़ाई करें प्लीज, अच्छी सी किताबें ले आएं जाकर कहीं से, घर पे बैठे
फैमिली को टाइम दें, थोड़ा सा अल्लाह को भी याद कर लें, अम्मा अब्बा को देखें, उसी घर में कहीं रहते हैं अब आजकल, आपको नजर आ रहे होंगे। तो टेक इट पॉजिटिवली, ये चीज मैं जरूर कहूंगी, टेक इट पॉजिटिवली। जो ही हम नेगेटिव होते हैं ना, चीजें खराब हो जाती हैं। सबसे जरूरी चीज मैम ड्यूरिंग दीज टेस्टिंग टाइम्स इज टू स्टे पॉजिटिव, is to take care of your mental health, because what I've noticed around कि इस time period में people are getting frustrated, they're becoming tense, they're very worried about the future. But if you look at the bright side, there are new opportunities that are opening. The world has came closer. एक global जो doors open हुए इस time period में, opportunities open हुई हैं. So one has to adapt to those and look at those different opportunities coming towards. मैम इसमें एक चीज आपसे और पूछूंगा, जो आजकल एक ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि आपने you've been teaching for over a decade now, माशाल्लाह, तो अब का जो टाइम पीरियड है, आपने देखा है लोग आर्ट की तरफ बहुत आ रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ बहुत आ रहे हैं. लाइक पहले it was all business, doctor, engineers, but now we've seen that people are coming towards शेफ बनने के लिए लोग आ रहे हैं. They're coming towards fashion designing, they're coming towards the media side. मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो किया है last 5-10 years में. So what would you advise to all those people who work to जिनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव साइड पे चलता है? अच्छा, I don't know if I'm really a good person to advise here or not, but मैं आपको बताऊं, मैं खुद थोड़ी सी ना टेक्निकल साइड के ऊपर ज्यादा हूँ. मेरा अपना दिल ये करता है कि मेरे स्टूडेंट्स के पास एक टेक्निकल डिग्री और एक क्रिएटिव डिग्री हो तो आई एम ओके विद दैट. बट द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, लाइक यू सेड, एंड आई टेक इट फ्रॉम देयर, yes, now creativity, arts, you see, media has their own roles to play. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप फेयर हैं और अगर आपने अपने काम को अच्छे तरीके से सीख लिया है, no matter what profession you're in, you will excel. Two things are important. If you know your job and you're hardworking and honest, no matter what, आप मीडिया में हैं, बहुत जरूरत है अच्छे लोगों की मीडिया में. मैं समझती हूँ जितना, देखिए मीडिया, मैं और आप बात कर रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, और ये एक छोटा फोरम है. लेकिन जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं कहीं बैठकर, आप कहीं पर एक टॉक शो कर रहे हैं, तो एक छोटे से इलाके में, पंजाब का एक छोटा सा कोई इलाका होगा, कोई सा नाम ले लेते हैं, कामों की, वहां बैठ के चारपाई पे 5-6 लोग बैठे हैं और वो आपका टॉक शो सुन रहे हैं. वो आपको सुन रहे हैं, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं. मैं, आप यकीन माने, अक्सर क्लासरूम में कहती हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिल जाए, मैं सारे मॉर्निंग शोज बंद करवा दूं इस पाकिस्तान में. उसकी वजह ये है, आपके साथ आप मेरे साथ उमर, परफेक्ट. मैं मॉर्निंग शोज बंद नहीं कराऊं, मैं शायद ये कह दूं कि चूंकि खवातीन टाइम दे रही है ना, तभी वो मॉर्निंग शोज चल रहे हैं. इसका मतलब है आपको रेटिंग भी मिल रही है, लोग भी देख रहे हैं, व्यूअरशिप भी है. मैं कहती हूँ आप ठीक है, आप उसमें दिखा दें कि शादी कैसे करनी है, मेकअप कैसे, परफेक्ट, दिखाएं जरूर. मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको देख के खुश होते हैं, लेकिन उसी दौरान में एक अच्छी चीज भी बता दें ताकि लोग उसको भी सुन लें. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया के ऊपर. और जहां तक आपने कहा कि लोग शेफ बनना चाहते हैं, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट था, We've got all the time in the world. इतने टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो I won't put a time constraint है. नहीं, वो मुझे लगता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे इस किस्से को बिल्कुल याद आ जाएगा उनको. There was a student in my class, मैं उसका नाम भी नहीं ले रही बिल्कुल भी, और उसकी आइडेंटिटी भी छुपा रही हूँ. वो माशाल्लाह कोई चौथी दफा फेल हो गया मेरे कोर्स में. अब जब वो चौथी दफा एनरोल होकर, 3 दफा फेल हुआ, 4th टाइम ही गॉट एनरोल्ड अगेन. I literally walked up to him and I said, बच्चे, what is your problem? Come, let's talk. बिकॉज या तो मैं बहुत बुरी टीचर हूं कि तुम वाकई नहीं पास हो रहे हो, और या शायद तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, हमें बात करनी है. तो हमने खैर कट इट ऑल शॉर्ट. बात करने के बाद ये हुआ कि उनको शेफ बनना था और उनके वालिद साहब को बिल्कुल ये पसंद नहीं था. उन्होंने कहा था तुम ग्रेनिच से तुम्हारी लाश निकलेगी डिग्री समेत. लेकिन तो बहरहाल, मैंने, बहुत लंबा किस्सा है, मैं आई डोंट नो व्हाई, बट आई रीच्ड अप टू हिज फादर. वन फाइन डे आई टुक अ नंबर. मैंने क्रिस्टल से कहा कि मुझे इसका नंबर चाहिए, और नंबर लेके मैं घर गई, मैंने उनको कॉल की एंड वी स्पोक एंड ही सेड कि जी मेरा एक ही बच्चा है और मैं चाहता हूं कि वो. मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. मैंने उस स्टूडेंट के साथ बात की और मैंने कहा बच्चे एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ ट्रेड ऑफ. तुम ये डिग्री कर लो, मैं तुम्हारे अब्बा से मनवाऊंगी कि वो तुमको न्यूयॉर्क culinary स्कूल भेजेंगे जहां तुम पढ़ना चाहते हैं. ट्रस्ट मी, ही डिड हिज डिग्री, he graduated,
he went to that culinary school और उसको पहला गिफ्ट जो उसके वालिद ने दिया, उसने मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेजी थी, मुझे याद भी याद है। बहुत बड़ा सा एक जबरदस्त किस्म का कटलरी सेट था जो मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें कोई 50 किस्म की मुख्तलिफ छुरियां थी चीजें काटने के लिए। आई हैड नेवर सीन दैट बिफोर, बट आई फील अगेन दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू डू फॉर हिम। तो ये शेफ वाली आपने बात की तो मुझे वो याद आ गया। ही बिकेम अ रियली गुड शेफ देन। एंड एक अच्छे टीचर की सबसे अच्छी बात ये होती है जो हमेशा यादगार रह जाते हैं, वो अपने स्टूडेंट का वो हिडन टैलेंट, वो हिडन पोटेंशियल देख लेते हैं और उसको उसमें हमेशा सपोर्ट एंड प्रमोट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट मिसिंग दीस डेज के एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक पुश, एक छोटा सा पुश चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, लिटिल लाइट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट नीड्स टू क्रिएट वंडर्स। सो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है एक और बात पे। वैस खान बहुत मसरूफ आदमी, अब तो आपको पता है वैस तो हमें नहीं देख रहे होंगे इस वक्त। वैस मेरी क्लास में ही वॉक्ड इन एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, वैस व्हाट इज दिस हेयर स्टाइल? एंड आई मीन ही सेड, मिस ये तो मेरा स्टाइल है प्लीज। मैंने कहा नो नॉट हैपनिंग, ये बाल शाल कटवाएं आप जरा, यू नीड टू लुक लाइक अ बिजनेस स्टूडेंट, कम ऑन, आई मीन देयर हैज टू बी। अच्छा वो ना बड़ी पोनी शोनी कस के ना बना के आना शुरू हो गया। बस मैंने कहा वैसे इस तरह नहीं, मुझे नहीं पसंद ये, यू हैव टू लुक लाइक प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर बिजनेस स्टूडेंट। तो माशाल्लाह फिर अल्लाह ने उसको, आपको पता है, बड़ी तरक्की दे दी, बड़ा नाम हो गया उसका। वन डे आई वॉक्ड इन द यूनिवर्सिटी में, गेट से एंटर हुई तो वैस सामने खड़ा था। वो आ गया एंड ही ऑलमोस्ट ही इज लाइक, मिस हाउ आर यू? आई एम लाइक, हाँ वैस तुम्हें बहुत मुबारक हो, मुझे पता है कि तुम फेमस हो गए। सर मिस, वो अगर आपने मेरे बाल कटा दिए थे ना, मैं ना फेमस होता, तो थैंक यू वेरी मच, यू लेट हेयर। और मैंने बाद में रिसर्च की, मुझे पता चला वैस इज फेमस फॉर हिज हेयर अमंग द फैंस। तो मैंने कहा शुक्र है मैंने बाल नहीं कटाए बच्चे के, वरना कैसे मशहूर। थोड़ा सा एट टाइम्स डिफरेंट होना, ये एक यूनिकनेस भी बच्चे की, जरूरी चीज ये कि फोकस हो। एज यू सेड कि आप चाहे कोई भी आपकी स्किल है, इफ यू आर गुड एट दैट स्किल, you should believe in yourself and you will always excel. Focus should be there and the self-belief should be there. And what we're seeing, the change of trends in education as well, that rather than full degrees, now even Oxford and Harvard are focusing on skill-based education. That is enhancing skills of people, that, is a wider term. So, of course, times are changing, things are changing, but एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी और वो ये है कि जो एक फोकस है, डिटर्मिनेशन है और जो एक एक्सपीरियंस का रोड है, उसका कभी कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा। यू हैव टू वॉक योर वे थ्रू, यू हैव टू लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरी टाइम यू फेल, दैट इज द बिगेस्ट, मैं कहता हूँ आपका लर्निंग कर्व होता है एवरी टाइम यू फेल, सो वन शुड बी पॉजिटिव एज वेल। तो मैम Indeed, it was a pleasure having you. बहुत अच्छा लगा, बस ये अफसोस हुआ कभी आपकी क्लास में नहीं आया होता तो फिर आज कुछ और मजेदार वाक़े आज हम शेयर कर रहे होते। But definitely we'll meet sometime soon, inshallah, once the COVID and जाने से पहले आपकी ग्रीनिच के साथ, वैसे तो बहुत मेमोरीज हैं, बट एक फेवरेट मेमोरी कोई अगर आपकी ग्रीनिच के साथ। ओके, फेवरेट मेमोरी, आई रियली हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज बहुत सारी, वाकई में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक कोई सबसे अगर फेवरेट मेमोरी मेरी है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी फेवरेट तो मैं नहीं इसको कह सकती, लेकिन एक ऐसी मेमोरी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं आज आपके इस प्रोग्राम के, आई एम नॉट श्योर इफ मैडम सीमा इज वॉचिंग दिस और नॉट, लेकिन मैं आपको बताऊं व्हाट अ वंडरफुल मैनेजर शी इज, बिकॉज शी नोज हाउ टू हैव पीपल वर्क फॉर हर एंड इन एन इंस्टीट्यूशन। मैंने बहुत जगहों के ऊपर, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ग्रीनिच इज वन प्लेस जो कि मेरी एक ऐसी जगह बन गई है जहां मैं खुशी से आती और पढ़ाती हूँ। आप नोट कीजिएगा कि आपके ग्रीनिच के जितना स्टाफ है वो सारा बहुत पुराना है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो पुराने हैं, सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जमील भाई को देख लें, कर्नल साहब को देख लें, आप मियाँ साहब को देख लें, बतूल को देख लें, तो मतलब देयर आर सो मेनी पीपल। ये मैं समझती हूँ कि ग्रीनिच की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, कि वो लोगों का ख्याल रखते हैं। और इसी ख्याल में मैं इस तरह फॉल की कि विद माई सेकंड चाइल्ड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, the doctor said I'm not able to sort of leave my house and be on the bed rest and stuff like that. तो मैं अपना सेमेस्टर पढ़ा रही थी और मेरी कमिटमेंट ऐसी होती कि मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती।
तो मैंने आई थिंक मैडम सीमा से मेरी बात हुई थी, सईद साहब भी बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा सेमेस्टर 1.5 महीने का रहता है और मैं पढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अगर आप कुछ फैसिलिटेट कर दें। आपको पता है उन्होंने मुझे इतना, मुझे नहीं पता मैडम सीमा को खुद ये बात याद है कि नहीं, बट उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया कि माई कार वुड एक्चुअली ड्रॉप मी इनसाइड ग्रेनिच, और मैं बस एक 2-3-4 स्टेप्स का वॉक करके बी रूम नंबर था मेरा, जो जहां जाकर मैं अपनी क्लास ले लिया करती थी। और उन्होंने मुझे डिप्राइव नहीं किया मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ने से, क्योंकि अगर मैं अपनी कमिटमेंट रखते हुए अपना सेमेस्टर छोड़ती तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती। तो ये एक चीज मुझे उस दफा लगी। और इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स जहां वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ये एक चीज ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि ग्रेनिच इसमें आउट क्लास है। यू नो, हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट इस केस में। Indeed, and that is why we call ourselves Greenwich family, because we do take care of each other. So, indeed, it was a pleasure, ma'am. It was so nice to have you. और सारे आज स्टूडेंट्स और पुराने लोगों से मिलके आपको कैसा लगा, और इस लाइव सेशन के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? What would you like to say on that? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी हम कितनी बातें करेंगे, और मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी, कहीं बोर ना हो जाए थोड़ी देर के बाद। But I think it all sort of, you see, came in when I met you and we talked about it. So good to see all my students. शिफा ने भी बीच में एक मैसेज किया, मैंने उसको देखा। शिफा मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, हम आज भी मिलते हैं। ओके, थैंक यू शिफा का ये कमेंट अब आप दिखा रहे हैं मुझे, तो थैंक यू शिफा। वंडरफुल मेमोरीज जी, मेरी बहुत एसोसिएशन है ग्रेनिच के साथ, लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, सब लोगों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड रखा, जिस तरह ग्रेनिच ने सारे टाइम में आ करके अपना रोल अदा किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी जो मेरी क्लास थी पाकिस्तान इकोनॉमी की, हमने पूरी क्लास जूम पे की और हमने पूरा सेमेस्टर गुजारा। आप यकीन कीजिए वो स्टूडेंट्स मेरे आज भी मेरे साथ इन टच हैं। अभी हम बजट के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज उन्होंने मुझे एक मैसेज किया एंड आई हैव टू सॉर्ट ऑफ गेट बैक टू देम कि बजट कैसा था, क्या चीजें थी उसके अंदर। यू नो, ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका हमारा ग्रेनिच की वजह से बनता है और फिर आगे चलता चला जाता है। आई चेरिश इट, आई थॉरली चेरिश इट। एंड वी कंप्लीटली चेरिश द फैक्ट कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज आपसे मुलाकात हुई और एक रीयूनियन हुआ आफ्टर अ व्हाइल। सारे पुराने स्टूडेंट्स एंड एवरीवन आर हियर टुगेदर। Thank you for making them meet me. Thank you. You're completely welcome, and thank you for your time. Stay safe, stay happy, keep smiling, and keep doing the wonderful work that you've been doing for years now. Thank you very much. All right, thank you. Khud Hafiz. Khud Hafiz. So you heard Miss Mavish Amir and the wonderful thing she has to say, or utna experience रहा है banking sector में, and how she's leading the whole credit risk management team, and जो जितनी उन्होंने हमारे साथ बातें शेयर की बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, आगे अगर आप बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से, अपनी टीचिंग करियर के हवाले से, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड, उसकी जो एक खास बात होती है वो भी उन्होंने शेयर किया। एंड ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स स्माइल्स ऑल अराउंड। और जिस तरह से हमारे साथ सारे आज लोग रहे हैं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कमेंट किया है, वेल सबके चेहरों पे मुस्कुराहट मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड दैट्स द बेस्ट बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, बिकॉज इट लास्ट फॉरएवर. So this was our session for today. We'll definitely be back tomorrow, inshallah, with another session with another guest. And please do leave your feedback in the comment section. आप किस टॉपिक पे अगला सेशन देखना चाह रहे हैं, आप किस गेस्ट को हमारे लाइव सेशन में देखना चाह रहे हैं, please leave your comments. And until next time, stay safe, stay positive, keep smiling, and Pakistan Zindabad. Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing. And looking at the distinguished
alumni of the Greenwich University. I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल हैं। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। मैं हूँ, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बाखैर। हम आपका दिन होगा और नहीं भी अच्छा प्रोग्राम के थ्रू आपकी बहुत ही खूब गुजर बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं हम आपके साथ उठाकर सबसे पहले अच्छी बात जिन्ना की उनका एक अकवाल, उनकी अकवाल देखने को हमारा वतनी और साथ साथ मोटिवेशन का लेवल होता है। ये भी कहा इज्जत और वक़ार इंसानी इदारा और वक़ार नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। अब उन्होंने बोली है, आप कितना वजन है कि होती हैं, यानी से हर चीज आपकी जो जाता है। हमने आज ये शेयर कीजिए और हम उम्मीद करते पसंद आई होगी। इशू, सोशल इशू, सोशल मीडिया, सोशल तो एक निजी है, वहां पर एक और उस गेम जो है पार्ट को, यानी कि जो क्रिएट किया हुआ था उसको शुरू कर दिए और पोस्ट को, यानी कि जो गया और जो है वो एग्जिट और वो जो नहीं लगता कि आप प्रोग्राम क्योंकि कर रहे होते और दुनिया देखा जा रहा हो इस तरह के बच्चे हैं, तो बच्चे लेके का उठ जाते से आप अपने बच्चों थप्पड़ आपस में मजाक आप मार रहे हैं उसको। ने देखी कहा कि नहीं थे, एंकर ने किए सामने रखे, ने कहा कि इन को कमेटी से कहा तो सोशल जो है कुरैशी, या आपने फैसला इस वीडियो को आप देखें कि आपके कुरैशी को की चाहिए थी। लगता है जो मेरे शायद का इस ऑडियंस रहे थे, बात वाज़ेह कर का एक बड़ा नाम है, कलाकार हैं, जिंदगी कर रहे हैं और मैंने उनको करते हुए देखा। यही वजह है आप करेंगे
वाले भी आप उनसे कि ये करें मामला है और बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने वो एग्जिट कर दिया उस वक्त और कहा, लेकिन चेक के साथ लोग जो तनकीद करते हैं आप कि उन सही किया और हुआ जो और मुख्तलिफ भी जो है शो पे नहीं है या नहीं, तो ये मिला जुला रद्द वाले से जो है आप क्या समझते हैं? हमने सोचेंगे ये भी करते हैं जो है वो होगी और वो भी आप हमें रात में आप लोग खाना पसंद कल एक्टिविटियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में तो लोगों के दिन में रात लाइट सिर्फ डिफरेंट है और खाने डिफरेंट है, तो बड़ा वो सुबह जाता है उनके जो खाने डिफरेंट होता है। इस वक्त यकीन प्लानिंग कर रहे हो खाना है जो भी ये अपना बहुत हम तो प्लीज इसको जो कुछ के जरिए आप पहुंचा आपके कमेंट्स को उनका हिस्सा अपना बहुत पाकिस्तान This is your challenge. You're the true leader. All your endeavors. Hi, Professor here of Research at University, the very best of and all those on the very best future career. And I'm a alumni of Greenwich. I did both honors from Greenwich, working as a dietitian at Stanford, London. I think the one piece I have is that always in the room because that has really served very well in my career. People might think have a good good. I don't know, not be the best. I can tell you is work Greenwich has had such a strong friends and that it has only to achieve success.
My name is 89. Started off with my affairs. So also professors Malaysia. So far, a major not what to put role in my life. This is 45 you are you each the first यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me उमर खान। और जैसे आप लोग जानते हैं लाइटर नोट पे फैकल्टी सीरीज़ जारी है और आज जो हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ उस प्रोग्राम के लिए क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा फिल्म के हवाले से, सिनेमा के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से और जितने बाकी मीडिया की रेलेवेंट चीज़ें जिसमें जर्नलिज्म भी आती है और बाकी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़ाहम साहब जो कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी हैं और साथ ही साथ ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इनका रहा है इन द फील्ड ऑफ मीडिया। मुख्तलिफ चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया है, इन्होंने टेलीफिल्म्स डायरेक्ट किए हैं, कमर्शियल्स डायरेक्ट किए हैं और इनका फील्ड में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। बड़े बड़े नामों के साथ इन्होंने काम किया है और अब वो सारा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स में यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 7 साल से ऊपर इनका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और आज हम कोशिश करेंगे कि उससे हम भी कुछ सीख सकें। सो वेलकम टू द शो सर, होप यू डूइंग वेल। थैंक यू उमर। सर कोविड का टाइम है, हम सब परेशानियों में और बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम भी हो रहा है। कोविड का लॉकडाउन का भी सिनेरियो है जहाँ एहतियात करनी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी कोविड में हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये रहे हमारे मास्क, हम वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीनेटेड होने के बाद हमें यहाँ पे अप्रूवल मिलता है अंदर आने का और शो करने का। तो आप लोग भी एहतियात करें क्योंकि हम जब एहतियात कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा एहतियात बनती है ना। सर जैसे मैंने जिक्र किया आपके सारे मीडिया के एक्सपीरियंस का, चीज़ों का, उससे थोड़ा पीछे जाते हैं। मीडिया के अंदर इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और कब आपको लगा कि दिस इज़ माई फील्ड और मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? अच्छा, ये तो बिल्कुल एक एक्सीडेंटली मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया क्योंकि मैं 98 में मैंने अवामी मरकज़ ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कस्टमर सेल्स ऑफिसर। 2 साल की एक्सपीरियंस के बाद वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। एक मेरा दोस्त अदील फ़िरोज़ जो कि इस वक्त इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा नाम भी है, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, तो उन्होंने मुझे इंडस में रेकमेंड किया। और इंडस से पहले इंडस का जो प्रोडक्शन हाउस था, कंबाइंड प्रोडक्शन हाउस, उसके अंदर एज एन असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया और फिर चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। पहली बात तो ये पता चली कि जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, राइट, मीन्स कि जी आप नेक्स्ट टू डायरेक्टर हैं। उससे पहले तक फिल्म्स देखने का, टीवी को फॉलो करना या बॉलीवुड सिनेमा या हॉलीवुड सिनेमा को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा होता था, तो वो एक चार्म नज़र आया। और उसमें उसके बाद फिर
जब डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से जाकर मुलाकात होने लगी तो वो एक ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया, एक लर्निंग एलिमेंट, एक लर्निंग कर्व आपके सामने आता गया और वो चैलेंजेस हमने लेना शुरू किए। मैं और अहमद जहांसेब हम दोनों साथ एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के अंदर थे। तो वो एक वंडर बॉय का एक्सपीरियंस और उसके साथ हम चीज़ों को लर्न करने के लिए आ रहे हैं। फिर जो मेरे डायरेक्टर थे आतिफ अमीन ठक्कर, जो कि सीक्वेंसेस के कीबोर्ड प्लेयर्स भी थे। तो सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते रहे जिनको आप पहले शायद टीवी पे देखा कर रहे होते थे। तो वो एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता गया और टाइम का आज तक पता नहीं चला, आज तक सीखने का अमल जारी है। एब्सोल्युटली। अब इसमें एक चीज़ आती है, सर ने जिस एरा की बात की, पाकिस्तान का एक गोल्डन एरा कहा जाता था, 70s, 80s, 90s तक जो रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ गया। ऑल्दो टेक्नोलॉजी ने बड़ा इम्प्रूव किया, हमारी मूवीज़ अब बहुत अच्छी आने लगी। रिसेंटली अगर बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी इस वक्त एशिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट है। लेकिन उसके बावजूद जो एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट जहां आया, हमने देखा कि वो जो एक आज का स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, पढ़ के फील्ड में जा रहा है, जो आपका टाइम था 90s, 2000s या उससे पहले, वहाँ एक मेहनत होती थी, एक प्रोसेस होता था। टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा आपके पास चीज़ें नहीं थी, ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे जहाँ आप मज़े से एडिट कर लें, आपके पास ऑटो करेक्टर्स नहीं थे, आपके पास लाइट रूम जैसी चीज़ें नहीं थी और बेतहाशा चीज़ें, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, वो सब नहीं था। तो वो सब आप लोग अपने एक्सपीरियंस से करते थे, वो सारी चीज़ें डेडिकेशन से करते थे, एक टाइम लगता था एक चीज़ करने में। आज के बच्चे वो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, यू नो द हार्डशिप, द स्ट्रगल यू गाइस वेंट थ्रू। और अब जो एक टाइम चेंज हुआ है, तो अब जो एक वर्क एथिक बच्चे की चेंज हुई है, या आज के जो नए मीडिया पर्सनल्स हैं जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली इंडस्ट्री में आए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो पुराने एक्सपीरियंस सीजन्ड डायरेक्टर्स को कहते हैं कि जी ये आउटडेटेड हैं और उनको नई चीज़ें नहीं पता, सो क्या बताना चाहेंगे कि वो कितना मेहनत का काम था और आज जब आप वो कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक मच 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 इजियर वर्क टू डू। देखिए, क्योंकि आपने अपने सवाल में बहुत सारे एंगल्स को आपने कवर किया, मैं शुरू करूंगा सेलुलॉइड से जी, फिल्म कैन से, क्योंकि जब हम आए इंडस्ट्री के अंदर और कंबाइन में जब हम पहुंचे, 99 की बात है, तो उन दिनों पाकिस्तान में जना फिल्म का बड़ा बूम था। क्रिस्टोफर ली, जमील देलवी साहब, उसकी जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन मिली थी वो कंबाइन प्रोडक्शन हाउस को मिली थी। तो वो एक एक्सपीरियंस हमारे सामने से गुजरा कि सेलुलॉइड पे किस तरीके से काम हो रहा है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड क्या होते हैं, आउटडोर के लिए कौन सा आसा यूज़ हो रहा है, इनडोर के लिए हम कौन सा आसा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर यूमैटिक का सफ़र, यूमैटिक के बाद फिर बीटा, डीवी, डिजिटल वीडियो, मतलब हमें कैलकुलेटेड टेप्स मिला करती थी कि ये टेप अगर ऑफ एरर नहीं है, अगर गई तो गई, तो ये नहीं कि डिलीट किया, इरेज किया और नया शुरू, नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता था। और हमें अच्छे से याद है कि डिजिटल वीडियो का जब कॉन्सेप्ट आया तो 64 एक डीवी होती थी, उसका मतलब कि 1 घंटे का कंटेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 124 और 184 कि आप 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे का फुटेज बिट्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर। तो हमें वो कैलकुलेटेडली मिला करती थी कि ये जो आपको टेप मिल रही है ये इतने एपिसोड्स के लिए मिल रही है और आपने इसको एक दफ़ा रिसाइकिल करना है, इससे ज़्यादा आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। फिर जब हम शो से स्विच हुए ड्रामे के ऊपर, तो बीटा का माहौल आ चुका था, बीटा फॉर्मेट आ चुका था। अब कैमरा सेम है, उसका डॉक चेंज हो जाएगा, कभी डीवी का डॉक लग जाएगा, कभी बीटा का डॉक लग जाएगा। फिर वो एक एक्सपीरियंस कि क्वालिटी ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि नॉर्मली वीएचएस तो सारे घरों में हुआ करते थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट टेप और उसके जो बैकग्राउंड और उसके जो इक्विपमेंट्स की हमें जो चीज़ें चाहिए होती थी कि हम उस चीज़ को रिकॉर्ड एग्जैक्टली कर सकें। और फिर 2004 मुझे एग्जैक्टली याद पड़ रहा है कि पहली दफ़ा हमारे पास HDV कैमरा, वाइब टीवी में मैं उन दिनों काम कर रहा था, उमर शेख साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका बहुत अहम किरदार भी है। तो 1080p के नाम से सोनी का ये कैमरा आया, जिसमें हमें 2 ऑप्शंस मिला करते थे कि या तो आप मिनी डीवी पे शूट कर लीजिए
या फिर आप हार्ड डिस्क माउंट कर लीजिए। अब हार्ड डिस्क माउंट करना बहुत मुश्किल था। मुश्किल इस सेंस में था क्योंकि जो हार्ड डिस्क का जो जैकेट आया करता था उस दौर में वो बहुत एक्सपेंसिव था। बिल्कुल। और डीवी हमें मिनी डीवी का वैसे ही एक फॉर्मेट ही होता था क्योंकि वो हाई स्पीड शूट किया करती थी। 60 मिनट का कंटेंट जो है या 60 मिनट ड्यूरेशन आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते थे 42 मिनट्स में। राइट। तो आपकी शटर स्पीड ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती थी। तो ये तमाम एक्सपीरियंसेस मज़ेदार थे। और आज अगर हम कार्ड्स या आज हम हार्ड डिस्क लगाते हैं अपने कैमरे के ऊपर, आज अगर हम प्लेबैक लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको डिलीट कर दो, उस वक्त डिलीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। राइट। उस वक्त आपने जिस तरीके से कहा कि हमें सिर्फ शिफ्ट मिलती थी 8 आवर्स की एडिट के ऊपर। हमें डीवी ग्रैब भी करनी होती थी, मतलब हमें टेप भी ग्रैब करना है, हमें एडिट भी करना है, हमें उसकी कॉपी भी बनानी है। मतलब ये एक टास्क होता था और उस दौर में एडिट बहुत मुश्किल से मिलती थी। राइट। एक असिस्टेंट को या एक डायरेक्टर को वीक में 1 से 2 शिफ्ट्स मिलती थी। अगर उसके 2 शोज़ हैं तो उसको 2 शिफ्ट मिलेंगी, वरना एक शिफ्ट के अंदर आपने अपना काम डिलीवर करना है। एब्सोल्युटली। अब हम जब पढ़ा रहे होते हैं हम ये बताते हैं कि जी प्री प्रोडक्शन के ऊपर आप ज़्यादा टाइम लगाइए, पोस्ट प्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाइए, लेकिन टीवी का जो एक बिहेवियर है वो बिल्कुल बरक्स है सिनेमा के। और टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से, पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री डे 1 से बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी मॉर्गन गोल्ड का फिर पिछले दिनों, आई एम सॉरी कि मैं ब्रांडिंग एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। हम डिजिटल पे, हमें आज़ादी है। हमें परेशानी तो स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन का वो प्रोडक्ट था, मोइन कुरैशी और ये तमाम लोगों ने उसको किया। तो वो जो अच्छा वो मुझे दौर एग्जैक्टली याद है, पीटीवी का दौर, लेट 90s का दौर। वो जब कमर्शियल 3-3.25 मिनट, आई गेस 3 मिनट की ड्यूरेशन थी उसकी, और उसमें चारों प्रोविंसेस को दिखाया गया था, उनके कल्चर को दिखाया गया और किस तरीके से कंटेंट को कनेक्ट किया था आकर। क्योंकि फ्रेम्स दिखाना फेयर इनफ, लेकिन आपका अगर कंटेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं देखेंगे। मैं जब मैट्रिक क्लास में था, आई गेस 1994 ईयर्स, उम्र का अंदाजा लगा लें साहब। जी। तो उस वक्त एक कंटेंट पीटीवी ने लॉन्च किया, ऐनक वाला जन। और उसके अंदर हमें एक चीज़ नज़र आई कि जी कालीन उड़ रही है, डिफरेंट ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं हमें। अच्छा, ये उस वक्त तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आई। जब हम इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए फिर हमें इन चीज़ों का पता लगा, तो ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। इसके लिए जो टर्म यूज़ होती थी, क्रोमा के नाम से टर्म यूज़ होती थी। तो उस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद है कि मेट्रॉक्स कार्ड लॉन्च किया गया, हार्डवेयर एक लॉन्च हुआ जो कि रियल टाइम आपको आपका आउटपुट दे रहा होता था। और इनसाइट उसका सॉफ्टवेयर था। तो वहाँ से एक लर्निंग एलिमेंट ज़्यादा शुरू हुआ। फिर इंडस विजन में मेरा एक शो था चॉकलेट ड्रीम्स के नाम से। अच्छा, म्यूज़िकल शो था, हम गॉसिप करते थे, हम टिप्स दिया करते थे कि जी अगर एक लड़के ने मोहब्बत करनी है तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से वो लड़की को अट्रैक्ट करेगा। कामयाब हुई कुछ कोशिश पे? सर वो शो बड़ा कामयाब था। अब लोग उससे कामयाब हुए या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन शो कामयाब हो गया। तो वो थ्रू आउट हम वो शो क्रोमा पे किया करते थे। अच्छा, जब पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस मेरे सामने हुआ कि एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ले जाकर, अच्छा ग्रीन और ब्लू का भी कॉन्सेप्ट एक इस तरीके से क्लियर हुआ कि आउटडोर के लिए ग्रीन क्रोमा यूज़ किया जाता था, इंडोर के लिए ब्लू क्रोमा यूज़ किया जाता था। जब हम डिजिटल में कन्वर्ट हुए तो फिर ऑटोमेटिकली ब्लू स्क्रीन जो है वो उसका इस्तेमाल कम होना शुरू हुआ क्योंकि ग्रीन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। फिर हम उसको उन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इस्तेमाल करते रहे कि जी अगर हम इंडोर कोई सीन अगर हमें आउटडोर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो फिर हम वहाँ पे ब्लू स्क्रीन को यूज़ किया कर रहे होते थे। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ क्योंकि ख़ुद सीखने में एक मज़ा आ रहा था। अच्छा, जब पहली दफ़ा वो शूट होकर एडिट पे आया तो
लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट, राइट, कि पहले रेग्स हुआ करती थी, 2 VTRs हुआ करते थे, उस पर बीटा की 90 मिनट्स की टेप्स लगाई जाती थी और वो लीनियर एडिटिंग के ऊपर शूट किया जा रहा होता था। तो आई गेस अब सही है सर, वो आपके बॉडी में लग रही है, थोड़ा सा बाहर वाले साइड पे लगा, सही है, अब सही रहेगा। तो मेट्रॉक्स का ये जो सिलसिला आया, जब पहली दफ़ा हम एडिट पे पहुंचे, डेटा ग्रैब हुआ, ग्रीन स्क्रीन एकदम ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गई, और आतिफ अमीन ठाकुर उसके डायरेक्टर भी थे, क्रिएटिव भी वही देख रहे थे, तो उन्होंने 3 डायमेंशन बैकड्रॉप उन्होंने डिज़ाइन किया, तो वो एक अलग इम्पैक्ट। ये सर साथ व्यूअर्स को वो टाइम एरा भी बताइएगा, क्योंकि अब वो परेशान हो रहे होंगे 3D की बात करें 70 के ज़माने में, तो ये एरा ये अब हम एंटर हो गए हैं अराउंड कोई 2001 के अंदर। तो 2001 की बात हो रही है, जहाँ आज देखने वाले सुनने वाले कहेंगे जी अब तो 7D के ऊपर आ गए, 3D की बात हो रही है। तो 3D का उस वक्त की बात हो रही कॉन्सेप्ट जब ये लोगों को पता ही नहीं था। जैसे हमारे वहाँ टच स्क्रीन फ़ोन जब पहली बार आए, जो कीपैड इस्तेमाल करते थे, तो वो एक नई चीज़ थी। iMate के फ़ोन आए तो हम परेशान थे कि क्या चीज़ है, लेकिन अब किसी बच्चे को बोलें जी कीपैड का फ़ोन, तो वो हमारी शक्ल देखेगा हैरत से। तो इस तरह ये 3D की उस वक्त की बात है जी। तो इस तरीके से ये एक लर्निंग कर्व शुरू हुआ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जी एक टाइमलाइन आई, उसके ऊपर एडिटर ने इन और आउट लगाया, उसके ऊपर उसने लिंक पैच किया और वो नेक्स्ट लिंक के ऊपर चला गया। अब पहली दफ़ा तो मुझे ये इस चीज़ को मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि यार ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, मतलब कितना बड़ा डेटाबेस है इसके अंदर। लेकिन नहीं, ये पता चला कि जी ये आपको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी शूट से पहले ये सारी चीज़ें आकर आपने कॉपी करवानी है, या एडिट से पहले आपने कॉपी करवानी है, कि आपका जो 8 घंटे का जो टास्क है कि आपको अपनी पूरा एपिसोड 22 मिनट का, 18 मिनट्स का, आधे घंटे का स्लॉट में वो आपको डिलीवर करना है। तो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब डे 1 से फर्स्ट AD या असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, राइट, क्योंकि जितना बर्डन है वो उसके ऊपर है, हर चीज़ का आंसरेबल वो है, कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो भी उसके खाते में कम आती हैं, लेकिन बुराई ज़्यादा हो जाए तो वो सबके सामने नज़र आ रही होती है। तो वो एक अच्छा एक एलिमेंट था। तो लीनियर से एक रेग से एक कंप्यूटर तक का सफ़र। इसमें यहाँ एक ये सवाल है कि अब तो ये चलें कंप्यूटर पे एडिटिंग और ये सब होती है, जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो उस वक्त एडिटिंग कैसे होती है? हमने देखी कि उसमें ग्राफिक्स भी होते थे, चीज़ें भी होती थी। हमने पुरानी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी, 1930s में किंग कॉन्ग उस वक्त से आ रही है, तो उस वक्त भी सारे मामला थे। तो वो किस तरह से करते थे? देखिए वो दौर है, आप 60s का एरा जो आप बता रहे हैं, स्टार वॉर्स से ये अगर ये हम इसका बैकग्राउंड लें एनिमेशन का, या अपने एंड क्रेडिट्स या स्टार्टिंग क्रेडिट्स का अगर हम रेफरेंस लें, तो वो 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट था। अब उस 2 डायमेंशन को वो किस तरीके से मैट शॉट्स के अंदर कन्वर्ट करते थे, क्योंकि ये सेलुलॉइड का टाइम, अब सेलुलॉइड में आपके पास 3 लेयर्स वीडियो की हैं, 1 लेयर आपके पास ऑडियो की है, क्योंकि मिड 60s में टेक्निकलर्स की टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है। तो खालिद साहब मुझे यहाँ पे याद आते हैं, आई डोंट नो कि अगर वो इस वक्त दुनिया में हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। वो एडिटर हुआ करते थे सेलुलॉइड के, ओके, और डार्क रूम में जिस तरीके से वो चीज़ों को एडिट करना, डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई करना, और आप उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते थे, किस तरीके से आप शूट करते थे। तो ये 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, फिर ये 3 डायमेंशन के अंदर आना, ये एक बेहतरीन सफ़र। और लीनियर एडिटिंग मतलब रेग्स लट्टू हुआ करते थे, उन लट्टुओं को फ्रेम बाय फ्रेम आप लेके जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी डिटेलिंग है। दिस इज सो फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड कि हम देखें उस वक्त की बात, जो चीज़ें हमने अपनी आँख से ना देखी ना कभी देखेंगे, बट फ़ाहम साहब उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, उस प्रोसेस से गुजरे हैं। इमेजिन करें कि मैंने पहले भी हमारे पास में गेस्ट रहे उनके, वो उस वक्त फोटोग्राफी करते थे जब शॉट लेने के बाद यूँ डिजिटल पे देख नहीं सकते थे कि शॉट कैसा है। वो वॉश होने के बाद पता चलेगा कि वो मोमेंट कैप्चर हुआ
कि नहीं हुआ, खासतौर पे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की अगर इसी बात करें। हवाले से, क्योंकि जब शूट हुआ कर रहा होता था और जब सेलुलॉइड का टाइम था, तो उस वक्त सिर्फ अगर किसी की नॉलेज में होता था तो वो डीपी की नॉलेज में होता था कि ये चीज़ रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं है, और वो भी कोई इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता था कि ये मेरी चीज़ रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। इसीलिए फिर उस टेक्नोलॉजी को मज़ीद एडवांस किया गया और व्यू फाइंडर, डायरेक्टर्स व्यू फाइंडर का एक कॉन्सेप्ट आया गया जी। शायद अगर आप थोड़ा सा अगर पिछले दौर में बीटीएस अगर देखते रहें तो आप देखते होंगे कि ट्रेन के ऊपर दो चेयर्स लगी हुई होती थी, एक डायरेक्टर की और एक डीपी की, बिल्कुल, और उसके पास एक अलग व्यू फाइंडर है, वो उसको अलग जज कर रहा है कि जी मेरा शॉट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए शायद मज़ेदार भी थे, और फिर मतलब जब मुझे वो अच्छे से याद पड़ता है कि जब मेरी मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब से पहली दफ़ा मुलाकात हुई, तो जिस मोहब्बत से उन्होंने हमें बुलाया था, मतलब ना हम उन्हें, वो हमें नहीं जानते थे, हम तो उनको जानते थे जी, उनको तो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन शफ़क़त से आप अगर किसी को अपनी तरफ बुलाते हैं तो वो एक आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, अगर वो कहीं पे कोई मुख्तलिफ हिजाब लेकर बैठा हुआ है कि जी मैं अगर इस तरीके का सवाल करूँगा तो वो इनको बुरा ना लग जाए, यही अमल काजी वाजिद साहब, यही अमल, मतलब वो कंटेंट एक मिड 70s का तालीम बालगान पीटीवी के ऊपर किस तरीके से सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता था, क्योंकि हमें सबसे पहले तो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि कंटेंट या टीवी या सिनेमा है किसका। बिल्कुल, अभी इत्तेफाक से शजीद साहब से भी डिस्कशन हो रहा था कि जब तक आपको ये ना पता चले कि जी मासेस हैं किसके लिए, मासेस के लिए ये कंटेंट हमने बनाना है, वो हमारे फॉलोअर्स हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टीवी के ऊपर आज के दौर में कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट करनी है, तो आप क्यों उसको फिल्म फॉर्मेट पे जाकर 8K पे और 12K पे शूट करेंगे? आपके लिए 2K इज़ क्वाइट इनफ। आप उसको कंप्रेस करेंगे, आपकी जो शार्पनेस, आपको जो कलर ग्रेड और उसकी जो एक डिटेल्स निकालनी है, वो आपको इजीली 2K से आपको डिलीवर हो सकती है। पर इन सारी चीज़ों के लिए वो अवेयरनेस और नॉलेज चीज़ें ज़रूरी हैं, और इसीलिए यहाँ जब हम मीडिया स्टडीज़ की बात करते हैं और इतने एक्सपीरियंस सीजन टीचर्स जब यहाँ होते हैं तो वो आपको ये चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि कहीं अगर आप ऑडियो पे या वीडियो पे यूट्यूब पे कोई चीज़ देख के फॉलो करें, तो जब तक आपको एक प्रोफेशनल गाइड नहीं करेगा, यू कैन नेवर रीच टू दैट। हाँ, कर करके इंसान सीख लेता है, लेकिन एक उस्ताद से प्रॉपर सीखने में जो फिर बात आती है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सर ने बात की, तो आप वहाँ से काम प्रैक्टिकली सीखते हैं अंडर सुपरविजन। So a supervision of an experienced guider is very important. Sir, as much as I'm loving this session, ये topic इतना deep है कि ये हम चलते ही चले जाएं, लेकिन हम before we end कुछ rapid fire की तरफ हम आते हैं और कुछ quickly आपकी हम Greenwich memories के हवाले से बात करते हैं। So सर, Greenwich में जब आप आए, first memory आपकी Greenwich से क्या है? अच्छा, ग्रेनिच के साथ जब मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ तो मेरा पहला सेमेस्टर जो था वो MS के स्टूडेंट्स थे। ओके। और उनको मुझे मैस कम्युनिकेशन थ्योरीज पढ़ानी थी। अब थ्योरी और कंटेंट की मैचिंग करवानी थी उनको। वो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। अच्छा, IQ लेवल, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज विजिटिंग लेक्चरर में पढ़ाता रहता हूँ, कुछ ऐसी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका IQ लेवल डिफरेंट है। Greenwich is one of them. Different in a good sense or a bad sense? No, definitely in a good sense. Yes. क्योंकि देखिए, जिसमें लर्निंग कर्व है, एक्सपोजर बड़ा मैटर करता है। डिबेट से हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मंटो याद आ जाता है, एनशा जी याद आ जाते हैं, और वही आज का अनवर मकसूद साहब हमारे जो आज भी चीज़ें देख रहे हैं या आज भी जो चीज़ें बता रहे हैं, वो पिछली बातें हमें पता लग रही हैं। लेकिन आपका सीखने का रवैया, आपका एक्सपोजर, आपका डिस्कशन के अंदर हमेशा आपको लर्निंग मिल रही होगी, क्योंकि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएंगे। एग्जैक्टली। आप मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने खान लियाकत अली खान साहब से वो शुरू हुए। कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले जो 1857 के फर्स्ट रेवोल्यूशन से चीज़ों को रिलेट कर रहे थे। They knew their history, मतलब जिसका जो एक्सपोजर था।
कोई ऐसा था कि जी जो बिल्कुल ये कॉमन सी बात करने के लिए आ जाता था, लेकिन एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा सवाल इररेलेवेंट है, राइट, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो शायद हमें अपने आप से दूर रखने चाहिए। ग्रेनिच के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुझे एक वो मिला सब्जेक्ट। उसके अंदर जिस तरीके से मैंने कुछ सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल की डिटेल्स बच्चों को बताई कि जी पीटीवी जो है वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर है, उसके ऊपर कोई आपको केबल की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एंटीना लगा लें। एंटीना ना भी लगाएं तो एक सिर्फ वायर अगर आप सिर्फ अपनी विंडो से बाहर निकाल दें तो वो आपको उसकी वो मिल जानी है, ट्रांसमिशन आप फॉलो कर सकते हैं। फिर सैटेलाइट के फुटप्रिंट्स और ये तमाम चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें कहीं हमने ठीक है डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते थे, डिफरेंट नॉलेज लिया करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जो मिली वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा मिली। मैं करीब हो जाऊं कि शर्जील भाई सही है ये इस तरीके से? नहीं ठीक है, पोजीशन सही है ना? क्योंकि आप मेरा लेंस बड़ा है, आप मेरे फ्रेम में हैं, आप जो कर रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा मोबाइल पे, सॉरी माजरत जी सर। ये हमारे शो का पार्ट जब पता चलता है ना कि हम चल रहे हैं, जो एक डायरेक्टर जब बैठा हो ना तो दूसरे डायरेक्टर को कॉन्स्टेंटली नोट करता है। दिस शोज एन एक्सपीरियंस कि जी ये शो का पार्ट, और हम इसको कट नहीं करेंगे। उसकी वजह यही है कि हम आपको बताएं कि जब एक डायरेक्टर यहाँ मौजूद हो तो दूसरे डायरेक्टर डीओपी जब उधर होते हैं तो क्लैश कैसा होता है। दिस इज हाउ इट लाइफ। तो सर इस वजह से बिल्कुल, क्योंकि इट्स वी हैव टू एंड दिस एज वेल, बड़ी अच्छी एक चीज़ आपने शूट की कि वो पूरा एक्सपीरियंस जब बच्चों के साथ शेयर किया, और एज अ टीचर मैं खुद एंजॉय करता हूँ। मैं इनफैक्ट बच्चों को टोकता हूँ कि यार जब पूछो कि सब समझ आ गया कोई सवाल, तो नो सर आपने बड़ा अच्छा समझाया। मैंने बोला मैंने सही नहीं समझाया, समझाता तो सवाल आता। तो सवाल करना बहुत जरूरी, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ सवाल करें, और इतने करें कि आपको हर एंगल चीज का समझ में आ जाए। तो सवाल करना बहुत जरूरी है। जस्तजू एक चीज के लिए ना लर्निंग कर्व बड़ी बेहतरीन है। सर वेरी क्विकली वन वर्ड आपसे मैं चाहूंगा, आपका फेवरेट कोलीग एट ग्रेनिच, a person you love to work with? फराज इकबाल, शर्जील, आप, उमर। देखिए ग्रेनिच का एक और अच्छा एक बैकग्राउंड ये कि ग्रेनिच में जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरीके से हैं। That's why you call us a Greenwich family. मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता था, पहली दफ़ा मेरी आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन मुझे वो एग्जैक्टली वो मुलाकात याद है कि किस तरीके से आपने वेलकम किया। मेरे आने के शायद एक हफ्ते के बाद आपने मेरा कोई लाइव सेशन अपने पास रख लिया था। आप मेरी क्लास में आकर ऑडियो और फॉली जो हम चीज़ें पढ़ाया करते थे साउंड के हवाले से या म्यूज़िक के हवाले से, तो आप खुद आकर अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट हम पे दिखाया करते थे कि जी अपने स्टूडेंट्स को हमारे पास भेजें। तो वो बात वही आ जाती है कि जब एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी को ओवरशैडो कर रही है तो यही टीम होती है, यही टीम का काम है कि जब वो एक बंद मुट्ठी की तरीके से एक दूसरे को परफॉर्म करने के लिए आते हैं कि अगर किसी की कोई वीकनेसेस हैं, किसी की कोई स्ट्रेंथ है तो वो एक साथ आ जाए। तो ग्रेनिच के अंदर ये चीज़ एक बहुत अच्छी नज़र आती है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि इसमें आपको बताएं, जहाँ हम मीडिया स्टडीज़ की बात करें, ग्रेनिच हैज़ इट्स वेरी ओन वेब टीवी एंड वेरी ओन वेब रेडियो एज वेल, जहाँ हमारे पास अपना स्टूडियो है। तो जो हम पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली कराते हैं। जो हम बात करें ना असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो बाय द टाइम यू गेट अ डिग्री फ्रॉम ग्रेनिच, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इतना प्रोजेक्ट्स के थ्रू और वैसे काम कर चुके होते हैं दैट यू यूज्ड टू द इक्विपमेंट, यू नो हाउ टू वर्क इन द फील्ड, और दैट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स। सर ये हमने सारी बात की, कोई ऐसा मोमेंट कहें कि फनी मोमेंट, एम्बैरेसिंग मोमेंट, और मोमेंट यू नो लाइक टू फॉरगेट, कोई ऐसा कोई वाकया रहा हो, या कोई बच्चा हो जिसने कोई इंतहा पे आपका पेशेंस टेस्ट किया हो? हाँ, ऐसे बहुत नज़र आते हैं। ऐसे कुछ ऐसे बच्चों को वो क्या कहा जाता है, होशियार। वो होशियार बच्चे हैं। ओके। जो कि अच्छा, सबसे बड़ा मज़ेदार तो ये सीन होता है जिस तरीके से अभी आपने पॉइंट किया, अभी एक बताई बात कि जी डायरेक्टर साहब को मैं देख रहा हूँ एक अपने लेंस के थ्रू। तो अगर मेरी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट कोई भी ऐसी हरकत कर जाता है जो कि छुप के कर रहा है, या जब मैं शुरू में आया तो मुझे याद है, क्योंकि हम भी इस पूरे एज ग्रुप से गुजरे हैं, ये शरारतें हमने भी बहुत की हैं कि लेक्चरार सामने खड़ा हुआ है, पीछे से एक आवाज़ निकाल दी, तो मैं एग्जैक्टली उस बच्चे को ही खड़ा करता था कि ये तुमने आवाज़ निकाली है। तो एक आध दफ़ा तो बच्चों ने
इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है अब नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके सवालात शुरू हुए कि सर आपको कैसे पता लगता है। तो उस वक्त उनको एक चीज़ ये समझाई गई कि इस इंडस्ट्री में इंसान दो चीज़ों की ज़्यादा खाता है। एक तो उसका आई बॉल खोला होना चाहिए, उसका रेटिना इतना डिटेल में जाए कि छुप ना सके, क्योंकि ये लेंस जो इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है ये सब कुछ अयां कर देगा। इसीलिए इसको कैमरा कहा गया। ये हर चीज़ आपके सामने ब्लैक एंड वाइट रख देगा, ये ग्रे शेड में नहीं आएगा आपके साथ। दूसरी चीज़, आपके कान खुले हुए हैं। एडिसन से अगर पूछा गया था, क्योंकि एडिसन का बड़ा किरदार है हमारी इंडस्ट्री में, कैमरे से लेकर लाइट से लेकर बहुत जगहों पे इसने इन चीज़ों को लेकर आए। और जब हम हिस्ट्री इस तरीके की बता रहे होते हैं कि जी 1895 में पहली दफ़ा कैमरा बनाया गया, उसके बाद ल्यूमर ब्रदर्स ने आकर प्रोजेक्टर प्लस कैमरा बना दिया जी, तो वो एक इंटरेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। तो वो सवालात शुरू की एक आध क्लास के बाद शायद वो एक मज़ेदार डिस्कशंस का हिस्सा बन गए। फिर दूसरी एक और अच्छी बात यह है और भी सुखनवर ज़माने में बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और फैकल्टी जिस तरीके से क्लास को कैप्चर करता है या डिलीवर करने के लिए लोगों को एंगेज करता है जी। अगर वो एंगेजमेंट नहीं है, आप सॉफ्ट स्पोकन आए, आप बहुत हार्श तरीके से आए, समझाना शायद शऊर है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस से रिलेटेड या मेरा स्टूडेंट है, कि जो स्टूडेंट है सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और सबका एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। तो जब आप एज अ टीचर अपने लेवल से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा समझे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू टीच एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जिसको आप जिसकी जबान में समझाएंगे वो बेहतर समझेंगे। सो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट हमें पीछे से डायरेक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे जी हम इस शो को एंड कर दें। तो टू बी कंटिन्यूड पे हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले सर आखिरी सवाल ये कि आज इस लाइट एंड नोट के सेशन पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। मुमताज़ साहब की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे आज। शजील साहब बहुत हार्ड टाइम फेस करते रहे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोविड के अंदर भी हम सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये सेशन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड विल कंटिन्यू टू सो। मे अल्लाह प्रोटेक्ट एवरीवन आउट देयर। द कोविड फोर्थ वेव डेल्टा इज क्वाइट डेंजरस। इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड येट, प्लीज डू गेट वैक्सीनेटेड और अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने प्यारों के लिए। हम ऑलमोस्ट 2 साल से बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं। अब हल्की सी नेग्लिजेंस जो है वो वापस हमें उसी पीरियड में लेके जा सकती है। प्लीज़ बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपसे फिर मुलाकात रहेगी। एंड गाइस, दिस वाज आवर सेशन, जो कि जितना डीप टॉपिक था उसके हिसाब से बड़ा मुख्तसर सा था, क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई। लेकिन सर ने आज जितनी टर्म्स और जितनी चीज़ें पुरानी बताई उनको गूगल ज़रूर करिएगा, ताकि थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता चले कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि आज के ज़माने में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। शायद अगर आप किसी फिल्म या मीडिया के म्यूज़ियम चले जाएं तो ज़रूर आपको पता चलेगा 60s में ये होता था, 70s में ये, 80s में ये, और ये चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई हैं, लेकिन आज भी उनसे बहुत चीज़ें की जाती हैं। तो ये थे हमारे आज फ़हाम साहब। आपसे मुलाकात होगी सून नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स विद अनदर फैकल्टी मेंबर। टिल देन अपना खास ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing.
and looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये बताऊं, ही इज़ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनका जो क्राउड है वो झूम उठता है। क्राउड एंटरटेनर हैं और कमाल के सिंगर हैं। इनका हम मज़ीद आपको तारुफ कराएंगे लेकिन ड्यूरिंग द शो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी वेलकम मिस्टर अजीम खान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं उमर? ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और लाइटर नोट का पार्ट बने। माय प्लेजर सर। तो आपकी शुरुआत हम करते हैं जर्नी के साथ। आप एक सिंगर हैं और कमाल के सिंगर हैं जो कि हमारे आज व्यूअर्स को भी पता लगेगा जब आप परफॉर्म करेंगे विद दिस गिटार अलोंग। थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि शौक तो हर किसी को होता है। मैं भी बहुत गाना गाता हूँ लेकिन अकेले वो भी हेडफोन लगा के। लेकिन जब एक इंसान प्रोफेशनली गाने की तरफ आता है तो उसके बड़े चैलेंजेस होते हैं, पूरी जर्नी होती है। तो आपका ये शौक कब पैदा हुआ और आपको कब एहसास हुआ कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली देखें, सिंगिंग या कोई भी आर्ट इंसान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये, ठीक है। बाद में इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करता है, लेकिन बस यही था कि व्हेन आई वाज 5 or 6 year old तो एक शौक़ था और स्ट्रिंग्स बैंड आया था नया। उसमें जब लाल भाई जब गिटार बजा रहे थे और वो दूर गाना था तो बस उस वक्त से मुझे एक जो ना वो यानी कि जुनून सवार था कि यार मुझे जो है वो गिटार सीखना है। दैन शौक़ था, क्रेज़ आप उसको कह लें। सो फिर आगे पीछे हाथ पाँव मार के किसी न किसी दोस्त से गिटार लिया। गिटार लेने के बाद जनाब जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना तो फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि आप उसकी जुस्तजू में होते हैं। सो इसी तरीके से मुझे जो है वो हमारे ही एरिया में मुझे टीचर मिले, उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी मुझे गिटार्स के बारे में कि इस तरीके से हो। अब मैं अपनी बात पर आऊँगा दोबारा कि जब एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है ना आपके अंदर तो वो गॉड गिफ्टेड चीज़ आती है सामने। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो आई सामने तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे अंदर म्यूज़िक का सेंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैंने कहा यार बस ये मुझे नहीं पता कैसे, हालांकि हमारा कोई ऐसा यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई मेरे वालिद साहब या उनके कोई जो है वालिद साहब मतलब आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ हो। बस एक चीज़ है कि बस ये मेरे अंदर आया और तो सीखने के बाद ऐसा ऐसे जब मैंने गिटार पे थोड़ा सा अबूर हासिल कर लिया, थोड़ा सा मैं अपने आप को मतलब अभी भी यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। सो उसके बाद 2008 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। हमारा यहीं कराची का बैंड था और उसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने वहाँ पे जो है ज्वाइन किया। बस वो हम लोग जो है वो शोज़ रात को करते थे, जो है वो जा के पार्टीज़ में, गिग्स में, इधर उधर। उसके बाद अच्छा उसमें होता ये था कि शो जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, हम आर्टिस्ट को बेसिकली मतलब प्ले करते थे। तो उस आर्टिस्ट के आने से पहले एक बैंड परफॉर्मेंस होती थी जिसमें होता ये था कि बैंड का कोई भी मेंबर सॉन्ग गाएगा, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि मतलब स्टार्ट मुझसे होता था वहाँ पे। तो उधर मैं स्टार्ट करता था, ऑब्वियसली मैं गिटारिस्ट था तो मैं जो है स्टेज पे आगे खड़ा होता था। तो वहाँ पर लोग हमारे जो बैंड मेंबर थे वो ये कहते थे कि अजीम भाई आप गाएं,
आप ही गाएं क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है, हमसे तो बहुत अच्छी है, आप ही गाएं। तो मैं कहता ठीक है, तो उधर से थोड़ा सा गा के ना आवाज़ और निखर गई थी। ऑब्वियसली जब इंसान को म्यूज़िक का सेंस होता है, आपको पता है कि आप एक यानी कि म्यूजिशियन हैं, तो आपको पता है यार मुझे अपनी आवाज़ अपने इंस्ट्रूमेंट से कैसे मैच करनी है, तो इतना सेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जिक्र किया स्ट्रिंग्स को, आपने इनिशियली देखा, फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन इंस्पिरेशन है और कौन सा जॉनर है? क्योंकि आपकी 2015 में एल्बम भी आई लौट आवना, अभी हाल में ही आपका एक कमाल गाना जो कि हर किसी ने देखा होगा, जोगी के नाम से वीडियो भी इज देयर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कौन सा जॉनरा है जिसमें आपका ज़्यादा अबूर हासिल है और वो कौन से जॉनराज हैं जो फ्यूचर में हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए, मैं जॉनरा इज़ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है पॉप म्यूज़िक। सॉफ्ट रॉक इज़ बेस्ड ऑन यू नो थोड़ा सा उसमें रोमांटिक टाइप और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक जैसे मेरा जो पहला एल्बम आया था उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग, एक्चुअली मेरा सीन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रिंग्स यू नो स्ट्रिंग्स तो हर कोई जानता है, तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे ना, उससे बड़ा इंस्पिरेशन थी मुझे कि यार दूर पॉप म्यूज़िक है, ठीक है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन कि यार गिटार के साथ जो है ना वो एक आवाज़ अपनी मैच करके और फिर गाना गाना उसी थीम के अंदर रहते हुए, तो जो स्ट्रिंग्स की थी, लेकिन कॉपी नहीं किया उसको। ऑब्वियसली एक अपनी यानी कि फीलिंग थी अंदर, किस तरीके से एक अगर कुछ अपना मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना एल्बम जो मेरा जो है वो लौट आना मेरा जब लॉन्च हुआ था, उसमें जो पहला सॉन्ग था एल्बम का वो था लौट आना। तो उसमें अगर आप जो है वो सुनेंगे, किसको लौट आना कह रहे थे अभी? अगर हम मैं किसी को लौट आना नहीं कह रहा था। कहीं देखे कहते एक सिंगर एक आर्टिस्ट का जब तक कहीं कोई दिल का दर्द ना हो तब तक वो जो है ना डेप्थ नहीं आती, तो ये लौट आना के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। उसके पीछे बस ये था कि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी इस तरीके से आपको बताता हूँ कि लौट आना हमने इस तरीके से गाना बनाया था कि एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उनकी थोड़ी सी जो है ना वो असल में राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, उनकी थोड़ी सी शायरी लिखी हुई थी। तो हम बैठे हुए थे, मुझे ये एडवाइस देने वाले भी वही थे कि यार अपना कुछ करके और तुम मार्केट में आओ। ठीक है यार। तो उन्होंने मुझे अपनी ये शायरी दी थी जिसमें सिर्फ स्टार्ट की लाइन थी कि तुम लौट आओ ना मेरी राहों में, मेरी बाहों में। अब इसको बनाना था। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये मैं आपको बताया चलूँ कि कंपोजिंग भी एक अलग आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिलसिला होता है आमदों का, कि आमद होती है, लाइन आती है कोई दिमाग में, वो धुन बनती है, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए ना, लेकिन तो आपको मैंने बताया कि वो गॉड गिफ्टेड जब चीज़ होती है और आपके अंदर जब वो यानी कि पैशन और वो जो यानी कि एक रजीपन आपके अंदर होता है ना वो, तो आप फिर नहीं सोचते कि यार ये मुश्किल है। राइट। सो ऑफ कोर्स फिर आपने कॉन्सर्ट्स किए, जगह जगह किए, इंटरनेशनली गए, दुबई में आपके कॉन्सर्ट्स रहे, ऑफ कोर्स एक फ़ैन फॉलोइंग आती है। तो लौट आओना की इंस्पिरेशन से कोई पहले तो था नहीं, आपने जैसे बताया, तो फिर कोई लौट के आया? नहीं, लौट के फिर एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। सो एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस फील्ड में एज प्रोफेशनल्स आना चाहें तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, फैमिली की तरफ से एक प्रॉब्लम आता है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, लोग ज़्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं करते। आपकी जर्नी में जब आपने बेटर ऑन ये रियलाइज़ किया कि यार मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, तो कोई चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया? और जितने यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिवाइव हुआ है कुछ पाकिस्तान में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया, कुछ डिफरेंट अंडरग्राउंड आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस आ रहे हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्राउडली ग्रेनिच के भी कुछ बैंड्स थे जो उसमें जीते हैं। सो एक रिवाइवल आ रहा है, बट आपकी इस जर्नी शेयरिंग के अंदर आपका कैसा सफ़र रहा और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली देखें, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इतनी आसान फील्ड नहीं है। हम किसी आर्टिस्ट को देखते ना यार, कि कोई आर्टिस्ट आया, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो बड़े फेमस हुए हैं आर्टिस्ट आया, हम ये देखते हैं स्टेज पे यार आते मशहूर हो गए, आते मशहूर। यार आप उनकी हिस्ट्री देखो पहले कि वो आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे ना, वो आए आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर,
आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री में जाते हो ना कि वो बंदा कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको पता चलता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी है, वो अब जाके स्टेज पे आया है। तो सोने का चमचा लेके हर कोई 1000 में से एक कोई पैदा होता होगा जो आते ही जो स्टेज और पे आज के ज़माने में जो एकदम से जो लोग वायरल होते हैं वो एकदम से फेड अवे भी हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूट टू ऑल दोज लेजेंड्स इन पाकिस्तान जो 20, 30, 40, 50 साल से आज भी हैं, और जो हमारे लेजेंड्स हमें छोड़ के जा चुके हैं वो ताहयात जिंदा रहेंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक वी हैव। सो सर, बहुत बातें हमने बड़ी कर ली, लोगों को अब महरूम नहीं करते मजीद, कुछ आपका आर्ट टैलेंट पोटेंशियल लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कुछ आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? अपनी जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है मेरा जोगी, उसकी चंद लाइनें में बिल्कुल देखी है, अब लाइव भी सुन लें कि किस तरह के। और अगर नहीं देखी है तो अजीम खान AK के पेज पे जाके या अजीम खान AK के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जोगी के नाम से वीडियो है वो देखें ज़रूर, और इसको एंजॉय करें और शेयर करते रहें। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई, राहें नई, दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लगा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लगा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। वेल बहुत ही एक कैची और मेलोडियस इसकी बीट थी ना। आई एम श्योर कि ये गाना, क्योंकि मैंने खुद वैसे भी सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप प्लीज़ जाके सुनिएगा। अजीम खान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जोगी की वीडियो देखें, क्योंकि आपने इस गाने में ना बड़ी वेरिएशन लाए। स्टार्ट होता है एक स्लो टोन से, फिर पूरी एक स्टोरी बिल्डिंग है। आप वीडियो के साथ देखें तो ऑफकोर्स वो स्टोरी की थीम भी दिखती है। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो टॉक अस थ्रू दैट। इंस्पिरेशन इज़ दैट के ऐसे ही मैंने बताया आपको कि एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, तो बैठे बैठे एक ऐसी आया कि यार कुछ अलग टाइप का बनाता हूँ, कमर्शियल कुछ होना चाहिए जो ये वेडिंग्स वगैरह में भी चले और हर जगह चले। तो क्योंकि मेरे सॉन्ग जो है ना वो ज़्यादातर आप सुनेंगे तो वो सिर्फ एक वो इस तरह के हैं कि वो ड्राइविंग पे आप सुन लें, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं सुन लें, लेकिन मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए ना। हर आर्टिस्ट के पास एक ना एक यानी कि एक ऐसी वैरायटी होती है जो उसकी यानी कि थोड़ी सी कमर्शियल हो जाती है वो। मैंने कहा यार ये जो है वो करके देखते, तो ऐसी ये लाइन थोड़ी जहन में आई थी, तो मैंने कहा यार कुछ है इसमें ना जो जाने, मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। मैंने कहा यार फिर बाद में देखेंगे। फिर मुझे एक ऑफ़र आई, एक हमारे ही मतलब यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, वो एक मतलब राइटर हैं, ये अभी उन्होंने वो लिखी है मूवी, क्या नाम है इसका, हीर मांझा, तो उसके राइटर भी हैं, वैस कुराई बलोच है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, कह रहे हैं यार हमारी मूवी के लिए एक सॉन्ग बना दें कुछ कमर्शियल जो है टाइप का, जो थोड़ा सा वेडिंग टाइप और ये हो। तो मैंने सोचा यार एक दिन मैंने एक पेलोडी बनाई थी, उसी को निकाल के दोबारा से कुछ करता हूँ। तो मैंने ना वो निकाली मेलोडी और उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया कुछ करा। तो स्टार्टिंग की लाइन्स थोड़ी फिर वही आमदें आती रही, थोड़ा सा बैठा जो है वो। फिर मैंने कहा कि यार एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा पहला एल्बम आया था मैंने वो खुद लिखा था पूरा। इसको मुझे खुद मैं जो है इसको यानी कि सोच रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा बन सकता है, इसको मैं लिखवाऊँ तो किसी अच्छे कोई यानी कि नॉन जो है वो राइटर से लिखवाऊँ ताकि थोड़ा सा नाम हो। तो मैंने SK जो है वो खलिश हमारे भाई हैं एक, और बहुत से राइटर भी हैं आजकल, OSTs भी लिख रहे हैं ड्रामों की, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार कि खलिश भाई इस तरह के एक जो है वो मेलोडी है,
उस पर कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई वेडिंग टाइप जो है ना वो लिख के दें। बहरहाल वो आए मेरे पास, हम दोनों बैठे, हम तो वो दोनों की कोलैबोरेशन से वो यानी कि लिखा हमने। और ये जो लाइन है, जो इसकी जो पंच लाइन है, ये मुझे खलीज भाई ने ही लिख के दी थी। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। तो मैंने कहा खलीज भाई सैल्यूट है यार आपको, क्या जबरदस्त वाकई आपने कंप्लीट पैकेज बन गया। तो और ये जितने लोग हैं हमारे, उन्होंने जो देखा वो वाकई, अगेन रिपीट के आप ये अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड डू कमेंट, क्योंकि कमाल चीज़ है। स्पेशली सच ए प्राउड मोमेंट के पाकिस्तानी म्यूजिक में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले एक मेडले आखिरी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मेडली तो बहुत सारे हैं। एनीथिंग जो आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टेज परफॉर्मर है, क्राउड झूम जाता है, सो एनीथिंग फॉर सिंग अलोंग, जो कि हमारे ऑडियंस उस तरफ जो हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेडली आप साथ गाएंगे मेरे? नहीं, फिर आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल दिल मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी। तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले। जिन बेरिए शाम ढले, खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। शोला जो भड़के दिल मेरा तड़पे, रंग जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये इसी नोट के ऊपर हम एंड की तरफ आएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा आर्ट के साथ एक रिलेशन है, जो एक किसी भी यंगस्टर की लाइफ के अंदर, जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, कोई भी एक क्रिएटिव अगर आपके पास हॉबी है या हैबिट है, that keeps you away from lots of negativity, and this is something that is really good. So sir, आपका बहुत शुक्रिया that you joined us on lighter note. But last question is कि आपका आज इस प्रोग्राम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? It was really good यार, और बड़ा मज़ा आया। आप लोग आए और इधर, और आप लोगों ने एक, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आज यू नो संडे है, संडे को बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा दिन गुजरता है, वरना तो बोरिंग जो है ना वो डे जो है गुजरता है। लेकिन आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा
कि टाइम भी पास हो गया और एक थोड़ा सा म्यूज़िक भी जो है वो हो गया। अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर हमारे पास, और आपने लेकिन खिदमत करने का मौका नहीं दिया बिल्कुल हमें। नेक्स्ट टाइम खिदमत का मौका देंगे ज़रूर, एंड द प्लेजर वाज ऑल माइन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लानिंग्स एंड व्हाटएवर यू प्लान टू डू। बहुत माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, और स्पेशली जो आपकी परफॉर्मेंस है वाकई मज़ा आ गया। तो गाइज बिल्कुल आपने सुना आज अजीम खान को, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कमाल के सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब एक सिंगर लिख रहा होता है, एक उसमें आमद आती है, तो ये वो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं कि कब किस तरह से क्या चीज़ जहन में आती है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं बड़ी आसानी से उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको रियलाइज करना ज़रूरी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन फॉर टुडे। बिल्कुल अपना फीडबैक दें ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हमें बताएं कि फ्यूचर में आप लाइटर नोट पे किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, और अपना खास ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Dear students of Greenwich University, this is your chance to shine. Show us you're the true leaders of tomorrow. Good luck with all your endeavours. Thinking of you with all my heart. Good luck. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। I am the director of development Greenwich stand best of luck. I wish all graduating this graduation very for their डीजी असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। My name is and currently in history. I had a great image for the great learning. Thank you. At the Indus and things that thank you. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें।
हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan, and I'm back with another show, another guest. And yet again, I'm very excited to introduce my guest for today. She is a proud Greenwich alumni who recently graduated from Greenwich University in the 2019 convocation. She did her bachelor's in HR. She is currently teaching economics and English to O levels at the City School. She's also a research consultant at UNDP Karachi. She's also the editor, health and beauty at the Connoisseurs PK, and she also served as general secretary at Rotary Club of Greenwich Creek. And she's not doing that anymore, so I'll call it ex-general secretary. So welcome to the show, Afsha Umar. You used to be Afsha Farooq back in the days, but congratulations. Definitely. Married as well. Yes. So welcome to the show. Hope you're doing well. Thank you so much. I'm doing great. How are you, Umar? I'm absolutely fine. It's so good to see you after a while. Afsha was one of our brightest students, mashallah, and I'll be talking about it. But Afsha, as you all know, we're all stuck in this COVID situation. So how has life and work affected you, and how have you adapted accordingly? First of all, Umar, thank you for starting this channel and starting this show, because it's again a good way to connect with everyone that we're not seeing these days, whom we're not seeing these days. We've all been home. I've been home just like any other person, just like you. But we have to find out ways to connect with each other, find out getaways, find out healthy activities which are going to keep us active in this entire phase. So yeah, the lockdown has been boring, of course, but I think it has its own perks. We're more close to our immediate family. We're finding new getaways, and we're more close to the digital world now. So it's okay going about with that, yeah. And at the same time, you're right that finally we got time to do things that we always wanted to do, like spending time with family, learn a new skill, or something like that. So what part of Afsha have you explored during this past 3 months? I wasn't married when I was coming to university. Now I am. So, roles and responsibilities have kept changing. And the benefit that this lockdown brought for me was that I got a lot of time to spend with my new family. I got time to take a lot of responsibilities that I might have, not taken due to a very busy schedule, maybe because I was working, and maybe because, there were other things to do, and I was also studying. So now this lockdown, it has just got me a little more closer to my new family, I say. And it has made it easier for me to connect to them, I say, and to take, more responsibilities, I think. No, absolutely. So this is how it's different. And I totally believe, and I know that he's a very lucky guy, because I know you as a student, and you were one of our brightest students. मतलब वो कौन सी चीज थी जो अफशा नहीं करती, मतलब रेगुलर डीन लिस्ट में होती थी और जीपी अफशा की आ रही होती थी, पूरा वक्त उस वक्त लगी रहती कि मैं कुछ नया कर लूं. Very active with the sporting activities. She was part of the volleyball team, and then again हर जगह कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई चीज हो रही है, hosting अफशा करती थी, and red carpet अफशा. I remember. Yes. The best part of being in Greenwich, it was this, that I was jumping into every single thing, and I think there's nothing that I haven't tried in my university life. Be it debates, be it conferences, be it the radio shows at the Media Lab with you and Sir Sajeev, the way you guys trained me, and singing at the Media Lab, let's say. So there's nothing which I have left, the nothing which I think I should have experienced in my university life. And this is the best part of, being in Greenwich, that it gave me, an opportunity to link with everything that I wanted to do in my life. And you were so bright, माशाल्लाह. मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आप इम्प्रेस होते हैं, तो मैं अफशा से इम्प्रेस था कि ये हर चीज एक तो उसमें एक्टिव होती थी और हर चीज बहुत अच्छी करती थी. तो लाइक अफशा, जैसे शी मेंशन्ड, यू डिड रेडियो शोज विद मी एज वेल. सो कुछ हमारे एक थोड़ा ट्रेनिंग फेज भी रहा, और एक बिफोर एंड आफ्टर का भी एक एक चेंज था.
So, but talk through that. वो क्या था कि it was like hardly a 10-15 minute training session, and then you picked it up so quickly that within 10-15 minutes you were a total different person on mic. Definitely. अच्छा होंगे मुझे याद है मुझे आपने ही ट्रेन किया था ये रेडियो शोज के लिए. I know you suggested me the name as well, and I think it was Audio Diaries with Afshan Farooq. And then I was all there feeling like an RJ. But जब मैंने start किया था, to be honest, it was I think it attracted me on the day when I came to Greenwich for the first time. So I visited the media lab for the first time, and I was like, what is that? The place looks really, really fancy. And there might be something that I can do over here. And I thought there are two things that I can do. I learned to play piano over there a bit, and I started doing radio shows. I was singing all the time over there, but doing radio shows was something very different. क्योंकि उसके लिए मुझे पूरी proper training मिली थी. How to work with the devices, how to deal with the mic, how to change my pitch, my volume, and everything. So that was an experience, I say, something to remember and something which I think I cherish in life, because कभी आगे जाके भी मुझे अगर ये talent use करना हो, so I'm so well trained, I can easily get into it once again. And one more thing, मैंने ये देखा था कि there was a huge difference after I was trained. Because जब मैंने खुद को पहली दफा सुना था उस ट्रेनिंग के बाद, I was myself very stunned. There was a big difference. So the credits are for you. And Naini, the credit is completely yours because you were such a quick learner, such an eager learner. कि मैं बार बार ये लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अफशा को कोई बात एक बार बता दो, शी यूज्ड टू पिक इट देयर एंड देन. बहुत कम लोगों में इतना टैलेंट और स्पार्क होता है, एंड आई वाज ऑलवेज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड विद द स्पार्क यू हैड. अब मैं कुछ लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूंगा कि ये वो पिक्चर थी अफशा की एट द रेडियो, and here it is. Oh yeah, these were my beginning days. Yes, these are the beginning days. This was how our studio looked like, like 4-5 years ago. Things have upgraded in quite a lot of ways. अच्छा जी, ये अफशा की पिक्चर ऑन स्क्रीन अभी आ रही है. This was the day when you made a video, a documentary for the Mauritius campus, and you the पूरा ये एक visit हुआ था Greenwich का. So talk us through उस दिन का experience being in front of the camera and telling everyone how Greenwich is. Well, I think this was one of the best days I've ever had in Greenwich. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ मुझे ग्रेनिच में ही एक एक्सपोजर नहीं मिला था, बल्कि ग्रेनिच कराची से लेकर ग्रेनिच मॉरिशस कैंपस तक एक्सपोजर मिला था. So I remember there were some guests who came to our university from Mauritius, and the first thing when they saw me and they said, "We have seen you in the documentary that they did." And Umar, trust me, that feeling, I can still tell you, it feels like, being on the seventh sky. Or the documentary itself, it's very close to my heart because it's like I'm introducing my home to these people, to all the people who are seeing it at the Mauritius campus. I just feel like I'm introducing my home, right? So उस दिन मैंने उसी कराची कैंपस में ही I saw the dean's office, the registrar's office, वो चीजें मैंने नहीं देखी थी, So it's now when I was going from Greenwich, मुझे ऐसा लग रहा था this is my home. I've seen every part of it, which most people haven't even seen. And the way I got to introduce, let's say, the people at the administrative, the people at the administration office, the way I got to introduce people at the examination department. So like from that, I built a connection with everyone. And the best thing again, it was that I was known in Mauritius for something, So itna dur tak you're being known, and then people coming from there, they know you. That is a big thing. And apart from that, you're known far and wide in Pakistan as well, because there was this competition of Hum Masala Star, and it was held at Greenwich, and you won that thing. So मैं उसकी एक final की picture भी share करूँगा लोगों के साथ कि right now on your screens. ये अफशा फाइनल राउंड के अंदर कुछ बड़ा कंसंट्रेशन के साथ पका रही है. उससे पूछेंगे कि कर क्या रही थी. And you actually won that thing. आपको एक ट्रॉफी मिली थी, and it was such a proud moment for all of us. So क्या कुकिंग का शौक था, कुछ था ये किस तरह से you won the contest? हाँ, मैं इसके बारे में सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूँगी कि for all those who are listening, take chances in your life. I took a chance. Trust me or not, winning this National Culinary Arts Contest, it wasn't easy because I was not into kitchen things.
I didn't make any dish in my life ever before, and this was the first time that I was there, you know. And I remember I took a chance because one of my group members in research methodology course wanted to skip a presentation. तो हमारे टीचर ने कहा अगर आप लोग स्किप करें तो मैं ऐसे ही तो नहीं स्किप करने दूंगा तो आप लोग एक काम करें यू गाइस कैन गो अटेंड द सेशन डाउनस्टेयर्स इट्स गोइंग ऑन एंड आई एम दी इन चार्ज फॉर इट सो यू ऑल शुड गो एंड अटेंड इट बट डू नॉट गेट अवे फ्रॉम देयर पूरा सेशन आप लोगों ने वहीं बैठना है so just because my group members wanted to I went over there and for fun we got selected and वहाँ से फिर I remember I had my best friend with me we just you know made our way up और मेरे घर पे रोज जब मैं ये शो टीवी पे वो लोग देखते होते थे तो मैं रोज एक ही चीज सुनती थी शो से वापस आके आज तो पक्का हार के आनी थी पता नहीं कैसे जीती अब नेक्स्ट टाइम तो पक्का हारोगी क्योंकि तुम्हें किचन का कुछ नहीं पता यू नो you're so blank about it and they couldn't even believe how I was winning but the thing that I learned from there Umar and I think I will remember it for all my life and I think everyone should remember this thing कि अगर आप कोई चीज दिल से कर रहे हैं ना you will get the result मुझे नहीं आती थी कुकिंग मुझे कुछ नहीं पता था उस शो के बारे में मैंने यू नो कभी culinary आर्ट्स के कॉन्टेस्ट नहीं देखे मैं नहीं देखती थी मास्टर शेफ मैं नहीं देखती थी यू नो मसाला टीवी और whatsoever let's say बट आई थिंक जब मैंने कहा था अब मैं गई हूँ तो मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है और उसके साथ साथ आई हैव माई ओन आइडेंटिटी यू नो आई हैव माई फैमिली लुकिंग अप टू मी शी इज ऑन नेशनल टीवी so you know I had to prove something to them and I made my way up I was like दिल से करूंगी तो I can win easily and this is how I won to be honest मैं शुरू में मेंशन कर रहा था कि अफशा इज वेरी शार्प when it comes to learning things and as she said कि वो घर पे किचन में नहीं जाती कोई किचन का सीन ही नहीं है और डायरेक्ट कंपटीशन में पहली बार कुकिंग की और कंपटीशन जीत गई तो उसके पीछे उसकी वो मेहनत है कि ये चीजों को एज चैलेंज लेती है एंड शी यू नो एक्चुअली नेल्स इट एवरी टाइम और इसी के साथ में कुछ बाकी पिक्चर यू मेंशन्ड योर बेस्ट फ्रेंड तो ये एक पिक्चर है ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी आप यहाँ क्या कर रही थी एंड यू नो टॉक अस थ्रू द डे व्हाट हैपेंड दैट डे अच्छा इसमें तो आपको सिर्फ कुलसूम दिख रही है बट आई रिमेम्बर देयर वाज मनाहिल विद मी एंड देयर वर आई थिंक अ ग्रुप ऑफ 4 or 5 more people and so many more people who were supporting me as much as you can see Kulsoom over here. This was World Standards Day which was conducted by Pakistan Standards and Quality Control Authority, let's call it PSQCA. So उन्होंने ये conduct किया था and I was asked by Sir Ahmed Kamran in our university to host it. And it was a big thing because ये external था मैंने internal events तो बहुत किए थे I was I think doing one seminar every single week कभी कोई conflict के लिए कभी HR के seminar one seminar was going on every single week बहुत exposure मिल रहा था but अगर external की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा external exposure था यहाँ पे top level CEOs and you know ministers and I don't know who everyone was there and it was a big thing for me अब इसमें हुआ ये था कि the reason why you can see Kulsoom over there being so happy is that she hadn't hosted an event before and I was like I want to be a friend who does not only do things but I should make my friends do it too so I think Kulsoom, Manahil, there were some other people as well I don't remember the names of the volunteers but these people all of them I took them along I was like okay Kulsoom's going to be the co-host with me Manahil you will volunteer and you will have a team of volunteers which we needed right So I took all these people along with me. We made a team for Greenwich and we literally nailed it. I was the host and Kulsoom was also with me. And the reason she looks so happy in this is because she's like, you're, you know, not only doing it yourself, but you made me do it too. So Umar, when you, you know, see other people excelling with you, that happiness is something very different. उस दिन ये दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज उस दिन सिर्फ मैंने मैंने सेलिब्रेट नहीं किया आई डिडंट ओनली सेलिब्रेट being the host for World Standards Day. I celebrated because my friends were along with me and they were as happy as I was and they got equal credit as I got. So, you know, sometimes you get that happiness of letting people excel. वो कभी आप किसी चीज से compare नहीं कर सकते. I think it's very different. Indeed it is and मैं आप लोगों को देखता था कैंपस में you guys were like a family एक पूरा गैंग होता था जो हर वक्त साथ रहता था and you guys were definitely we had a gang yeah you know from the presentations to the activities to sports to everything you all were together and आपकी memories की तरफ भी पढ़ेंगे but at the same time I'll add on some comments from the audience so we have with us Ma'am Shazia Anwar and she says welcome sweetheart and she's such a sweetheart I miss her
We have with us Ubaid Khan. He welcomes you to the show. Or Ma'am Shazia adds on, such a talented girl, superb journey. So we have with us Hania Farooq Razak, your sister. She's also watching, and she's proud of you. Right, we have with us Rab Nawaz from Greenwich, the heartbeat of Greenwich, and he's Definitely. All right, Sayyid Taisha हमारे साथ मौजूद हैं. Welcome, and we have with us Hina Farooq. Mashallah, my talented daughter, proud of you. She's my mom. कितना अच्छा लगता है कि जब you see comments क्योंकि your mother now you've shifted your home to your new home and now mother's there and all of this quarantine, so how does it feel hearing from your mom? मैंने शो स्टार्ट करते हुए कहा था कि शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, शी इज बीन इन एवरीथिंग. तो ये सब कुछ ना ऐसे ही नहीं हो जाता. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट आई हैव. देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग बैक दैट आई हैव हैड व्हिच हैज बीन from my parents, from my siblings, and now from my husband, let's say. So एक support, it matters a lot, and without that support I don't think I would have been able to achieve what I have achieved in my university life. The way all these teachers, they talk about me, I feel so proud and so glad that I cannot bring that feeling into words at the moment, and it is all that support which I have got from them and from my family. So I always keep appreciating them for this. नहीं, सपोर्ट तो मैं देख सकता हूँ क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, मनाइल जब्बार जबरदस्त, and we have Safiba Ibrahim, she says keep it up Afsha Api, and then we have with us Saira Kapoor, she says mashallah जबरदस्त. फिर हमना चौधरी हैं, very talented girl, keep it up Afsha. Then we have with us Komal, she's a very good friend, yes. Komal Naveed, she says wow mashallah bestie. और फिर आपके शोहर भी आ गए हैं, your husband is there and he says proud of you. So वो support system हम शो में भी हम देख रहे हैं, people just love you and it's very strong. I do little things, Umar, trust me or not, I do little things and I get this much of appreciation. So वो बहुत मुश्किल से मिलता है and I'm very lucky to have that thing. माशाल्लाह, indeed. और क्योंकि मैं ही कह रहा हूँ ना, because I've seen you as a student, you used to do things with such heart, इतना effort और इतना ज़्यादा determined और focus हो जाती थी एक चीज़ में कि मैं जो personally कह रहा हूँ कि मैं भी जो impressed और inspired था, उसी वजह से था कि your focus was there and you were always there. Afsha, can you hear me? All right. So meanwhile, Afsha का थोड़ा सा internet connection problem हुआ है. तो जब तक Afsha वापस आती है, just share through the journey she had, and as I said कि जो उन्होंने हर चीज़ में Greenwich में she was active. I'll share some of her pictures where she hosted the event. So this was one of the seminars which she hosted, and then this was the 7th international conference. She also hosted this as well. ये सारे वो Greenwich के events होते थे कि जहाँ event किसी का भी होता था, सबसे पहले अफशा के पास जाते थे कि अफशा आपने ये host करना है, क्योंकि अफशा host इतना अच्छा करती थी. And फिर red carpet की भी picture थी. This was, I believe, 2015 or 2017? No, it was 2017. 17, yes. So she was always there. So Afsha, I'll add on. I remember, Umar, ये hosting वाले जो experiences है ना, I remember there was a time in my university life, in the last year I remember, I hosted 5 events, 2 seminars and 2 days of the international conference that we have in university. 5 things in 1 week, and all of them were big. We had one HR seminar in which we called, people from different companies and, people from MNCs. Then we had our, validation session with some experts from Islamabad. Then we had social sciences conferences. So I think that week was the busiest one in my, hosting experience. And the pictures which you're showing, most of them are from the same week. And the pictures that I'm showing, उसकी picture credit लेने के लिए मनाहिल आ गई हैं. Manail Imran is with us. She says, I took most of the photos. So you have to give picture credit she to her. She didn't even 100% credit to this girl, Manail Imran. इन्होंने सिर्फ मेरी school, university में pictures निकली. She even took my pictures on my wedding, on my engagement, and literally she's so good with photography. I've posted each and every picture on my Instagram. माशाल्लाह. चले वही है ना कि जो आपका गैंग है और बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. So we've got a very special committee. The Chancellor of Greenwich University, Madam Seema Mughal, is watching as well. And she says, Afsha, pleasure to see you. You took the advice of Said to first settle and then work.
seeing you happily married is making both of us very happy. MashaAllah. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. And now, definitely, I remember your advice. I remember each and every word that you used to say. And in fact, I honestly, whenever I used to introduce you in seminars and in, events, I always used to say that she's the lady I look up to. And even today, I still mean that. So independent, so balanced, and, so much with her family, with her students, so professional. She's a combination of everything. I really look up to her. We all look up to her, and she's the source of inspiration for all of us, and how she's guided us with such brilliant leadership. Each and every Greenwich family member would second that, and we're truly blessed to have her as a leader, and may Allah give her more strength to keep guiding us the same way. So you mentioned your graduation previously, so you graduated in the field of HR. And as you said that, first get married, then start working. So what are the plans of Afsha in the near future? What do you plan to do now? Omar, very good question. And I think I would answer it in a little bit of detail because, career paths, they keep changing. Before, when I wasn't married, my career path was just to try different fields and get along with, things in HR, because I have taken HR as my passion, not only something that I look up to for my profession. Then apparently there was some shift in my life, and I am currently teaching. And one reason why I'm teaching is because it links you to a lot of people, you understand people, and that is what I was trying to do in HR. My interest was in training, and in training, that we're, trying to connect with people on different levels, on different, on different levels of understanding, let's say. So in teaching as well, I think it is something very near to what I can do in HR. And I get to connect with people. I get to understand them. I get to see how different organizational structures work. So abhi to main teaching kar rahi hu, and I'm teaching economics and English. And due to the lockdown, it has been online, and it's been very challenging to do it online. एक track रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. There's a lot of difficulties with work-life balance. When you're online, it has to be like कभी भी आपको कॉल आ जाती है, कभी भी आपको स्टूडेंट्स को देखना होता है, कभी आपको पेरेंट्स की कोई क्वेरीज है, कंप्लेंट्स हैं. So you have to look into that all the time, 24/7. So I remember someone very experienced in the field of teaching telling me that Afshan, teaching is a 24/7 job. Do not take it lightly. So currently I am just teaching, and it has actually proven to be a 24/7 job. आगे के plans ये है कि I intend to take a shift in some company which has a very strong HR department. But again, since we're having economic crisis at the moment, I am not able to get in yet. But I do have plans to look into it once I have started my MBA. I'm looking into it right now. So inshallah, when I'm into it and when things are going smooth with my MBA, I'm again going to take a shift in HR. Filhal, it's teaching because of the same reasons that I feel connected to people. I get to understand them on a different level, and you get that feeling of guiding someone, showing them, the right way to excel in things. So this is why I chose teaching as a career right now. HR की तरफ जरूर वापस जाऊंगी. Did my majors in HR from Greenwich, and जितने भी मेरे exposure रहे हैं अभी तक HR में, I think the way these people in our electives, Sir Shamail, I remember, Sir Muiz Ali Dina, the way they have trained us in HR, it's very, very good. I think they've made me very competitive in it. So I don't want to waste that side of me. I just want to, take a little time and then get back to it. And surprisingly, the two teachers that you name, both are a Greenwich product. They're both alumni of Greenwich, and now they are teaching at Greenwich as well. So, Greenwich is everywhere. Wherever you find it, Greenwich is there, even an alumni and a teacher. Yeah. So, I think even I feel very lucky to be part of Greenwich with, such wonderful people around me, where you get so much of exposure and learning, occurs. So, I wish you all the best with all of that, because I know wherever Afsha steps in, she actually masters it. So I'm sure that whichever field you'll choose, you will do great in that. And I would second that thing when you talk about teaching, because I personally I really love teaching, and it gives me a lot of energy.
and then you learn a lot from the students, and you learn a lot from the kids as well. As you said, understanding different people, and trying to convince or guide people, your future generations. Teaching is a very noble job, and it improves you on your as a person as well. Definitely, very very noble. But Umar, I think aajkal it's a little difficult to deal with things online as a teacher. There is a very big gap between technology and Pakistani students. So I think when a child is in a very early age, so we should somehow, I'm not saying give them gadgets, but somehow train them in such a way that they're closer to technology as well. Our kids are not tech savvy. I'm seeing this. I'm observing this trend. I'm not saying this for everyone, but I am observing this trend that they're not tech savvy. We, as teachers, we've taken a lot of time just to train them with basic apps, with Microsoft Teams, with Zoom, with Google Classroom. So it's not easy to keep a track, and not every student is on the same mental capacity level. We have to understand them when we sit with them face to face, We have to listen to their queries face to face, and that gives us a better idea of where the student is. Now that I have been experiencing, so many classrooms, अब मुझे देख के पता चल जाता है if a student is getting me or not. I understand their eye contact and body language and stuff. So online it's very difficult. But again, we're making progress since now, things are going to work like that. So we're trying to adjust with that. Very well said, और बड़ा अच्छा आपका valid point था. But I would like to add a few things over here. As you're absolutely right. Everyone's not very tech trained, but if you look at the previous generation of our parents and grandparents, so the kids are much better. And if you talk about tech trained, even a 3-year-old knows how to put a video up on YouTube and how to use the YouTube. Even a 3-year-old. So wherever there's their interest, they are pros at it, but when you talk about studies, exactly. So yeah, so the interest deviates. So what, as a teacher, I also face that challenge, that when you are face to face in a class, so you get that energy, you get that interaction. But when you shift to online, the basic thing, that energy level, the human contact, the physical presence, it's not there. But then again, as humans, we have to adapt. So first thing, you have to change the methods of teaching in a way where you're giving up the content and you're covering up the course, but at the same time, change your mediums, change your ways, so that the students at home can feel connected, get them engaged. Exactly. See, the key to success over here is adapting to what's going on, right? तो हमारे स्टूडेंट्स अडेप्ट तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि लेट्स से उमर, अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, वहाँ एक घर में देयर आर 3 siblings and there are just 2 gadgets. Now they're all in trouble, missing some classes, taking some classes, so वो consistency नहीं रहती, right? But yes, teaching methods में there is a lot of change required, which currently when I'm taking trainings, when I'm looking at webinars from Cambridge, let's say, so teachers ने बहुत changes किए हैं, पूरे methods change हुए हैं, the entire pedagogy has changed now, right? उसमें best हम ये चीज कर सकते हैं, we make it more visual. Now I've asked my students to keep the cameras on every time when they're taking a class with me, so I know what's going on with them. I know if they're actually listening to me. Students, when we say they're smart in every way. They're smart in missing their classes, they're smart in being there, yet missing them mentally. So it is a big challenge, but yes, when we change the pedagogy of teaching something, teaching a specific subject, it will work out. So even when the children and students are playing smart and acting smart, so we also were students at one time. So you have to think like a naughty student at that time and get into their bed and then handle them that way. That's very interesting. Well, when you know what the student is up to, catch them right there and then. But I know what you're thinking. That will take them. So I'll add on some more comments. We have with us Marine Faisal, and we have with us Naziz Javed. She says, so proud of you, Afsha Api. MashaAllah. We have with us Rani Shazad. She's also praising you. We have with us Saira Bano. She's also praising you. So, so much love and appreciation everywhere. Afsha, how does it feel? Feels great, feels spectacular. When I was ending my journey with Greenwich, मुझे एक अफसोस ये भी हो रहा था कि now there are so many people here. Almost every single person knows me over here. Be it the students, be it the teachers, be it the administrative staff, even the domestic staff. They all know me and they all praise me for every single thing
maybe just had a talk with them. So, they always remember me for something. So the thing which hurt me a lot when I was leaving Greenwich was that now I'm not going to see these appreciative people, very often, not every day, I say. So appreciation always matters a lot. चाहे वो आपके colleagues से हो, चाहे it's from the people at your university, it's from the people in your family. It always matters a lot. And I think even if you fail in something in life, if you have supportive people on the back and if you have appreciative people, you will not feel it as a failure. You will always think, yes, there are people to support me, and someday or another I will achieve something. And this is the reason why I have been a good student, someone who has been active in sports, someone who has been into all the extracurriculars. Why? Because especially my parents have never forced me to do anything. So, one thing that we need to really bring in our culture is that we don't have to force our kids to do something. Today I think I am a very good student, let's say maybe a good teacher as per the feedback which I get from my students. Why? Because as a child, I have never been forced to do anything. I've never felt कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ मैं दिल से नहीं कर रही. और जब मैं कर रही होती हूँ वो दिल से कर रही होती हूँ, it automatically becomes like a good thing in life, So we need to remember this thing. We don't have to force our kids to do something. We have to be a little manipulative, even if it's some good thing. Make them do it in a way in which they don't feel like they're forced or they're not restrained to do something, Very good point, Afsha, and that's what I always try to do. I even tell everyone that the initial stage of a child, the 1 to 5, that specific time is so crucial. It's that when you're developing the personality, it's that time when you're just laying the foundation of your child. So whatever you mold them towards, and as you rightly said, that never force your child. Just try to figure out his or her talent and just support her and support him in whatever they love to do. Always guide them and protect them from the wrong ways or wrong paths, but always support them and in a way where they don't feel forced. So we have with us Aisha. And parental support, I think, is. I'm sorry. Are you saying something? Yeah. Please continue. I'm just saying parental support is the most important thing which you can get in your life. If that thing is strong, it's like a backbone for everything that you're going to do. If that is strong, everything in your life will excel one day or another. That is my firm belief. Absolutely. And the children who are close to their parents, it reflects on their personality and their work. The family values, the determination, the focus, the etiquettes, everything's there. So Aisha Najmi is with us. She says Afsha is a darling. Though I met her a couple of months back, but she has an influencing personality. So what would you like to say on that? Aisha, I think she's a very strong and very independent woman. One of the very rare people that I've seen in my life. She has her own qualities, and I think in her company, I've always felt like there's so much more that a girl can do. She is so strong as a woman, as a mother, that it's always inspiring to see people like these. So I think she's calling me an inspiration. I think I cannot be as big of an inspiration as she is. I have literally been inspired from this lady. Absolutely. And that's the point. Never limit yourself. You can do wonders, so you have to explore, and you don't have to say that I can't do this, I can't do that. You can do anything you want. You just have to try and you have to strive for it. And that's the beautiful part. So I like to share one picture, and I like to ask you your feelings on that given day, right? So how did it felt when you were wearing that gown and graduating, walking down from the stage and moving towards that stage, the very specific and popular way of Greenwich University's convocation? So how was the feelings? अच्छा उमर, अगर मैं सिर्फ इस पिक्चर को देखूं ना, it gives me chills. It gives me a throwback to all the hard work which I have done to get that, thesis testimonial or to get those 4 GPAs. But as far as walking down the aisle or walking towards getting my degree, as far as that is concerned, I haven't experienced that day, unfortunately, because I was getting married on that day. Wow. So it's kind of like a blooper to hear. But
But you were walking another way. You were walking on another aisle, and a different exactly. Yeah, with a different atmosphere, walking on the aisle with a different person, I say. लेकिन उसके अपने perks थे. I still regret missing the day, but there are some things in life that you cannot always win through. You have to accept some things, and the reason why I missed it was that I didn't know the exact date for convocation, and my shadi was kept on that day. So I was expecting that it's going to be somewhere in the mid of start of November. बहुत close date थी. So I just took a chance on that. I'm like, okay, let's see how it goes and what it is. And when that day came, I remember I was still planning to attend the graduation ceremony, but I was literally sitting with my hands like this with mehndi on, and I was dozing off. मैं इतना थक चुकी थी. Literally that way. उस वक्त मेरी मेहंदी लग रही थी जब लोगों को डिग्री मिल रही थी. So और जब रिहर्सल थे तब मेरा मायो था, तो I was in my mehndi function. So I couldn't even attend the rehearsals. I couldn't even take the graduation ceremony. But Omar, there are things that you can still remember, even though I didn't attend the graduation ceremony. I still have seen the pictures. I still have a sense of being in the graduation ceremony because I've myself been on the red carpet in 2017's graduation ceremony. And I know how grand it was. What's the feeling? I know the feeling. So what I planned is that ab jab main inshallah MBA karungi, so I will attend the graduation ceremony of my MBA, and then maybe like practically see it and experience. But जो चीजें Greenwich ने मुझे दी हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ ही है, So they're always with me. So what if I didn't attend the graduation ceremony? It still reminds me of how much hard work I did. अभी मास्टर्स बाकी है, एमफिल पीएचडी बाकी है, क्योंकि मुझे पता है अफशा जो है वो मास्टर्स पे रुकने वाली नहीं है. I know you have that strive to keep going and going and going, and there will be a day when we'll have a doctor written right in front of Afsha, and you'll be called Dr. Afsha. I know that day will also, inshallah. So as much as I'm loving this session, we have to end it as well. But before leaving, I would like to ask you two questions. First, how was your experience today here at Greenwich Live Sessions? I felt like connecting with the entire Greenwich family once again, and all the people who watched us, and Umar who commented. I feel like being connected with all of them, each and every one of them. So Omar, thank you for inviting me here. It feels like, I've revived a connection with everyone who saw me, everyone who's still going to look at this page and, maybe scroll through the interview. So thank you so much for connecting me to all my memories once again. Thank you for showing me those pictures which you did. They're literally one of the most precious days of my life, and I will cherish them till the day I can. Itni special hai wo mere liye. So thank you for making me get back to those days. And you're also being missed at Greenwich, so it doesn't mean that if MBA, BBA khatam ho gaya and you've graduated, so you're not part of Greenwich. You're always a part of Greenwich. You can come for radio. Definitely, it's a family. Even for hosting or anything you want, since you say that you like to understand people. So the best way to understand people is interview people, different personalities here and then. So you're always most welcome. You can come to Greenwich anytime. As you said, it's Greenwich family. So the bond is still there. You can walk in anytime you want once we're done with the COVID situation, and we can do wonderful things again together. Definitely, I would love to. And the last thing, what would you like to say for our Greenwich family? Okay, good question. The thing I would like to say to the Greenwich family is that, the way they nourish their students, the way they nurture their students, it is a great thing that they're doing, because वो चीज़ पूरी life उनके साथ रह रही है, and they get a sense of belongingness, and they realize their own identity. That is how Greenwich is treating us. It's fantastic to see people like these around you who are with such positive vibes, such positive energy, and they bring those vibes to you. You always catch vibes. So the vibes that the Greenwich family gives, they're always something to remember. And the thing which I have learned from the Greenwich family is that always explore, keep taking opportunities. There are so many people in Greenwich, in the administrative staff, in the teaching staff, who give you opportunities. So, keep exploring. Everyone who's listening right now, everyone who's going to hear us later on, maybe, I say keep exploring, find out who you actually are, find out a purpose of
being in this world. Don't just be, haywire, going here and there without any direction. So the thing which I have learned from Greenwich family is that we all must have a direction in our life. We all must realize what we are meant to do, and always try to make a mark in something. I always try to do that, and I wish to do that in almost everything that I want to do. So make a mark, try to do something at least, and realize who you are and what you're supposed to do in life. Well, you just made a new mark in everyone's heart with that advice and the thing that you said at the end. And as I said, shuru se main jo tareef kar raha hu, this is the reason why I praise her so much. Just look at her, jo iski ek vision hai, the way she looks at life, the way she takes up challenges. Mashallah, mashallah. I wish you all the best, Afsha, in future. Thank with everything that you plan to do. And I'll just add on few more comments before we leave. So Shifa Lodi says, Umar, please tell Afsha, our students are watching her. They love her. She is amazing. So even your students, Ursula Malik is watching you. Oh, thank you so much. Thank you, Ursula. And I think all my students are great. I just love them. They're so supportive. Right, and Madam Simu also writes, love you, Afsha, wonderful session. And we love you too, madam. We love you too. Fatma Amir, our talented teacher. Well, we're all proud of teacher. So we can go on and on and on, but I have to end this today, and we'll definitely keep another session sometime soon. So Afsha, thank you so much for your time. Stay blessed, keep smiling. Thank you so much, Umar. And keep doing the wonderful work. Right, thank you. Right, so guys, you heard Afsha Farooq. Now she's Afsha Umar, mashallah, because she's married. And she got married on the day of her convocation, rather than getting degrees, as she said in the session, कि जहाँ लोगों को degree मिल रही थी, वो अपने हाथ यूं करके मेहंदी लगवा रही थी. But indeed, she was a brilliant student, like one of the students जिससे मैं बड़ा inspired था. I was very proud of her. With, whatever she used to do it in the best way possible. क्योंकि dedication था, focus था. कितनी दफा she got 4.0 GPA and got into the dean's list, and she was brilliant in everything she did. And jo advice unhone end mein di कि keep exploring, never stay stagnant. Explore करें, why you're here, what do you want to do in life, what are you good with, and that's where you find your own self. And once you find your own self, you can do wonders in life, in your career, in your personal life, in your relationships. Everything gets synced once you try and explore and find the reasons and questions to the answers of life and everything. So I hope you learned a lot and enjoyed the session at the same time. And that was a proud alumna, Afsha Umar. And tomorrow we have another very, very, very special guest, very special alumni. And for that, you have to tune in at 10 and find out who he is. And the next time, you can always give us your feedback in the comments, where you can tell us आप किन गेस्ट को फ्यूचर में लाइव सेशंस पे देखना चाहते हैं और आप किन टॉपिक्स पे फ्यूचर में लाइव सेशंस देखना चाहते हैं. We'll definitely cover up those topics. And right here you can see that the fall semester is about to start, so you can apply online. You can contact us through our WhatsApp, that is 0306 224 8363. You can email your queries at admissions@greenwich.edu.pk, and you can also register online at www.greenwich.edu.pk. So until next time, stay safe, keep smiling, and stay positive. Pakistan Zindabad. Let me at the outset congratulate the 2022 graduating class of Greenwich University. I am confident that through your excellent educational experience at Greenwich University, you are fully equipped with the skill set that you would need to succeed in your real and professional life. I can also see that over the years, Greenwich University has established itself as an institution of good standing. And looking at the distinguished alumni of the Greenwich University, I can see the important contributions that your university has made. डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा.
यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Of Greenwich, this is your time. You're the true hero. Your endeavor of you with started off with bachelor's, and then finally completed my master's in 93. I have had a long association with Greenwich. I've always been associated with the alumni affairs at Greenwich. Was also part of the visiting faculty, assisted number of professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own group of companies. We represent Petronas of Malaysia. We represent Oman refineries for both Pakistan and Afghanistan. We also represent certain other companies like Oxia, Germany, and Milliken, US, for Pakistan, Afghanistan, and some other countries. And Alhamdulillah, we're doing well, and almost the entire professional career that I have had so far, Greenwich has had a major role to play, and obviously I would not want to forget 3, 4, 5 names who have played a major role in my life. Shahid Anwar Bajwa Sahab, of course, S.N. Durrani Sahab, Talib Kareem Sahab, Mrs. Rukhsana Anwar Khan, Shafqat Hussain Sahab, so many. I mean, I'm sorry if I forget any of you, but you all of you, all my teachers who've coached me, you are so close to my heart that please don't, if I've not taken your name, please don't take it personally. It is you, each one of you is so fabulous, so amazing. You guys have made me what I am today. And of course, Seema, Saeed Bhai, rest of Greenwich, I'm all yours. Whenever you need me, I'll always be there. Thank you. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। क्या लड़का है यार, व्हाट अ पर्सनालिटी, दिखने में भी बहुत हैंडसम है। कमीनी 2 बार पहले डेट पे जा चुकी है, अब तीसरी बार जा रही है और मुझे बताया तक नहीं। आई थॉट आई वाज योर बेस्ट फ्रेंड। यार तब तक तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी। वैसे श्योर तो मैं अब भी नहीं हूँ। पता है मेरी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है वो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे? हाँ, जैसे वो इयररिंग्स मैंने लास्ट टाइम पहने थे, उसको वो अभी तक याद थे। उसने लिटरली बोला कि वो तुम्हें इयररिंग्स दोबारा पहन के आए, तुम्हें बहुत सूट कर रहे थे। क्या बात है। मुझे लगा तो ऐसे ही बोल रहा होगा, बट उसे सीरियसली याद थे। कैन यू बिलीव इट? ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन मी, आई थिंक। पता है मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आपस की बात है, ऐसे लड़के कहाँ होते हैं आजकल। कहीं वो ऐसा वैसा लड़का तो नहीं है? मतलब मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारे इयररिंग्स भी नोट कर रहा है। ऐसा वैसा क्यों होगा? वो मुझे शादी.com पे मिला था। उसको शादी करनी है भाई, वो भी किसी लड़की से।
कर रही थी। तो मैं निकलूं क्या? नहीं नहीं, ये लोग मुझे अभी मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे भी कितना टाइम लगेगा। तो हम मिल रहे हैं ना आज? नहीं मारिया, किसी और दिन। हाँ तो थोड़ी देर से मिलते हैं ना। आई एम ओके विद दैट। और हाँ, एक और बात। हाँ हाँ बोलो ना। तुम बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, और मुझे तुमसे बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। यार मैं तुम्हारे साथ सीरियस होने का नहीं सोच सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी तारीफ़ें करी हैं एंड यू लाइक टॉकिंग टू मी एज वेल। इफ़ आई एम ऑल दैट तो फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम ये है मारिया, किसी के साथ सीरियस होने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है। यू नो, वो दिल में घंटी बजनी चाहिए। लेकिन अभी तक 2 ही बार तो मिले हैं हम दोनों। आई एम बीइंग ऑनेस्ट मारिया। फरहान, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ जल्दी कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? तुम मुझे बता सकते हो। नहीं मारिया, मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ। तुम कल फ्री हो? हम कल मिल लेते हैं। आई डोंट नो, मेरा टीम मेरा वेट कर रही है। आई हैव टू गो। ओके बाय, आई विल सी यू अराउंड। I'll see you around too. Hello, hello. Maybe he's afraid to commit. और एक बात तो बताओ, ये talk to you later क्या होता है? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल? मतलब पहले मैं मैसेज करूँ या वो? Why do you think he said I'll see you around? क्या उसको मुझसे दोबारा मिलना है या नहीं? Maybe he's not sure himself. मैं उसे मैसेज करूँ क्या? या तो वेट कर लो 1-2 दिन, क्या पता वो तुम्हें खुद ही मैसेज कर ले। What the hell? क्या हुआ? उसने मुझे WhatsApp से ब्लॉक कर दिया। Really? और Facebook से भी। दिखाओ। मेरे पास तो आ रहा है। उसे क्या लगता है मैं उसे स्टॉक करती होंगी? जाने दे यार, तुम्हें इससे बहुत बेहतर लड़का मिल सकता है, सिर्फ लक की बात है। Of course मुझे इससे बेहतर लड़का मिल जाएगा, पर अब तुम देखना मैं उसका क्या करती हूँ। कोई कत्ल वत्ल का तो प्लान नहीं है तुम्हारा? घंटी नहीं बजी थी ना इसकी, अब देखना मैं इसी कैसी घंटी बजाती हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? गेस करो। अरे ये तो वो लड़का नहीं है। और नहीं तो क्या? क्या कर रहा है? डोंट टेल मी तुम उसी पे अभी तक फंसी हुई हो। 2 हफ्ते हो चुके हैं उस बात को। प्लीज लेट इट गो। Of course I've let it go. और तुम्हें पता है मुझे क्या पता लगा है? क्या? He has so many fake profiles on Facebook, Tinder, I don't know what not. तो तुम ऐसी घंटी बजाओगी उसकी? तो ये बेचारा फिर यहीं पे वेट करेगा? हाँ तो करने दो। I think it's about time we leave. हमें और भी बहुत सारे काम हैं।
बार, हर दफा नया नंबर, नई प्रोफाइल, नई पिक्चर। लड़कों को उल्लू बनाना कितना आसान है वैसे। कब तक उसे टॉर्चर करते रहेंगे इस तरह? कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो? रिलैक्स यार, क्या बोलेगा? लड़की ने डेट पे बुलाया, फिर आई नहीं, पुलिस भी बोलेगी जा बेटा जा, घर जा। अब बस कर दो, और नहीं करना अब कुछ। बस एक और बार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सब कुछ करने में। वो बहुत से डेटिंग एप्स पे है, उसे लड़कियां फंसानी है। डोंट यू थिंक हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? मारिया, तुम्हें लगता है क्या वो दोबारा उल्लू बन जाएगा इस तरह? थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। Hello. Hi, is this Farhan? Farhan, this is Andrea Gonzalez. How are you doing? Hi Andrea, how are you? I'm good as well. So, what's up with you? What have you been up to lately? I'm really good. अच्छा बुरा नहीं मानना लेकिन when can we meet? Meet? Actually, I'm really busy these days. You know, I'm a model and I'm working with a firm as well. So, I'll let you know when can we meet. Oh, you are a model? अच्छा तुम लगती भी मॉडल हो। I don't believe in beauty, honestly. I believe there should be beauty with brains. Honestly एक बात बताऊं? I'm really excited to see you. I'm excited to see you as well, but let's see. I'm not really looking for a relationship, honestly, but I think I would like to see you as well. Where do you live? Do you live alone? Yeah, I live alone basically. अच्छा listen, can we meet tomorrow? Tomorrow, let's see. Yeah, we can meet tomorrow. How about McDonald's? Okay, I will see you tomorrow. अब बजी तुम्हारी घंटी। Hello, my name is Shahzad Hassan Khan and I'm a proud alumni of Greenwich University. And currently I am the head of marketing for ARY Network and Karachi Kings. And about Greenwich, basically I think that what I am today, Greenwich contributes a lot to it, and it is because of Greenwich's environment and teachers that I've learned so much in such a short time and then grown in the industry.
Dear students of Greenwich University, this is your chance to shine. Show us you're the true leaders of tomorrow. Good luck with all your endeavours. Thinking of you with all my heart. Good luck. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hi, I'm Professor Serge Riviere and the Director of Research and Development. I wish Greenwich University, Pakistan, the very best of luck, and I wish all those graduating on this graduation day the very best for their future careers. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। My name is Rahil Masood, and currently I am into construction industry, and I had a great time with Greenwich and for the great learning curve. Thank you, Greenwich, for everything. Sohail, I started my journey in 1980. Completed, started off and then masters in 93. Association with always been associated with Greenwich. Part of the faculty, assistant professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own companies. We represent petroleum. We represent refineries, both Pakistan and represent like Oxia and Millikan or Pakistan, the countries. And Alhamdulillah, we're doing the entire. I have had has had a major. Would not want to free who have my life. Sahab, of course, Durrani Sahab, Khan, so many. I'm sorry if you, all of you, teachers who put my heart that if I have not you is so amazing, made me what I am, and
Greenwich. Whenever you that. क्या अभी नहीं हो, ध्यान देता है वो। अभी तक क्या बारह थे seriously याद है। मतलब नोट कर रहा है क्यों होगा? ये भाई वो भी किसी और दिन है ना। एक और बात बोलो और मुझे यार मैं तुम्हारे साथ सीरियस होने का नहीं सोच सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी तारीफें करी हैं एंड यू लाइक टॉकिंग टू मी एज वेल। इफ आई एम ऑल दैट तो फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम ये है मारिया, किसी के साथ सीरियस होने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है। यू नो वो दिल में घंटी बजनी चाहिए। लेकिन अभी तक 2 ही बार तो मिले हैं हम दोनों। आई एम बीइंग ऑनेस्ट मारिया। फरहान, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ जल्दी कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? तुम मुझे बता सकते हो। नहीं मारिया, मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ। तुम कल फ्री हो? हम कल मिल लेते हैं। आई डोंट नो, मेरा टीम मेरा वेट कर रही है। आई हैव टू गो। ओके बाय, आई विल सी यू अराउंड। I'll see you around too. Hello. Maybe he's afraid to commit. और एक बात तो बताओ, ये talk to you later क्या होता है? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल? मतलब पहले मैं मैसेज करूँ या वो? Why do you think he said I'll see you around? क्या उसको मुझसे दोबारा मिलना है या नहीं? Maybe he's not sure himself. मैं उसे मैसेज करूँ क्या? या तो वेट कर लो 1-2 दिन, क्या पता वो तुम्हें खुद ही मैसेज कर ले। What the hell? क्या हुआ? उसने मुझे WhatsApp से ब्लॉक कर दिया। Really? और Facebook से भी। दिखाओ। मेरे पास तो आ रहा है। उसे क्या लगता है मैं उसे स्टॉक करती होंगी? जाने दे यार, तुम्हें इससे बहुत बेहतर लड़का मिल सकता है, सिर्फ लक की बात है। ऑफ कोर्स मुझे इससे बेहतर लड़का मिल जाएगा, पर अब तुम देखना मैं उसका क्या करती हूँ। कोई कत्ल वत्ल का तो प्लान नहीं है तुम्हारा? घंटी नहीं बजी थी ना इसकी, अब देखना मैं इसी कैसी घंटी बजाती हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? गेस करो। अरे ये तो वो लड़का नहीं है। और नहीं तो क्या? क्या कर रहा है? डोंट टेल मी तुम उसी पे अभी तक फंसी हुई हो। 2 हफ्ते हो चुके हैं उस बात को। प्लीज लेट इट गो। Of course I've let it go. और तुम्हें पता है मुझे क्या पता लगा है? क्या? He has so many fake profiles on Facebook, Tinder, I don't know what not.
तो तुम ऐसे घंटी बजाओगी उसकी? तो ये बेचारा फिर यहीं पे वेट करेगा? हाँ तो करने दो। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी लीव, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। हर दफा नया नंबर, नई प्रोफाइल, नई पिक्चर। लड़कों को उल्लू बनाना कितना आसान है वैसे। कब तक उसे टॉर्चर करते रहेंगे इस तरह? कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो? रिलैक्स यार, क्या बोलेगा? लड़की ने डेट पे बुलाया फिर आई नहीं, पुलिस भी बोलेगी जा बेटा जा, घर जा। अब बस कर दो, और नहीं करना अब कुछ। बस एक और बार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सब कुछ करने में। वो बहुत से डेटिंग एप्स पे है, उसे लड़कियां फंसानी है। डोंट यू थिंक हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? मारिया, तुम्हें लगता है क्या वो दोबारा उल्लू बन जाएगा इस तरह? थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ स्पेशल करना पड़ेगा।